बारे में सूचित करना है। श्री सुभाष आहूजा मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री सुभाष आहूजा का निधन 75 वर्ष की आयु में 18 अगस्त 2025 को बैतूल में हुआ। प्रोफेसर सलाउद्दीन अविभाजित बिहार और अब झारखंड के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। प्रोफेसर सलाउद्दीन का निधन 79 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2025 को मधुपुर, झारखंड में हुआ। श्री बालकृष्ण चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य थे। वे शहरी और ग्रामीण विकास संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री बालकृष्ण चौहान का निधन 78 वर्ष की आयु में 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्य सभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है।
कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से
वो साल 1971 था, भारत पाकिस्तान का युद्ध, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी भूल बनी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जरिए अपनी मुक्ति वाहिनी
ठीक नहीं है अपोजिशन यू दे विल सिट आप लोग भी बैठिए प्लीज नहीं ये लोग भी बैठेगा ये तरीका बहुत गलत है ये तरीका ठीक नहीं वेणुगोपाल जी आई एम आस्किंग यू यू विल बी अलाउड जिन माननीय सदस्यों का यहाँ पर 0 वर्ड बोलने का है बोलने के बाद हम इसको विचार करेंगे आप बोलेंगे उसमें प्लीज बी सीटेड आस्क ऑल मेंबर्स टू बी सीटेड इन योर रेस्पेक्टिव सीट्स प्लीज आप जी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये ठीक नहीं है वेणुगोपाल जी 0 आवर चलने देना है अगर 0 आवर भी आप चलने नहीं देता है तो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए मैं स्थगित करता हूँ लोग जो भाई चर्मकार हैं वो चप्पल सीते हैं बैठ कर के सड़कों पर उसके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन लोगों को भी किया कि हम 15,000 रुपया बिना सूद के एकदम दे देंगे ताकि आगे काम बढ़ो। तो कहने का मतलब हमारे एमएसएमई में ऐसे अनछुए लोगों को जिसको आज तक कोई बढ़ाने का काम नहीं किया था हमारे प्रधानमंत्री जी का कल्पना है और उसी के माध्यम से एमएसएमई में आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने किया उनको धन्यवाद देते हैं और पुनः हम दोहराते हैं कि उनका ये सजेशन बहुत अच्छा है कि निकट भविष्य में इस संबंध में एक बैठक बुला करके विशेष करके कोंकण के संबंध में महाराष्ट्र के संबंध में हम कोई ठोस निर्णय लेंगे महोदय। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी पटेल जी। सर
Multiple policy studies indicate that nearly 86% of manufacturing MSMEs remain unregistered, with only a small fraction covered under GST or income tax system, leading to serious credit exclusion due to lack of reliable data and outdated underwriting practices. In this context, could the Minister explain why single window clearance and registration mechanism have not reduced procedural delays as intended, and what immediate steps are being taken to simplify the registration so that MSMEs can formalize fasting and gain timely access to institutional credit? Honorable Minister. हाँ महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने जीएसटी की चर्चा की, सबसे पहले उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ तक एमएसएमई का संबंध है और एमएसएमई में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स का काम होता है, इसमें जीएसटी का बहुत कोई महत्व नहीं होता है, जीएसटी उन पर लगता ही नहीं है। और रही बात इस चीज़ को आगे बढ़ाने का और उसके माध्यम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात और फिर अन्य बातों की चर्चा किया, उसी के लिए तो हम पूर्व में अपनी बातों को कहा कि हम लोगों का ये उद्देश्य ही है कि गरीब लोगों को हर तरह से उनको जॉब दे करके आगे बढ़ावें। और बैंकों का जहाँ सवाल है हुजूर, हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 लाख रुपया तक के बिना बैंक गारंटी के, बिना सूद के हम लोग लोन देते हैं ताकि वो आगे बढ़े। 2 लाख जब होता है तब फिर बैंक गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ 4% सूद पर उनको आगे का काम करने के लिए बात देते हैं। तो उसमें जीएसटी का जहाँ तक सवाल है बहुत मिनिमम नॉमिनल लगता है, जिससे कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कोई दिक्कत नहीं हो और उनको हम फैसिलिटेट कर सकें ताकि अपना उद्योग को आगे बढ़ावें और अपना अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें महोदय। यही इसका हमारा कहना है। जवाब। 4th supplementary, Dr. Bhim Singh जी। महोदय, माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे, इनके अंदर हम मंत्री रहे। कोंकण अपना बड़ा भारत का प्यारा क्षेत्र है, सुंदर क्षेत्र है, उधर जाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार यह बताएगी कि 27 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2025 के कार्यालय ज्ञापनों के अंतर्गत कोंकण क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों और एमएसएमई क्लस्टरों में सामूहिक हरित क्षेत्र कॉमन ग्रीन कवर मॉडल को लागू करने के लिए अब तक कितने औद्योगिक स्टेट या क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं और उनकी क्या प्रगति है? सभापति महोदय, ये बात सही है कि 27/10/20 को जो एम जारी किया गया था वो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किया गया था और उस समय तक 33% ग्रीन पट्टी की बात होती थी और फिर उसी को रिवाइज करते हुए 29/10/25 को एम जारी किया गया। उसमें थोड़ा ये समझ करके कि 33% बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रिड्यूस किया गया, तो इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए 10% और इंडिविजुअल यूनिट के लिए क्या किया गया है वो 15% है रेड के लिए और 10% है ऑरेंज के लिए। रेड और ऑरेंज का हम डिफिनीशन बताने का काम किया है हुजूर। और जहाँ तक ग्रीन और वाइट का है तो वहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, वो जैसा भी है जितना ज़मीन वो छोड़ सकते हैं लगा सकते हैं, ये है। और जहाँ तक कितने लोगों को हम लोग लाभान्वित किया, खास करके कोकन की बात करते हैं, हम इतना जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया था हुजूर और जिस प्रकार से माननीय सांसद भीम बाबू बोल रहे हैं, तो इस बात को एम्फसाइज करने के लिए और पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर पहली मीटिंग कराना होगा तो हम कोकन स्टेट में ही जाकर करेंगे ताकि और इससे भी बात को हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे और कोकन की समस्या को दूर कर सकेंगे। 5th supplementary, श्रीमान सुभाषिष कुंदिया जी। Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on supplementary question after 20 months. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उड़ीसा के विशेषकर पुरी में कितने लोग एमएसएमई में बेनिफिट हो रहे हैं और कौन कौन से क्षेत्र से बेनिफिट हो रहे हैं? थैंक यू सर। महोदय,
ये प्रश्न तो मूलतः समस्त भारत से और खास करके कोंकण के जहाँ तक था सवाल और जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, तो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की है, हम इनको बाद में उसका प्रश्न का उत्तर भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 152 श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। Honorable Minister. Sir, the answer has been placed on the table of the House. The first supplementary, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एयर सेवा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप द्वारा प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए औसतन कितना समय लगता है और कुछ एयरलाइंस द्वारा शिकायत निवारण में अनावश्यक देरी भी हो जाती है। यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध में क्या कार्रवाई की गई है, वो माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं एयर सेवा की अगर बात करूं तो एयर सेवा की शुरुआत 2016 साल में की गई थी कि पैसेंजर्स के तहत एक इनिशिएटिव के साथ जिनके ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर के पास ही ना जाएं, बल्कि मिनिस्ट्री भी उनके ग्रीवेंस एड्रेसल में वो सपोर्ट करे। इस भावना के साथ हमने नवंबर 2016 में ये एयर सेवा की शुरुआत हुई और एयर सेवा की 3 वर्जन्स भी हो चुके हैं। जैसे जैसे हमें पैसेंजर से फीडबैक मिलता गया तो इसको और बेहतर कैसे करें, इसके अलग अलग वर्जन्स, तो एयर सेवा 1.0, 2.0 और अभी 3.0 का मैकेनिज्म चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हमारे इन्वॉल्व हैं। जैसे एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स तो होंगे ही, उसके बावजूद भी DGCA जो हमारा सेफ्टी रेगुलेटर है, BCAS जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, इमिग्रेशन और अदर स्टेक होल्डर्स, हेलीकॉप्टर डिवीज़न भी है, जिन के साथ भी इनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसके संबंध में ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ, मंत्रालय के साथ, ये एयर सेवा के साथ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट इसी के लिए बनाया गया। जो प्रश्न भी उन्होंने आदरणीय सांसद जी ने पूछा कि कितने समय में होता है या फिर उसमें क्या कार्रवाई होती है, तो ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक बनता है ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। और जो भी विषय एयरलाइंस के संबंध में हो या एयरपोर्ट के संबंध में हो या इमिग्रेशन के संबंध में हो, जो भी विषय उठाया जाता है उस सब का हमने डिफाइन कर दिया है कि कितना समय में उन सबको हमें एड्रेस करना चाहिए। एक दो का अगर उदाहरण मैं दूं तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमारा DGCA के साथ अगर एयर वर्दीनेस के संबंध में है तो उसमें जाहिर किया हुआ है कि 15 डेज़ के अंदर इसको सुलझाना चाहिए। अगर पैसेंजर राइट्स की बात आती है और एयरलाइंस में डिलेस हो तो 1 दिन के अंदर, या फिर टिकटिंग या फेयर या रिफंड की है तो 15 डेज़ के अंदर। सो ग्रीवेंसेस जो भी एयर सेवा के तहत हमें आते हैं सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है सर्विस लेवल एग्रीमेंट के हिसाब से कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से आपके जो इस तरीके के ग्रीवेंस आएंगे तो इतने दिन में वो कर देना चाहिए। अगर वो कंप्लाई नहीं करते या वो टाइम लिमिट वो मेंटेन नहीं करते या वो ग्रीवेंस को उस दिन के अंदर वो एड्रेस नहीं करते तो मिनिस्ट्री उसके ऊपर इंक्वायरी करती है और तुरंत एक्शन भी लेती है कि क्यों नहीं किया, और उसके ऊपर वो स्टेक होल्डर्स को उनके साथ वो कंसल्टेशन में वो प्रोसेस होता है। सर सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू सभापति जी। सर, मैं उत्तरी गुजरात महसाना से आता हूं और पूरे उत्तर गुजरात और राजस्थान के सटे जिलों से मैंने पहले भी ये मांग की थी कि उड़ान योजना के अंतर्गत महसाना से बम्बई का कोई प्लेन सेवा शुरू की जाए, मगर क्योंकि उत्तरी गुजरात में व्यापारी मथक है, वहाँ से टूरिज्म भी डेवलपमेंट है और राजस्थान के सटे जिलों से लोग बम्बई में और बम्बई से आगे भी रहते हैं, तो पूरे उत्तरी गुजरात को कनेक्ट करने के लिए हमको अहमदाबाद जाना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि उड़ान योजना के अंतर्गत अगर महसाना से मुंबई का एयरवेज शुरू की जाए तो आने वाले दिनों में एक टूरिज्म क्षेत्र में, और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो टूरिज्म से देश में आमदनी और रोजगारी पैदा होती है तो उसके लिए ये एक बड़ा माध्यम होगा और एयर सेवा शुरू होने के कारण ये लोगों को रोजगारी भी मिलेगा। तो माननीय मंत्री जी ये पूछना है कि एयर सेवा ये कब तक शुरू हो सकती है? माननीय मंत्री जी। ऑनरेबल चेयरमैन सर,
सर, मेहसाना इज़ अवेलेबल इन दी उड़ान की जो स्कीम है उसमें मेहसाना भी अवेलेबल है, पर जो उड़ान की जो स्कीम की जो मूल भावना है कि जहाँ पे भी एयर स्ट्रिप्स है, ये जो पट्टी है, हवाई पट्टी है, उसको हम किस तरह से हवाई अड्डा बनाकर वो सर्विस वहाँ से हम फैसिलिटेट करें। तो हवाई स्ट्रिप को हवाई अड्डे के लिए बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन की भी ज़रूरत है, जो हम राज्य सरकार से हम कंसल्ट करते हैं और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि अगर एक तरह के एयरक्राफ्ट को चलना है तो मिनिमम उतना हमें एक रनवे की ज़रूरत है। अगर एयरबस चलना है तो करीब 2400 मीटर्स की, अगर ATR चलना है तो 1800 मीटर्स की मिनिमम हमारी एयर स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट है। और एयर स्ट्रिप्स क्योंकि काफ़ी हद तक वो ब्रिटिश के समय वो सब बने हुए थे, कुछ 1 किलोमीटर तक ही हैं, 1000 मीटर तक ही हैं, तो उनको एक्सपैंड करने की बहुत ज़रूरत है। उड़ान डॉक्यूमेंट में ये लिस्ट किया गया कि मेहसाना हम डेवलप करेंगे, बट इसका एक और प्रोसेस है कि हम एयरलाइंस को भी बिड करने के लिए देते हैं ये रूट के लिए। अगर मेहसाना मुंबई की अगर डिमांड हो, या मेहसाना अहमदाबाद, या मेहसाना दिल्ली, तो कोई भी अगर एयरलाइंस बोलता है कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक हम शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी एक इनिशिएटिव मिल जाता है कि एयरलाइंस ऑलरेडी रेडी है तो हम उस हवाई पट्टे को भी डेवलप करें। तो एक एयरलाइंस को रेडी होना चाहिए, दूसरा राज्य सरकार को ज़मीन भी देना चाहिए कि उस हवाई पट्टे को हम हवाई अड्डा बनाने के लिए ज़मीन दें। थैंक यू सर। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एयर सेवा पोर्टल है ये बहुत ही सराहनीय एक कदम है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लेकिन क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि बहुत सारे पहली बार एयर फ्लायर्स आए हैं जो पहली बार पैसेंजर्स यात्रा कर रहे हैं, तो उनके राइट्स को लेकर क्या कोई सरकार ने कदम उठाया है और प्रभुत्ता से वो राइट्स डिस्प्ले हो सकें, चाहे वो ऐप के माध्यम से या उनकी सीट के पीछे, क्योंकि एयर क्रूज को तो अपने राइट्स पता हैं लेकिन बहुत सारे फर्स्ट टाइम फ्लायर्स हैं जिनको अपने राइट्स नहीं पता है और वो उनको भाषा का भी प्रॉब्लम रहती है। तो क्या उन लोगों के लिए कि उनके क्या अधिकार है, क्या वो पानी मांग सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, उनको क्या टिकट रिफंड मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में क्या सरकार की क्या नीति? धन्यवाद। चेयरमैन सर, सबसे पहले में तो मैं आदरणीय सांसद जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि एयर सेवा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है कि अगर कभी किसी पैसेंजर को कोई असुविधा होती है या कोई ग्रीवेंस होता है तो उसके तहत वो कर सकते हैं। बट हमारे मंत्रालय से DGCA से हमने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, जो कार से जाना जाता है तो कार्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो पैसेंजर को अपने राइट्स बताते हैं, बट ये कार सारे बहुत ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स ये इनकी जानकारी नहीं होती। तो ये अहम सवाल उठता है कि हम कैसे अवेयर करें पैसेंजर्स को कि अपने राइट्स ये हैं, या कोई भी एक सिनारियो बनता है तो उस सिनारियो में या उस डिस्ट्रेस में या उस दिक्कत वाली सिचुएशन में उनको क्या क्या राइट्स अवेल कर सकते हैं वो पैसेंजर को। इसी के तहत DGCA ने जो कार बनाए हैं पैसेंजर्स के हिसाब से कि अगर डिले होता है तो पैसेंजर के राइट क्या है, अगर कैंसिलेशन होता है तो किस तरह से एयरलाइंस उनको रिफंड करना चाहिए, अगर डिले ओवरनाइट होता है या कुछ लंबे समय तक होता है तो उनको होटल एकोमोडेशन किस तरह प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब ऑलरेडी लिस्टेड आउट कार्स में है। बट फॉर द सेम इनिशिएशन की इसको और पैसेंजर्स के पास हम पहुंचाएं, हमारे मंत्रालय से हमने पैसेंजर चार्टर, एक डॉक्यूमेंट अलग से जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसको भी हमने बनाया है पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट। इसमें क्लियरली ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को भी मैं बताना चाहूँगा जो एयर ट्रैवल से जुड़े हैं, और इसके बनाने का भी एक ही मकसद था कि जो कार है वो जनरली जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाता है और पैसेंजर्स उसमें जाते नहीं है, तो ये इसके लिए बना है क्योंकि हमारे देश में काफ़ी फर्स्ट टाइम फ्लायर्स भी है और फर्स्ट टाइम फ्लायर्स में वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस भी रहता है। तो उनको अगर हम कार्स वो पहले से ही अगर बताएं, उनके राइट्स वो पहले से ही अगर बताएं, तो उनकी जो जर्नी है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हो सकती है। तो इसी में एक जो जिस तरह से कंटेंट्स हमने बनाए कि फ़्लाइट डिले, फ्लाइट कैंसिलेशन, बोर्डिंग डिनाइड ड्यू टू ओवर बुकिंग या फ्लाइट डाइवर्शन भी हो, कैंसिलेशन चार्जेस, लॉस, डिलेड और डैमेज्ड बैगेज, में कुछ ही टॉपिक्स में पढ़ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें और काफ़ी कॉमन मैन को किस तरह समझाना है। सिनारियोस इसमें बने हुए हैं कि एक सिनारियो है, यू हैव चेक्ड इन ऑन टाइम बट द एयरलाइंस एक्सपेक्ट्स अ डिले ऑफ 2 hours और मोर, 3 hours or more, 4 hours or more, then what is your right? Your right is you must be offered free of charge meals and refreshments in relation to the waiting time. तो ना केवल कार को हमने दिखाया है, सिनारियोस भी हमने बना के एक्सप्लेन किया कि किस सिनारियो में आपको किस तरह के राइट्स अवेल कर सकते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो ये पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट है
हर कस्टमर, हर पैसेंजर ये एयर ट्रैवल करने से पहले इसको पढ़े और हमारे तरफ से जो भी कार में अपडेट करते रहते हैं उस कार के अपडेट्स को भी इस पैसेंजर इसमें भी अपडेट करके ये अपडेट करें। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसके संबंध में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने अच्छा डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ये जितना हो सके ये हम पैसेंजर्स को अवेयर करें, ये हमारी तरफ से एक प्रयास कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान संतोष कुमार पी। Thank you, sir. Recently, I mean on 6th of December, there was an order issued by the Civil Aviation Ministry to regulate the airfares. So, para number 1 speaks about the fare limit. This order will be applicable for travel till the fare stabilizes. So, what do you mean by the stable price in airfare? Number 1. 2. Will this order applicable Onam and other seasons also? Onam, Christmas and other seasons also? सर ये एयरफेयर से संबंधित एक प्रश्न है। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एयरफेयर्स एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट एयरफेयर्स, the surge in air prices that you see is generally because it is a deregulated sector when there is a mismatch in the demand and supply. When the demand becomes too high, then the seats that you can supply in the market, that is when the airlines, with their models of the air pricing, they tend to rise, and that is why exactly the honorable member was also mentioned during Onam or during the festivals, not only in Kerala, but you observe this in North India during Diwali also. And when it comes back to this capping of prices, airfares during the 6th of December. We all are aware with the Indigo crisis that has happened, and we all know how much distress it has caused. And one major thing that has happened during that time is the capacity constraint at which Indian aviation was operating. Indigo being the major airline and their operations being curtailed, there was a huge disruption, huge cancellation of the regular flights that were there. So the capacity has come down. The seats that people can use to travel has come down. So generally, the other side of the trend would be the airfares would rise. That is exactly why we have to keep the cap, to keep the airfare at a very reasonable and affordable way. We have capped the prices. And regarding the other seasons that might come up, other times when the airfares might rise, the ministry is closely observing all these seasons. We are continuously engaging. We are continuously engaging with the stakeholders on this, and whenever there is a situation, whenever there might be a situation when this is there, we from the ministry are taking action, and I will give you other examples also. During Kumbh Mela we have done it, during Pahalgam incident we have done it, during COVID also we have done it. So whenever there might be a situation when the airfares might rise, the ministry is acting upon it and taking the necessary action. Fifth supplementary, Shriman Pramod Tiwari ji. मैं आभारी हूं आपका। माननीय मंत्री जी के जवाब से उपजा हुआ एक सवाल और एक सुझाव। इधर मोनोपोली की वजह से इंडिगो में पैसेंजर्स के साथ, अब मेंबर पार्लियामेंट यहाँ बोले ना बोले, पर इंडिगो का बर्ताव, उनके क्रू का बर्ताव, उनकी सर्विस का बर्ताव सामान्यतः, चूँकि उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से उनका बर्ताव उतना संतोषप्रद नहीं होता जितना होना चाहिए पैसेंजर के साथ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपसे, क्या एक एडवाइजरी जारी करेंगे सामान्य पैसेंजर के साथ, और जो सांसद अपनी पार्लियामेंट अटेंड करने या अपनी दायित्वों को सांसद लोग निर्वाहित करते हैं, उस समय उनका बर्ताव और स्वभाव थोड़ा बेहतर होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ, जो चूँकि आपने जवाब दे दिया है कि ये जो लूट होती है त्यौहार पर, या अभी जब इंडिगो का क्राइसिस आई थी तो दूसरे पैसेंजर से 5 गुना 6 गुना किराया था, 50-50, 60-60 हज़ार, 80 हज़ार। तो इस पर महाकुंभ के दौरान बेंगलोर से 65,000 रुपये का टिकट था, मैंने उठाया था सवाल। तो मैं आग्रह करूंगा, क्या
आप नियंत्रित करेंगे इस किराए की लूट को और बेहतर सेवा के लिए एक सर्कुलर जारी करेंगे आप इस कंपनी को जिसका नाम इंडिगो है। चेयरमैन सर, ये सवाल काफ़ी सांसदों के मन में भी रहा होगा और ख़ास करके जनता में भी, और इसके संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा, एयरलाइंस की जो फ्रंटलाइन स्टाफ ही नहीं, एयरलाइंस पे आप एयरपोर्ट पे भी अगर देखेंगे या फिर एयर ट्रैवल के संबंध में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें जो इन्वॉल्व हैं एयर ट्रैवल में। आपके एयरलाइंस के स्टाफ हो गए, ग्राउंड हैंडलिंग के स्टाफ हो गए, बैगेज के संबंध में स्टाफ हुए, CISF जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विंग है हमारे एयरपोर्ट में सेफ ऑपरेशंस के लिए। और हमारे तरफ से ये प्रयास रहता है कि जो भी टच पॉइंट्स है, एक पैसेंजर को जो भी टच पॉइंट्स यहाँ पे एयरपोर्ट पे होते हैं, CISF के साथ या फिर चेक इन काउंटर के पास या सिक्योरिटी गेट के पास, बोर्डिंग गेट के पास या एयरलाइंस के संबंध में हमारे यहाँ से प्रयास होता है कि हर चेक पॉइंट पे वो सब पैसेंजर को किस तरह से वो कम्युनिकेट करें, किस तरह से उनको रिलैक्स्ड मोड में एयर ट्रैवल तक चलाए, ये सब हमारा प्रयास रहता है और काफ़ी हद तक ट्रेनिंग भी उसी संबंध में चलती है। और आपका जो जिस तरह से आपने सुझाव भी दिया है, डेफिनेटली हम उसी मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ऑलरेडी एक प्रयास इसी संबंध में रहता है। अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसा हुआ हो और कार्रवाई भी करते हैं, अगर कहीं पे ऐसा होता है कि सिचुएशन एग्रीवेटेड है किसी के बिहेवियर की वजह से या बात करने के तरीके के वजह से, तो डेफिनेटली हम उनके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, क्योंकि हमारे इस संबंध में पैसेंजर्स को सही तरह ट्रीट करना चाहिए। ये सारे चेक पॉइंट्स पे होना चाहिए, सिर्फ एयरलाइंस की तरफ से ही नहीं, जितने भी चेक पॉइंट्स ओरिजिनेट होते हैं उन सब का होना चाहिए। और दूसरा विषय जो एयर फेयर्स के बारे में उठाया गया था, और ये भी मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली इसको ले रही है, जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे DGCA में है उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट्स हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे, लाना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है, ताकि अगर पैसेंजर किसी को लगता है कि ये प्राइस ये हद से ज़्यादा है, ये इस समय में होना नहीं चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट भी हमें भेज सकता है, तो हम ज़रूर उस पर ऊपर कार्रवाई करके एयरलाइंस के ऊपर भी एक्शन उसके ऊपर लेंगे। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स हमने इस तरह के हमने बनाए। क्वेश्चन नंबर 153 श्री कपिल सिब्बल जी। थर्ड सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल मिनिस्टर। का उत्तर पटल पे रख दिया गया है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्री सतपाल शर्मा जी। John Britas, please take your seat. John Britas, please take your seat. Please take your seat. No cross talking, please. No cross talking. No cross talking, please. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के ध्यान में इस सवाल के बारे में एक जानकारी चाहता हूं। टोटल नंबर ऑफ मेजर reservoirs in whole of the country is 161, while in north zone there are only 15 major reservoirs. मैं मंत्री जी के ध्यान में ये लाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हाउ यू डिफाइन मेजर reservoirs, वन थिंग, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र, यहाँ पर भी फसलों को लेकर पानी की शॉर्टेज रहती है, किल्लत रहती है, तो वो जो मेजर reservoirs हैं उनको डेफिनेशंस को लेकर और वो छोटे क्षेत्रों में वो उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। और PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी छोटे क्षेत्रों में मैंने देखा है कि बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ ना के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो AIBP के माध्यम से और CAWWDM के माध्यम से हुई है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अवश्य दें।
महोदय, आपके माध्यम से सम्मानित सांसद जी को कहना चाहते हैं कि जो स्पेसिफाइड डैम्स है या मेजर डैम्स है उसको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि जो 15 मीटर से टॉल है, ज़्यादा बड़ा है, या 10 से 15 मीटर हाइट है, विथ ए स्पेसिफिक चैलेंजिंग फीचर जैसे लॉन्ग क्रेस्ट है, लार्ज रिजर्वायर्स है, डिफिकल्ट फाउंडेशन है, हाई फ्लड डिस्चार्ज है, तो ऐसे डैम्स को हम स्पेसिफाइड डैम या मेजर डैम्स कहते हैं। और अध्यक्ष जी, पीएम केसवा के बारे में जो आपने जो प्रश्न उठा, वो जवाब बाकी अधूरा है। हाँ भाई, नहीं मैं कर रहा हूँ, उनको भी कोशिश कर रहे हैं तो। श्रीमान इराना कडाडे जी। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। महोदय, कर्नाटक में वर्तमान में 200 से अधिक बड़े बांध हैं। एक मुख्य समस्या इन सभी बांधों में तलछट जमा होने की है, जिससे सभी बांधों की भंडारण क्षमता प्रभावित होती है। मेरा प्रश्न है कि सरकार ने नदियों, जल निकायों और बांधों की तलछट साफ करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कोई योजना बनाई है क्या, और कर्नाटक में कितनी नदियों और बांधों की तलछट साफ करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है क्या? माननीय मिनिस्टर सी आर पाटिल जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने प्रश्न उठाया गाद के बारे में, वो बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। करीब 15 से 20% गाद की वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है और ये गाद निकालना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए मंत्रालय की ओर से 2022 में एक नीति बनी है और नीति के जरिए वो गाद निकालना और राज्य सरकार के उसको सपोर्ट करते हुए, उनको टेक्निकल सहायता करते हुए ये योजना को अमल किया जा रहा है। और बहुत से जगह पर राज्य सरकार उसको टेंडरिंग कर भी अपनी गाद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गाद निकालने के समय गाद निकालने के बजाय गाद कम हो, उसके लिए भी जो साइंटिफिक सिस्टम के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और ये दोनों को साथ में मिलाकर गाद की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिक कर्नाटक में जो उन्होंने मांगा है डिटेल, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। द थर्ड सप्लीमेंट्री, श्री दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, सामान्य तौर पर जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेंट्रल वाटर कमीशन के पास भेजा जाता है और डीपीआर मंजूर होने के बाद ही फिर फाइनेंशियल सैंक्शन दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसा अनेक प्रकरण मेरे पास हैं जहां मध्य प्रदेश सरकार ने बिना सेंट्रल वाटर कमीशन के मंजूरी के मेजर प्रोजेक्ट्स में भी मंजूरी दे दी गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स में सेंट्रल वाटर कमीशन की मंजूरी, डीपीआर की मंजूरी बाध्य है कि नहीं है? इज इट मैंडेटरी और नॉट? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। CWC की मंजूरी बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी स्टेट अपना काम नहीं कर सकता। वो अपने पैसे से काम कर सकता है, फिर भी वो DPR बनाकर CWC से सैंक्शन करवाने के बाद ही वो काम कर सकता है। तो ये जो अगर ऐसे कोई किस्से उनके ध्यान में होंगे, हमें बताए जाएंगे तो हम जरूर उसके ऊपर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 154, श्रीमान सामिक भट्टाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 154, श्रीमान सामिक पटेल। Sir, a statement is laid on the table of the House, sir. Now, first supplementary, Shri Samik Bhattacharya ji. Thank you, sir. My question is related Ashoknagar oil field in West Bengal, where Government of India has already invested more than 1,000 crore. So through you,
I want to know from our Honorable Minister, can our Minister confirm whether the recent issue raised by the Government of West Bengal on stamp duty composition, despite a clear provision under the Petroleum and Natural Gas Rules 2025, is further delaying production and compromisation India's energy security? Sir, I would like to thank the honourable member not only for this specific question, which I am happy to answer, but also for his persistence in this issue. Sir, projects related to exploration and production, or ENP, are by very definition complex. They have a long gestation period, and sir, they involve heavy capital expenditure. Insofar as the Ashoknagar project is concerned, sir, as this House, some of us at least, have been very familiar with this, the production sharing contract was signed for exploration block WB ONN 2005-4 between ONGC and oil during the NELP round 7. This was done, sir, in 2008, and ONGC was the contractor for this block. This block is located in the North 24 Parganas district, and the discovery was made, sir, in 2018. As the honourable member has said, sir, it is true that ONGC has spent 1,000 crores already on it. It is our estimate, sir, that the Bengal Basin contains a total of 240 million barrels of oil equivalent in place, proven reserves. If you go by this figure, at 30% recovery, the cumulative production value can be around 45,000 crores, out of which the state of Bengal would get 4,500 crores. So the limited point I'm seeking to make here is that initially a lot of time is taken, long gestation, heavy capital expenditure, but once you begin to see the oil and gas being extracted, it's pure joy after that, because that expenditure is recovered. Now, the operator applied for a petroleum mining lease to the government of West Bengal in 2020. The provisional PML, petroleum mining lease, was received from the West Bengal government in February this year, February 2025. Sir, I've had the opportunity in June this year of convening an Urja Mantra, a meeting of all the states along with all the other stakeholders. And I'm very happy to say that there is a new enthusiasm, new spirit of cooperation, and everything is moving per head. I can understand the honourable member's anxiety. Are we going to get delayed further? Sir, the exchange of letters between ONGC and the West Bengal government has only taken place on December 10 and 12. I have copies of the letter with me. My reading, based on where we've reached so far, that in the light of the latest legislation which we have, the oil field development thing, which has come out after that date, I think it was notified only about 5-6 days ago, I don't see any problem. The situation is quite clear that stamp duty has to be paid on the duration of the entire lease. So if the lease in this case is 30 years, the stamp duty will be paid on the entire lease period. The issue is on royalty. Stamp duty will be paid on royalty as and when the royalty is received. I mean, the whole idea is to facilitate this both for the concerned state government and the operator. And I think the honourable member who's been pursuing this will also realize that there has been all-round movement on this. Personally, I'm not a soothsayer and I don't like to anticipate, but I think considering when we started, 50 years it's been going on. 2008, we had the production sharing agreement. 2018, we moved forward on the PML. Now we have everything in place, maybe another few weeks, and hopefully we can say that this is something that we have achieved and that production will go on. Sir, I'm very happy to tell you that states, when they cooperate with the exploration and production activity, they get revenues, sir. Sir, they get revenues from petroleum and diesel. I can just share with you the state of Andhra Pradesh is getting 16,000 crores, Gujarat 24,500 crores, Maharashtra 37,000 crores, Rajasthan 18,900 crores, Tamil Nadu 24,861 crores,
Uttar Pradesh 31,200 crores, West Bengal 13,000. I'm sure once this is fructified and we have other discoveries, 1,000 crores has been invested and an area of 99 square kilometers are there. This is only one small area. When this began, I'm sure West Bengal's revenues will also go up as a result of this. So I'm reasonably confident, as I said, that based on the latest law, this business about stamp duty on lease rent and stamp duty on the royalty, which will be payable as and when the extraction takes place, and the royalty as a fixed amount accrues to the state government, this will be resolved. Thank you, sir. Second supplementary, Sriman Samik Bhattacharya ji. Sir, in view of the repeated delays by the state government, what remedial or security measures is the union government considering to ensure that the states do not hold national strategic energy projects hostage to procedural or revenue related disputes? Honorable Minister. Sir, I think in a... My dear Minister is giving you the reply. Sir, I think, sir, in a normal seminar kind of discussion, this is a very valid question. But the thrust of my reply is that I think we've already reached the point where this deal is going to be finalized based on the exchange of letters on 10th and 12th December. However, I think the honorable member deserves to be commended for asking a question which is overall. If states do not cooperate, do they or do they not undermine the country's national, economic and energy security? That is a general point. Let me just say that I am particularly worried because I see a situation where we are producing, let's say, a total of 250,000 barrels a day from the KG basin, another 100,000 from Rajasthan. These are rough figures in my mind. 100,000 barrels from Assam, maybe 1.5, 2 lakh barrels from Gujarat. These are approximate figures. It is precisely for that reason that I convened an Urja Manthan with partnerships of the states, where these discussions have taken place, and as a result of which a large number of states have given clearances. I have already got 50 clearances after the Urja Manthan in June of 2025. So I think if states withhold clearances, my submission through you to the state, sir, is they are undermining their own economic well-being. I just read out how much states are earning from the revenue on petrol and diesel, and it will be very clear that the states which have been slow will now have to recover. Some states are doing well. But, sir, overall, we have an economy growing at 8.2% in the last quarter. Our energy consumption, according to the Indian International Energy Association, is that in the next 20 years, we will be consuming more than 30% of the incremental demand. So the energy consumption is rising. So our imports are also rising, even though domestic production is going up. But today we are consuming, sir, 5.6 million barrels of crude a day. Our refining capacity is going up. I would like to have our state governments, in partnership with the central government, to get more and more of this revenue. And I think what the honorable member has asked is valid, but let the message go through this House that the states actually serve their own economic well-being and the welfare of their citizens when they grant these licenses expeditiously. I am also confident, sir, that with ENP going up, we have the next 10th round of bids going to come up very shortly. Overall, with the new law in place, all the stakeholders will benefit from the far-reaching changes that the government under the Honorable Prime Minister has made in the last few years. The third supplementary, Dr. Fauzi Akanji. Sir, since the Lok Sabha reply dated 13th May 25 confirms that ONGC received the petroleum mining lease for the Ashok Nagar field on 24th February, and the minister also has just said that. And the FDP projections reported publicly indicate first oil within 10 months and gas within 17 months. So these timelines, sir, seem to be slipping. May I ask whether the mining ministry has assessed how this delay will affect the earlier realization of the
17,922 m³ of oil envisaged under the FDP, along with the associated revenue and local development benefits, and whether the ONGC has been directed, sir, to issue a revised time-bound production schedule. Honourable Minister. I want to thank the honourable member for referring to those timelines. And as she herself would have noted, that was a provisional petroleum mining lease. And sir, the ministry concerned is not the mining ministry. Earlier, in 1948, we had a law which governed both mining, that is extraction of ores, and petroleum mining. But this latest act that we brought, sir, this separates the two. Now a petroleum mining lease has to be negotiated by the concerned state government or other entities with the central government. And the timeline starts only when the lease deed is signed. So when the honourable member refers to, say, 10 months or 15 months, that is a timeline from the date it starts. Because we are reasonably certain that the oil and gas are waiting to be extracted, but unless it is granted and signed, and I think the latest step in that direction, sir, I want to remind the honourable member that there has been an exchange of letters on 10th and 12th of December, just barely 3-4 days ago, and where the state government had referred to wanting, I think, stamp duty both on the lease period and the royalty. When we pointed out that the latest law clearly stipulates, without any degree of ambiguity, that the lease stamp duty, which is a very small amount, will be paid for the entire duration, but the stamp duty on the revenue earned from the the oil which is extracted as a percentage, that I mentioned how much we have estimated, that will be paid as the extraction goes on. So I'm very clear that timelines haven't slipped. It's just that if the petroleum mining lease deed had been signed, say 2 months earlier, it would have started from there. But I'm reasonably confident that with these clarifications and the ongoing interaction between the ONGC and the state government of West Bengal, and I can tell you the same thing, sir, is happening with the other state government. The new law brings in a degree of clarity which leaves everyone clear and certain. It brings in predictability, and I think all these leases will now go forward. So the fourth supplementary, Sriman Sanilal Gracia. माननीय सभापति जी, बहुत बहुत आभार आपका कि मुझे पूरक प्रश्न पूछने का समय दिया आपने। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राजस्थान में पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से एक रिफाइनरी का लगाना सुनिश्चित किया है और लगाने के अलावा समय भी निकल गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि यह रिफाइनरी आप समय सीमा निकलने के बाद भी अभी प्रारंभ नहीं हुई, कब तक प्रारंभ होगी? क्योंकि राजस्थान स्टेट का कि उसमें रेवेन्यू का अपना शेयर है, तो इसे मैं निवेदन करना चाहूँगा और जल्दी शुरू करने के लिए आप क्या अपनी तरफ से क्या स्टेप लेंगे कि जल्दी वह चालू हो? धन्यवाद। Sir, I have a feeling, sir, that the honourable member is as familiar with the details of the refinery he's referring to in Rajasthan, I think the Barmer refinery, as I am. But since he's asked the question, it gives me an opportunity to explain. Sir, this is a long pending project. It is a project which started well before the government headed by the Prime Minister took over in 2014. But it is a matter of great satisfaction that this very large refinery, I don't offhand remember the capacity, but it's one of the biggest refineries that India is going to have. And it's an integrated refinery which will have not only petroleum and diesel being refined, but it will also have an integrated petchem project. So we are now again at the point, today we are at 10th December, so the discussion going on with the state government is whether we'll be ready to cut the first crude has been brought, and whether we are ready to cut it in, say, 30 days' time, or a little less or a little more. So the good news is, and it needs to be shared here, most of the work has been completed.
But, sir, I am one of those who believes in not coming forward till it's all ready. It's a refinery of which testing has already been done. It has, as I said, 9 million metric tons per annum capacity. And I believe, sir, that the crude has arrived there. Whether we do the cut, we need to test all the systems. Systems are functioning. And it's only a matter of a few days. Then I will accompany my colleague, the honorable member, who has been with me there many times. But since he chose to ask this in the context of the Ashok Nagar question, I am very happy to oblige him. Thank you, sir. Fifth supplementary, Shriman Mohammad Nadimul Haq ji. So thank you very much. So despite the tone of the previous questions to the contrary, sir, the West Bengal government has requested the ONGC to provide specific details of the land areas to be explored in Ashok Nagar, sir. And sir, I am happy to say, and as confirmed by the minister, that the ONGC gave the details in 2024, and the government immediately gave the license. So I just want to confirm with him that the government of West Bengal is fully cooperating with the ONGC in this matter, sir. And initially, the land area for exploration was 5.88 kilometers, which was expanded to 90 square kilometers. Speak about your question. Sir, that is my question, sir. Don't give big lecture, please. Come to the point. Let the minister please confirm that there is full cooperation in this regard with the government of West Bengal. Sir, I said initially, sir, I'm happy to repeat it. It is something which has been going on since 2008. It started with 5 square kilometers. Now we're at 99 square kilometers. Specific details were sought. They have been provided. And in the light of the latest correspondence, which is just a week old, I'm reasonably confident we can get started on this, and then revenues will come in. On election reforms raised by Sri Ajay Makanji on the 11th December 2025, I now call upon Dr. M. Tambidurai to resume his speech. Time remaining 7 minutes. Honorable Chairman, sir, I continue to speak on the election reform, which I yesterday, day before yesterday, spoke on this house. Especially, the election of ADMK party is a faith on the election commission. What are the actions they are taking? We are in the faith, sir. First of all, the election, ADMK believes clean and accurate electoral rolls strengthen democracy. Transparency empowers voters. And also, the election campaign is one of the important, the election process, in that political parties must be given the proper chance to campaign that area. Especially in Tamil Nadu, sir, I am to raise certain points here. Sir, election commission is very vital part of the healthy democratic system. It is the part of the election system, sir. After Karur incident, Supreme Court directed Tamil Nadu government to formulate the SOP, Standard Operative Procedure, to conduct the public meeting by the political parties. Please, either you take your seat. In this connection, High Court Madras issue please go to the lobby. SOP. Government also conducted a all-party meeting to hear the opinion at the parties. So far, no, sir. Formulated by Tamil Nadu government is not, SOP is not really taken. So political parties facing hardship in Tamil Nadu to conduct public meetings to express our views to the public for the campaign, sir. And also, sir, you are now my leader, Kadapadi Palaniswamy, wanted to address the gathering in Hero district. He could not. Sir, election campaign is one of the election campaign is one of the department. Please stick to electoral reforms. So, don't raise the issues of the state. Please come to the electoral reforms. Sir, election commission process, how the elections are taking place, that is what I am raising. In Tamil Nadu, for electoral reforms, when they are taking place, for especially to campaign is one of the important election process. What we are facing, where my leader could not get the
proper chance and a proper place. And I am telling this is a fact. But sir, but the Tamil Nadu government, Tamil Nadu Chief Minister yesterday, he had a big rally in Tirunnamalai. Whether you followed the condition SOP, whichever it said, whether we followed, but why are putting the condition for us? And also this, sir, this is very, very impartial, and that this is not baseless, sir. And also regarding the electoral accurate electoral census, when I spoke this regarding the system, the Elango farmer, sir, is not here. The member of the DMK said, I am this election home ministry, law minister is supporting ADMK party. Sir, how can they support? This is that's the allegation they made. This is on the record. Therefore, I am once again saying, sir, I also serve as a law minister in Vajpayee government. The election commission under me. Once again, say, we never interfere in that. But now, sir, when the election is a revision, the poll is taking aside is different issue. But every year, electoral rolls are reform. That is going on, taking place. In that side today, sir, one ex-MP of this Rajya Sabha, DMK member, said, made the paper has come, 85 lakh voters going to be removed in Tamil Nadu. This accusation. Who is responsible for that? Tamil Nadu government is conducting all these things. How can you say, give the misrepresentation, then the election, 85 voters are going to remove? This is the job of the election Sir, my commission. time is my time. Yeah, your time. You please stick on to, don't make false allegations. No, not false allegation. I am giving the, if you want the authentication, I give the authentication. I will authenticate. Yes. I will authenticate that. Please, you all by I will authenticate. You please by I will authenticate. When you are intervening, that like this, there cannot be arguments and counter arguments. Please, you all take your seat. No. Then you Sir, please take your seat. Please, you take. Sir. Trichy Shivaji, you please take your seat. Madam, you please take your seat, please. Sir, I told you, the election campaign is one of the electoral reforms. First, during the, sir, you know very well, first, during the Erode by-election, opposition party complained that voters are allegedly held in a temporary sheds, denied the freedom movement, and prevented from meeting opposition candidates. Such action is to amount to the influence state who have done. Sir, the former minister at ADMK. Honorable Chairman has already requested you to confine yourself within the boundaries of discussion. Sir, I want to come to the point, sir. Please. See, Election Commission is allowing campaigning for the political parties. But what the DMK party is doing, they are all denying the chance for us. For example, I'm told you what happened in Erode by-election also. Please, it's I'm telling. See, instead of we are discussing I am as a candidate, I have every right to go and campaign and meet the voters. But the DMK government is not doing allowing that. They are taking all the voters and kept in a camp. And they are not allowing. This is the accusation. Already we raised the issue election commission. Reforms, please. Therefore, I am requesting the electoral reforms when they are discussing that, this kind of aspects is taken. Election, that is voters, revision, everything is a process, regular process. I am not coming SIR. Every year, the election commission is conducting, this is a part of thing. But the ruling party accusing 85 lakhs voters are going away means, till now how they can say, now why they are giving a misnomer to the public to see that they are going to lose the government election, coming election. For that, they are telling these 85 lakhs voters are going away means, then this is already the planned, excusing their defeat, they accept Please that. confine yourself to the subject. That is the thing, what is going to happen. But the Only DMK that will go on record. unnecessarily giving wrong information to the public that the election, we are accusing election commission. This accusing election, this is in the, we cannot do that in the things.
This, that is why I'm telling. That is why yesterday, last time when I spoke, he said, at that time, what the member said, ADMK party is benefiting the home ministries and law ministry. He said, is the fact. You have to deny. Whether you're going to allow it in the record, therefore I am denying that. Therefore, I am telling Tamil Nadu is a fair place where the election must take place. The ruling party, DMK, must not misuse the power and spoil the game. That is, they know they are going to lose the election. That is why they are creating this problem. Therefore, Honorable H.D. Devagola. No. Sri Eram Venkat Subba Reddy. Yes. Mr. Reddy, he has a point of order. Honorable Trichu Sivaji. Rule. I don't deny he has got the right to speak anything, sir. He quoted, he was reading out a newspaper and it was about a former member of parliament. He is not a member of this house. And he cannot come and give an explanation. So anything mentioned about that, kindly. I have already reminded him, please will take. Kindly go through that and explain, sir. Yes. Honorable Sri Eram Venkat Subba Reddy. Sir, thank you very much, sir. Thank you for this opportunity, sir. Sir, electoral reform does not mean that you bring some changes after Lok Sabha elections and conclude that you have done electoral reform, sir. And we have to bring reforms in the state level and also at national level, sir. And only such electoral reforms will protect, preserve democracy and the democratic process in the country, sir. Sir, we all know that electoral reforms is a continuous process. You have to learn the election commission has to learn from its discrepancies and mistakes, sir. Mistakes committed during assembly elections, sir. Be it in Andhra Pradesh or anywhere else, sir. Mistakes committed at the general elections or even mistakes committed during panchayat and local body elections also, sir. Sir, I am representing Andhra Pradesh state in this house. So whatever examples I give only relating to my state happened during 2024 general elections, sir. I am not casting any aspirations to anybody or any party, sir. But I am only quoting the facts and suggesting that what is to be done by the Election Commission to maintain its integrity and transparency and address shortcomings, sir. So I will be brief and pointed in some of my submissions, sir. Sir, first I will come to Form 20, sir. It contains exactly poll vote dates, excluding postal ballot. Election Commission issued a press note on 25th May 2014, indicating the absolute number of voters participated in the first phase of 2024 general elections, sir, which also includes fourth phase elections held in Andhra Pradesh. This exact number of votes polled has been shared with the polling agent through Form 17C. This press note is said to be absolute and final, sir. But there is huge discrepancy in the final votes counted and exactly polled votes declared by Election Commission of India through Form 20, sir. Discrepancy happened in 25 constituencies. That means all 25 parliamentary constituencies in Andhra Pradesh, sir. So I suggest for consideration of the Election Commission, through you, sir, to look into why this discrepancy has happened. Who is responsible for this and what action it has taken against the erring officials, sir. Sir, my second point is I wish to make it relating to Form 17A, sir. It deals with the voter register. Sir, simultaneous elections, Lok Sabha and Assembly were held in some states, including Andhra Pradesh is one of them, sir. We have common voter list. We have some polling stations, and polling is simultaneous, sir. In such a scenario, register of votes in Form 17A, the accounts of the votes recorded in Form 17C, and votes entered in EVM should be same for both Lok Sabha and Assembly elections, sir. And in any discrepancy has to be recorded in Form 17A under Rule number 490, sir. So if there is any mismatch between Lok Sabha and Assembly votes, it raises procedural and legal concerns, sir. But such lapses observed in 2024 general elections in Andhra Pradesh, sir. This indicates that votes data was altered or manipulated or deviation in the electoral procedures, sir. There are many examples, many constituencies, Raptadu, Dharmavaram, Rayadurgam, Kadipatri, Yalagadda, Kadapa, Pulivendala, etc. Like this, so many constituencies were a lot of discriminations were there, sir. So I appeal to the Election Commissioner to conduct an inquiry so as to why it has happened and ensure that such things do not occur in future, sir. Sir, the YSR Congress Party wants
and the people of Andhra Pradesh want is that there should be fairness in conduct of elections, clarity in outcomes and transparency in public disclosure, sir. So I appeal to Honorable Prime Minister and government, and through you, sir, the Election Commission should, these are my session, my party sessions, sir. Mandatory public release of CCTV footage from Form 17, from 17C, 17A and 17C, and presiding officers' diaries, sir. Number 2, statutory enforcement of Supreme Court mandated EVMs verification, sir. The most important them all is to replace EVMs, sir, with paper ballot is all future elections, sir, because electoral system that can't be audited cannot command trust, sir. EVMs may be efficient, but can't be trusted, sir. Paper ballot may not be efficient, but can be trusted, sir. You need trust in democracy. Live streaming of 100% webcasting at all polling stations, sir. Sir, with these submissions, I conclude by just saying that we have the YSR Congress Party has brought this to the notice of Election Commission, not once, twice, sir, multiple times. YSR Congress Party has got 40% vote share in last general elections held in 2024, sir. And the mismatch that we have mentioned above is questioned by political analysts and experts, sir. Last minute, sir. We are only highlighting these things to bring reforms in the electoral process to make our elections free, fair, and transparent, sir. Election Commission, as an independent body which is responsible for conducting elections in the country, should uphold the principles on transparency and accountability, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Reddy. माननीय संजय यादव जी. थैंक यू सभापति महोदय। चुनाव सुधारों की इस महत्वपूर्ण चर्चा में अवसर देने के लिए मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी और आपका धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, जैसा कि इस चर्चा में सभी वक्ताओं ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह वाकई हम सब भी गर्व से दोहराते हैं, लेकिन एक सच्चे और जीवंत लोकतंत्र की पहचान केवल मतदाताओं की संख्या से तय नहीं होती, यह उसकी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत ईमानदारी से तय होती है। हमारा मानना है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होने से ज़्यादा ज़रूरी है सबसे ईमानदार लोकतंत्र होना। आज भारत की चुनावी व्यवस्था अपनी तमाम मजबूती और गौरवशाली इतिहास के बावजूद कई ऐसी चुनौतियों से जूझ रही है जो लोकतंत्र की आत्मा को भीतर से चोट पहुंचा रही है। इसलिए यह समय है कि हम सब इन चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करें और उन सुधारों पर गंभीरता से चर्चा करें जिनकी आज देश को सख्त ज़रूरत है। महोदय, 1952 से लेकर अब तक कुल 13 बार SIR हुआ है, लेकिन ऐसा अविश्वास, विवाद, अशांति, अस्पष्टता और अपारदर्शिता कभी नहीं देखी गई। आज स्थिति यह है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों जनता की नज़रों में संदेह के घेरे में है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर यह विश्वास टूटने लगे तो संस्थानों की वैधता भी कमज़ोर होती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अभी विगत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा। महोदय, एक अप्रत्याशित हमें वोट इंक्रीमेंट देखने को मिला है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ बिना SIR के 48 लाख वोट जोड़े गए और एब्सोल्यूट वोटिंग में 12.2% का इंक्रीमेंट हुआ। बिहार में SIR हुआ, कुल 7 करोड़ 89 लाख वोट थे, उसमें से 65 लाख वोटों का डिलीशन हुआ। उसके बाद SIR की प्रक्रिया में 18 लाख और बाद में 3 लाख वोट और जोड़े गए, तो कुल 7 करोड़ 45 लाख वोटर थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वोट घटने से बूथों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन बिहार में पहले SIR से पहले लगभग 78,000 बूथ थे और SIR के बाद 90,000 से अधिक बूथ हुए। तो उस प्रक्रिया से यह समझ में आया कि मतदाताओं के घटाने के अलावा
ये बूथों को बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया थी। अब बिहार में वो चुनाव हुए, 65 लाख वोट कटने के बावजूद बिहार में 15.6% का एक एब्सोल्यूट वोटिंग में एक अब नॉर्मल इंक्रीमेंट देखा गया। इतना सडन स्पाइक जो बिहार, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में 12.2, बिहार में 15.6, तो ये वोट घट रहे हैं SIR में, लेकिन बूथ बढ़ रहे हैं। और जो ये मैसिव बढ़ोतरी हो रही है वोट संख्या में, वो एक प्रयोग है या सहयोग, वो पूरा मैसिव स्विंग एक पार्टी विशेष के पक्ष में जा रहा है। ये हमें सबको सोचने का विषय है। अगर चुनाव के मध्य चुनाव आयोग ये हम बिहार में जैसा कि चुनावों से पहले 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं के मद से मतदाताओं के खाते में भेजे गए, लेकिन वहाँ 15.6% वोट बढ़ा। झारखंड में भी चुनाव हुए, झारखंड में मात्र 3.5% वोट बढ़े, हरियाणा में 6.2% वोट बढ़े और दिल्ली में 6.1% वोट बढ़ा। तो ये झारखंड में भी वही सेम योजना थी, लेकिन वहाँ 3.5% ही वोट बढ़े, लेकिन बिहार में 15.5% से अधिक वोट बढ़े। तो ये सब हमें सोचने की ज़रूरत है। दिल्ली में भी पानी और बिजली निःशुल्क थी, वो भी सबको पता है। अगर ये वोटिंग पैटर्न हो, मतदाताओं को वही बिहेवियर हो, तो वो सर्वव्यापी हर जगह वैसा ही रहना चाहिए। और ये तो आश्चर्यजनक था कि एक पार्टी विशेष की तो स्ट्राइक रेट 89% रहा। आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार में SIR हुआ, मात्र 35 दिन का समय दिया गया। उस 35 दिन में लगभग मैंने कहा कि 7,90,00,000 वोटर मतदाताओं को पुनरीक्षण कार्य हुआ। उस 35 दिन में जैसा कि सब जानते हैं, बिहार का 73% जो भूभाग है वो बाढ़ प्रभावित है। सावन का भी महीना था, लोग कावड़ लाने जाते हैं, धान रोपाई का भी समय था। माननीय संजय जी, ये SIR ये सबजुडिस मामला है और माननीय चेयरमैन ने शुरू से ही रिक्वेस्ट किया था महोदय, चूंकि हम चुनाव सुधारों पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा अनुभव था तो उसी के संबंध में, वो भी एक चुनाव सुधारों की प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। महोदय, बिहार में 1,77,526 वोट पोस्टल बैलेट थे। उस 1,77,526 में हमारा गठबंधन 143 सीटों पर लीड कर रहा था। हमारा विपक्षी गठबंधन NDA मात्र 94 सीटों पर लीड कर रहा था। अदर्स के हिस्से में 6 सीटें थी। पोस्टल बैलेट में मतदान में हम 44.6% मत प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उसमें नहीं हुए। जो बाकी जो प्रक्रिया रही उसमें क्या विसंगतियां रही, उस पर मैं आऊँ। तो महोदय, केवल हम जब चुनावी सुधारों की बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म सही तरीके से हो, पक्ष विपक्ष दोनों संतुष्ट हो, और सबसे बड़ी बात है जनता संतुष्ट हो। चुनाव सुधारों पे ये चर्चा केवल औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। आज मतदाता को लग रहा है कि उसके वोट के साथ कहीं ना कहीं हेराफेरी हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो पिछले दरवाजे से उनके मतदान के साथ कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उससे देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, ना कि कोई विशेष पार्टी। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि जनता की हर दुविधा, हर शंका, हर सवाल का निवारण करे और तुरंत करे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें सही समय पे सही उत्तर नहीं मिल पाता। किसी ने कहा है कि किसी पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव सुधार की ही नहीं, चुनाव आयोग में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अगर एम्पायर ही टीम का खिलाड़ी बन जाए तो खेल नहीं होता, साजिश होती है। चुनाव प्रक्रिया आज जनता के सवालों के कटघरे में है। हमें सोचना होगा कि आज़ादी के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। जब आयोग सवालों से भागता है और साफ साफ जवाब देने में आनाकानी करता है तो शक अपने आप जन्म लेता है। देश की जिस संस्था पर सबसे कम सवाल उठने चाहिए, आज उसी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अति खतरनाक है, हानिकारक है। आज चुनाव आयोग किसी सरकार का और पार्टी का पर्सनल एक्सटेंशन काउंटर नहीं बनना चाहिए। ये हम नहीं, जनता, सर ये हम नहीं, जनता कह रही है। ध्यान रखें, जब चुनाव आयोग का हर फैसला वही चीजें रिकॉर्ड पे जाएंगी, सत्ता के टाइम टेबल और उनके प्लान से मेल खाए तो सवाल और शक उठना स्वाभाविक है। महोदय, हम
इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करिए सर, उसी पे कर रहे हैं। हमें सर चुनाव सुधार चाहिए, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का सफाया नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टिव इनकरेक्ट रिवीजन नहीं चाहिए, बल्कि हमें ट्रांसपेरेंट इंटेंसिव रिवीजन चाहिए। ऐसा लगता है कि ये SIR नहीं, SPR स्पेशल पार्टी रिवीजन हो रहा है सर। सब्जुडिस मामले पर न बोले आप। SIR के SIR के जरिए गलतियां ठीक होनी चाहिए और जो ठीक हो उसे गलत करने की मंशा को रोका जाना चाहिए। अगर सुधार सच है तो डर किस बात का। लेकिन यह सरकार वोटर को जुटाकर नहीं बल्कि वोटर को हटाकर जीतना चाहती है। आप वोट सुधार नहीं, आप वोट मैनेज करना चाहते हैं। देश ने बिहार चुनाव में देखा कि कैसे 41,000 करोड़ रुपए मात्र मतदान की तिथि से 35 दिन पहले बांटा गया। क्या चुनाव आयोग को उसमें हस्तक्षेप करके उसको रोकना नहीं चाहिए? आपका एक राज्य के लिए अलग मापदंड होता है, दूसरे राज्य के लिए आपका अलग पैमाना होता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेफरी ही विपक्षी टीम से मिलके नियम बदलने लग जाएगा तो सर खेल नहीं रहेगा, निष्पक्ष खेल नहीं होगा। सर मैंने स्वयं चुनाव आयोग को एक 4 पेज का लेटर लिखा कि कैसे कैसे धांधली हो रही है, लेकिन कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब सर क्यों ऐसा विश्वास बढ़ रहा है, जनता क्यों सवाल उठा रही है? क्योंकि और मैं विगत कई चुनावों की जो 6 चुनाव राज्यों के चुनाव का मैंने जिक्र किया, हम उसमें जनता इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर सवाल उठा रही है। हम सिर्फ उनकी आवाज़ को, उनकी भावनाओं को, उनकी शंकाओं को आपके माध्यम से यहाँ सदन में रख रहे हैं। दुनिया की हर मशीन ऑडिट होती है महोदय, लेकिन EVM पर यह ऐतराज क्यों? दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी या चूक नहीं है, कोई भी। हमने देखा है हमारे देश में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे साइबर अटैक होता है, उसे हैक करने की कोशिश होती है और किया भी गया है 2018 में। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी साइबर अटैक्स हुए हैं। तो कोई भी तकनीक अचूक नहीं है महोदय। दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली प्रणालियां भी हैक हुई हैं, तो EVM को अवैध कहना तकनीकी रूप से सही नहीं लगता महोदय। EVM पर सवाल लोकतंत्र को कमजोर नहीं मजबूत करता है। अगर वोटर कहे कि मुझे EVM पर भरोसा नहीं है तो क्या आप उसे अपराध मानेंगे? अगर वोटर कहेगा कि मेरे पास सब कागजात हैं और आप मेरा वोट डिलीट कर रहे हैं तो उसे क्या आप अपराध मानेंगे? नहीं महोदय। EVM को बचाने से ज्यादा जरूरी है जनता के भरोसे को लोकतंत्र में बचाना, और जनता का भरोसा किसी मशीन में नहीं, निष्पक्ष प्रक्रिया और प्रणाली से ही संभव है। जब वोट कागज पे दिखता है तो गिनती में कागज क्यों नहीं? हम 5% मिलान भरोसा नहीं देता, 100% मिलान ही भरोसा देगा। लोग कह रहे हैं कि EVM पारदर्शिता नहीं दे रही, और लोकतंत्र पारदर्शिता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम चुप रहेंगे तो सर मशीन जीत जाएगी, और हम बोलेंगे तो लोकतंत्र जीतेगा। अगर कहीं कोई शक है तो हम सबको बिल्कुल बोलना चाहिए, निडर होकर बोलना चाहिए। जब वोट की प्रक्रिया ही संदेहों से घिरी हो तो लोकतंत्र की आवाज साफ कैसे सुनाई देगी? महोदय, मशीन जीत जाए और हमारा मतदाता यानी मानव हार जाए तो ये लोकतंत्र और मानवता दोनों के लिए खतरनाक है। महोदय, मानव ने मशीन बनाई है, मशीन ने मानव नहीं बनाया। मतदाता मशीन से बड़ा होता है, और बिना मतदाता लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। जनता को इलेक्शन चाहिए महोदय, सिलेक्शन नहीं चाहिए। महोदय, कई कामयाब और लोकतांत्रिक विचारधारा का सम्मान करने वाले विकसित देश पारदर्शिता के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अस्वीकार किया है, और चुनाव सुधारों के लिए महोदय निष्पक्षता दिखानी पड़ती है, सिर्फ कहना ही काफी नहीं होता। रेफरी अगर नियम पूछने पर नाराज हो जाए तो मैच के नतीजों पर सवाल उठाना लाजमी है। दुनिया के अधिकांश लोकतंत्र अब बैलेट पेपर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सत्यापन योग्य है और भरोसेमंद होता है और जनता को दिखता भी है। महोदय, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चुनावी सुधार में कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। चुनाव सुधार यह उस लोकतांत्रिक संस्कृति का आधार है जो नागरिकों को विश्वास दिलाती है कि सत्ता उनकी इच्छा का प्रतिबिंब है, न कि धन, शक्ति और प्रभाव का परिणाम। भारत को चुनावी सुधारों की एक नई पीढ़ी की जरूरत है। ऐसे सुधार जो चुनाव आयोग को और मजबूत करे, राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाए, धन बल की अंधेरी सुरंगों को रोशन करे और मतदाता के विश्वास को पुनः केंद्र में स्थापित करे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है, और चुनाव सुधार वही रास्ता है जो इस विश्वास को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय ऑनरेबल श्री HD देवेगौड़ा जी।
Respected Deputy Chairman, sir, I would like to express my sincere thanks to you for having given me an opportunity to speak on the issue that is the allegation made by our recognized opposition about the voter list. Sir, I am a Congress worker, 1952, 1957. When Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, 52, 57, 62 and 64, what happened? I don't want to repeat that. After the demise of Pandit Jawaharlal Nehru, the tallest leader, Lal Bahadur Shastri came to power. He was there for a short period. You know what happened? The Tashkent Agreement. Sir, after that, Madam Gandhi became the Prime Minister. During her period, I think more than 380 or more than 316, 3-4 elections, Madam Gandhi was able to score in the election. When once there is a decline, then she thought of bifurcating the Parliament and the Assembly separately to fight the election. Even that, I fought the election when it was separated. I have never raised any objection. I was in the opposition. Earlier Samstha Congress, then Janata Dal. I am the president of the Janata Dal when Janata Dal was formed during Morarji Desai. Sir, I never raised any objection. About the bifurcation of the Parliament and the Assembly separately, even then we bow our head and we fought the election. Sir, I was defeated once in the Assembly. 7 times I won the Assembly. 4 times I won Parliament. And 3 times I was defeated by Congress. I never blamed the Congress has made me to defeat by manipulating the voter list. I never. Please take your seat. Please. Surjewala ji, nothing is going on record. Let him speak. I am not. Please, Surjewala ji, please take your seat.
I have not made any. Honorable sir, please speak. Because Please I have speak. to fight only Congress. that will go on record. Honorable H.D. Devgowda ji, please speak. There is no other party. In Karnataka, Samstha Congress, Indira Congress. Janata Party, Congress. Please, if you know the history, from last 1952, then you would not have raised any objection. Please pardon me. I have not come to the language you have used, vote chori. I have not come. Manipulation of the voter list. That's all I have said. Sir, in 1991, I came to Lok Sabha. The lone member from Janata Dal. In 1994, I went back to Karnataka and I became the Chief Minister. I have not completed 2 years. I don't know what the sin I have committed in the past life. I am a believer in that. Congress lost the election. And Congress Working Committee, if my memory is correct, 12th May 1996, they have passed a resolution. We are going to support a non-BJP government if secular parties are going to come together. Then the 13-party coalition, the left parties in those days was very strong. And DMK, Mubnar Congress, was totally got 40 seats. TDP has got 40 seats. Biju Janata Dal and our part, I got 16 seats as Chief Minister. And the Congress extended their support through a resolution to support the non-Congress government, non-BJP government. We all sat together and we took a decision to make Jyoti Babu as the Prime Minister. 2 days the discussion went on. Ultimately, their party, there was difference of opinion, and Jyoti Babu declared my name as the Prime Minister. I was in tears. People have given the mandate in Karnataka to rule Karnataka. I have not got the mandate to rule this great nation. But the circumstance was forced. 13-party coalition, I was forced to head the 13-party coalition as Prime Minister. I took oath on 1st June 1996. I was there for hardly 10 months, 20 days. Why I am narrating all these things? The manipulation of the votes, voter list.
प्लीज शक्ति सिंह गोयल जी सीट पर बैठ कर ना बोले। I have never raised. I have never raised. Please, sir, conclude. Your time is. Sir, please. Please. There is a letter written by Pandit Jawaharlal Nehru. The letter is about inclusion of 18,000 votes in Kerala when Namrudipad was the chief minister. The letter is here. He asked Govinda Vallabha Pant, to then Home Minister, to verify. The letter is here. Electoral reforms and not on the electoral history. Please, sir. Please conclude. Please. Randeep Surjewala ji, please. I request please our honorable colleagues. Sir, please conclude. Your time is over. I may be aged. My memory is alert. Sir, please conclude. I will never irresponsibly. Please conclude, sir. Conclude. Sir, conclude. This is a letter written to Govinda Vallabha Pant. 18,000 votes during Namrudipad's period in Kerala as included. See that it is verified. Sir, your time is over. Please conclude. Why I am telling this? Yes. During Nehru's period also, there are certain lapses in the electoral system. That is what I am telling. Please. No, this is not today. Please take your seat. Let him speak. Please, sir. Please, sir. Please conclude, sir. He is also written a letter. Please. Randeep Singh Surjewala, you have no permission to speak. Please, it's not going on record. Please conclude, sir. Please conclude. They are little bit worried. What I am narrating. Sir, your time is over. Please conclude. I have requested the leader of the House and the Parliamentary Affairs Minister in presence of the Vice President and the Chairman of this country to give more time, to spare some time from their party. Whether the party has given time to Honorable H.G. Deogala, I have requested. Sir, I hope and trust they will cooperate with me. Please. Sir, now let me come to the point. Bihar election, how much they fought about the electoral mistakes that has been committed by the Election Commission. And ultimately, the Election Commission reviewed nearly 62,000 votes were deleted and about 12,000 votes added. Having done 65 lakhs, 65 yes, क्यों आप प्लीज आप बैठे, आपको मौका आएगा, आप बोलिएगा प्लीज. नथिंग इज गोइंग ऑन, आपको मौका मिलेगा, आपको बोलना है, आप बोलिए, ये आपका जॉब नहीं है. प्लीज आपको जब मौका मिलेगा बोलिए. Sir, please do not disturb. They are very much perturbed. What happened afterwards? Even after so much review, set right the voter list, what is the end result? Think yourself. You also think, sir? He got 6 votes. Six MP, six MLAs.
That is the position. Sir, in 2014, Narendra Modi ji came to first to national politics. 12 years he was in Gujarat. He was ruling the state as chief minister. When he comes to Delhi, in the first election, he got बैठकर टिप्पणी ना करें, आप बड़े सीनियर मेंबर हैं, प्लीज. He got 286 votes. Was there any manipulation? Nobody has raised any manipulation. I am in this house. In 2019, प्लीज आप please hear me, brother. सत्य सिंह जी आप बैठो. Please hear me, brother. Please sir, conclude your time, please. Have patience. Please. In 2014, I came to Parliament. 2022, I came to Parliament. To the Lok Sabha. 2020, You address to the chair. Honorable Deogara ji, you address to the chair. No, आपस में बात नहीं, please address to the chair. 2018, I won the election Lok Sabha. 2020, I was defeated. 2022, I came to Lok Sabha. 2014, I came to Lok Sabha. Please hear me, sir. 2019, I came to this house. 2026, I came to this house. Sir, with this vast experience, no, why they are becoming so angry? Please conclude, sir. Please conclude. Why they want to make allegation against the Prime Minister on the issue of the voter list? The Election Commission is there, Supreme Court is there. The Election Commission has given direction to all the state units to rectify all these things. I have got sufficient documents. Sir, Modi ji, with his personality, when he won 286 seats, he could have formed the government. But he thought over to get back those allies, those political parties who supported Vajpayee, and he took them to form an NDA, though he has got the majority. In 2010, again the elections were held under the leadership of Modi Sahab. He got 306 seats. He could have formed the government on its own. He took all the coalition so that to give an opportunity to all those friends who supported Vajpayee, continued the coalition and gave a stable government, a strong government to implement so many programs. Sir, in 2025 or 24, he got 248 or 250 seats. Again, all those people who were earlier, they've all come together. Yes, at the last leg of my life, about 2 years back, I gave my support to NDA. There is nothing to hide.
Why? Please conclude, sir. Please. Why the Congress people who try to destroy Devagowda or the Janata Dal, बैठ जाए राम मानिए और राम जी the राम Janata सुबह Dal, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड सिर्फ और माननीय the श्री Janata देवगौड़ा जी Dal, का भाषण जा रहा है प्लीज who has been in public life from last 7 decades, they want to destroy. My only Janata Dal is a regional party. Sir, I have never raised when I have been defeated by the so-called Congress leaders. Sir, I have never raised. Sir, any vote बीजेपी की chori. तरफ से समय Sir, आपको मिला है please, पर conclude. they have agreed in presence of the Vice President and the Chairman. Please, don't disturb me. Give me some more time. Sir, today in this country, if these friends wants to make a mockery about the Prime Minister in the streets and the public platform, they are making Prime Minister office to denigrate. Sir, we have never done it. In last 70 years in my public life, we have never done it. We have never used such a word, even when Indira Gandhi got 400 seats, when Rajiv Gandhi got 400 seats, when Indira Gandhi got 380 seats. I have defeated. Never. I have never. Please, the system, what has been now so strong, our constitutional forefathers, Dr. Ambedkar, under his chairmanship, has given a strong foundation for a democratic system. This cannot be eroded by anybody. They were talking in the public, RSS, Janata Party, Janata Dal, Bharatiya Janata Party, combined, they are going to destroy the democratic system and the democracy is in danger. This type of slogan, who bothers? Sir, please conclude. People have been, Sir, have got sir, please any conclude. responsibility. Please They conclude have now. Turned hostile against Narendra Modi's Please conclude, government. sir. Please conclude. People have never turned hostile. Please conclude, sir. It shows they have full confidence in Narendra Modi's government. Sir, I have given my full support to Narendra Modi's leadership. The country needs, this is a very big country, a large country. Congress may be in 3 states. Remember, my friends, please, by using the word vote chori, you are going to suffer in the coming days. You are not going to win the battle. I am telling you, I know what is the country politics. I can speak, sir, hours together. You are ringing the bell. There are so many Sir, things. there are number of speakers. My friend, DMK friend is here, who has supported me when I was the Prime Minister. Thank you, sir. What the stand they have taken, I know that, because to maintain their political strength in as DMK in Tamil Nadu, they are fighting. I know. I am not blaming. But only thing is, blaming Narendra Modi's leadership and creating a suspicion in the mind of the voters in this country, which is a large country, that it is what is called
vote chori, vote chori, vote chori. What has happened to their mind? Thank you, sir. Let them rectify their Thank you. willful, or a mind which has been corroborated. Don't do that. It is not going to help. Modi's government Please will conclude, continue sir. and fight the battle under his leadership. 2028 will come back to power. This is thank you as an oldest person in Lok Sabha and Rajya Sabha. I am speaking. I could have spoken more. Pandit Jawaharlal Nehru letter is also here. Thank if you want, I can place it on the table of the House. Yes, please place on. What he has written to Thank you. Numrudipal and Thank you. West Bengal Chief Minister Mr. Roy. Thank you. The letter is here. If anybody wants, I can place it on the table. Yes, please place on the record. With these words, Thank you. Sir, even though I want to speak a little more, your Sir, it's already not mine. The time which has been given to you. At least you have given that much of time. Thank you very much. Honorable K.R. Suresh Reddy ji. Thank you, Vice Chairman, sir. Deputy Chairman, sir, my apologies. After the Vande Mataram debate, the House taking up the debate on electoral reforms is most welcome, sir, as it is reassuring to speak about the health of our democracy, a legacy that was handed to us not easily, but the one that was forged in the fire of sacrifice by our freedom fighters. It is the solemn promise of our Constitution that every citizen remains the true master of this republic. Talking about electoral reforms and the power of the ballot, I would take this honor to present before this House our own experiences from Telangana. The power of the ballot was clearly demonstrated to the nation by our leader, KCRG, when the struggle for Telangana began, sir. Our struggle for Telangana for the last 14 years, where an unprecedented kind of dharnas happened. The women, the farmers, students, employees, every person in the society of Telangana fought for it. But the only important thing which could awaken the government of India, which could bring a sense of responsibility, was the power of ballot. And to quote the power of the ballot, sir, my leader, KCRG, to demonstrate that the will of the people is so clearly visible, he resigned twice as a member of parliament. He resigned twice from different regions of Telangana, so that the country gets a sense that it is not one particular region or one particular area. He resigned when he was not in power. Our party was not ruling in Telangana, neither in center. But the courage of KCRG, the trust he had in the belief of the ballot was so visibly demonstrated, sir. It is not only he, seeing his resignation, the people of Telangana compelled other political parties to resign, as that would demonstrate the kind of will which is prevailing there of the people. So this being the power of the voter, my leader and my party, we are very keen that every eligible voter of this country, every eligible citizen of this country should be enrolled as a voter, sir. So speaking on this, of course, a debate has been continuing. We support that electoral reforms are definitely a backbone for a healthy democracy. But to ensure this, the voter list, which should be accurate, inclusive, and transparent. Large and diverse nation like us, Deputy Chairman, sir, need clean electoral rolls. That we totally agree. Having said that, we have to ensure that the registration, updating to facilitate voting access for migrants, disabled, senior citizens, urban poor, and people with limited documentation should be entitled for their voting rights, sir. Strict re-verification
should not become a mechanism for exclusion. Ensure that no eligible voter loses their right to vote simply because accessing paperwork is difficult. Today, the government's initiatives are every state government and government of India, the ease of doing business, the ease of communicating. We have seen people through Me Sevas in Telangana getting their certificates all electronically. In an age like this, why is it a challenge for a person whose name has been removed from the electoral roll to get back into the electoral roll when he is an entitled citizen of this country? That should be the concern, and that should be the mechanism to be adopted, sir. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नियम 377 जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपने मामलों को अनुमतिदान पाठ के 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पे रख दिए। आइटम नंबर 14A, माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the. I called his name, please. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the repealing and amending Bill 2025, which provides for repealing of certain enactments and to amend certain other enactments. Thank you, sir. Dr. T. Sumati ji, not present. Shri N.K. Premchandran ji. Sir, I am not objecting the bill. My point is that it is being circulated just now, the supplementary list of business. All these four bills, if you examine Rule 72(2), it is the right, legitimate demand of a member of the House to oppose the introduction of the bill. Unfortunately, when the bill is circulated yesterday in the night, that too in the late night and today morning, and when the bill is in such a way it is being circulated, it is a specific direction is there. Direction 19B is there. By virtue of 19B, the direction of the Honorable Speaker, it is mandatory that the bill has to be circulated
introduction of the bill. I do admit the fact that the Speaker has every right to abandon it or every right to exempt it. But the point is that the members are getting an opportunity by virtue of subclause 2 of Rule 72, that by which when the bill is being introduced, we will be getting an opportunity to oppose the introduction of the bill. Today afternoon, just half an hour before, supplementary list of business is put in the website. So how the members are getting an opportunity to oppose the introduction of the bill without going into the contents of the bill, number one, and also the list is not being circulated, agenda is not being circulated. So my point is that in all these bills, it is not fair on the part of the government in bringing such type of bills and getting it introduced. It is bulldozing of the legislation and the members' rights are being taken away. Parliament cannot be taken for granted. Why the government can very well introduce the bill tomorrow? We are ready to oppose and we can very well state the reasons. Because the legislative competence. Yes, sir, I heard you. The legislative competence of the bill has to be challenged. If we want to challenge the legislative competence of the bill, we should have some homework. We should have to go to the bill, but unfortunately, we are not getting an opportunity to go through the contents of the bill. Yes, sir, I heard you. Just coming to the House and supporting it means it is quietly, it is bulldozing of the legislation that may not be allowed. सर 72-2 ये कहता है कि ये हाउस कॉम्पिटेंट है या नहीं है इस बिल को डिस्कशन करने के लिए या पास करने के लिए। ये जो बिल है सर, ये तो इस हाउस के द्वारा पास किया हुआ बिल है जिसको कि सरकार रिपील करना चाहती है। इसमें कौन सा 72(1) का वायलेशन हो रहा है? Please listen to me. Honorable Speaker, sir, has waived the requirements of Directive 19A and 19B on a request made by the Honorable Minister. प्रश्न ये है कि विधायक को पुनः स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में कहें वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Chairperson, sir, I introduce the bill. Thank you. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to move for the leave to introduce a bill to enable and empower the universities and other institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, for research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Vikasit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate universities and other higher educational institutions to become independent, self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy, and for matters of connected therewith or incidental thereto. Sir, you will be given an opportunity to speak. I will give an opportunity. Kindly be seated. There are listed members to be given opportunity. माननीय श्रीमती ज्योति मनी जी, not present. माननीय श्रीमती के काव्या जी, माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Mr. Chairperson, I rise to oppose the introduction of the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. The grounds for the opposition of the bill are as follows. First, the bill results in excessive centralization of higher education and violates the constitutional distribution of legislative competence. While Parliament may legislate under entry 66 of List 1 on coordination and determination of standards, this power is limited and cannot be used to occupy the entire field of legislation. The bill goes far beyond standards and intrudes into administration, affiliation, establishment, and closure of university campuses, their institutional autonomy, matters falling within entry 25 of List 3 and entry 32 of List 2
which covers incorporation and regulation of state universities. Second, the bill suffers from excessive delegation of legislative power. Vast and substantial, ranging from accreditation frameworks, degree-granting powers, penalties, institutional autonomy, and even supersession are left to be determined by rules, regulations, and executive direction. This abdication of essential legislative functions violates settled constitutional principles governing delegated legislation. Third, the bill undermines the autonomy and independence of statutory regulatory bodies by making them bound by policy directions of the central government and subject to supersession at executive discretion. Such provisions erode institutional independence and offend the constitutional requirement of fairness, non-arbitrariness, and check on executive power under Article 14. Fourth, the bill also concerns Article 19(1)(g) of the Constitution of India by subjecting educational institutions to pervasive executive control, graded autonomy, intrusive compliance requirements, severe penalties and closure powers. It imposes disproportionate and unreasonable restrictions on the right to carry on education as an occupation. While regulation in the public interest is permissible under Article 19(6), the bill goes far beyond reasonable regulation and vests unguided overboard powers that fail the test of proportionality as laid down by this House and the Supreme Court. And last, Mr. Chairperson, sir, I oppose the bill given the overriding clause given by this bill over all other laws, coupled with the powers to supersede existing regulations, raising serious concerns of arbitrariness, legal uncertainty, impacting institutions established under state laws without any safeguards. And I do hope, Mr. Chairperson, sir, that the Minister would reply to each and every ground on which the introduction of this bill has been opposed. Mananiya Shri N.K. Premchandran ji. Sir, thank you very much for... I will give an opportunity to you, Sir, thank you very much. Please be seated. Yes, sir. Please continue. Sir, thank you very much for affording me this opportunity to object the introduction of the bill. It is very difficult, as far as I am concerned, to even pronounce. A member from the South India, it finds it very difficult so as to even pronounce the bill. Name of the nomenclature of the bill, the Vikasit Bharat Shiksha Adhistadhan. I can't understand what is meant by Adhistadhan as the bill 2025. So my first objection is the nomenclature of the bill by virtue of Article 348, Clause B. The authority, notwithstanding anything contained in foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative text of a bill to be introduced or amendments there to be moved in either houses of the Parliament or in the House or either house of the legislature of the state shall be in English language. So the bill, the nomenclature of the bill shall be, it is not made. This is Article 348, Clause B, the authoritative text of a bill shall be in English, but unfortunately the bill, the nomenclature of the bill, it is being, I don't know which language it's, whether it is Sanskrit or Hindi, I don't know, the Vikasit Bharat Shiksha Adhisthan Bill 2025, that is my first objection. And the second objection is regarding the issue that is the entry 66 in the schedule in the central list. I do agree with regarding the higher education, but unfortunately the education, even the higher education is also included in the concurrent list in the 7th schedule in the state list. Sir, 1972 through 42nd amendment, this education is put in the concurrent list. What is the purpose of putting it in the concurrent list? Before that it was absolutely within the domain of the state list. And what is the purpose of it? The main purpose is that the local resources and the requirements of the concerned state should be taken into consideration in framing the legislation in respect of the education. But as far as this bill is concerned, if you go through the contents of the bill, it is mandatorily the state governments and all the universities, even a university which is established under an act of the state government, they are bound to abide by the conditions of the commission. That means indirectly imposing the powers of the central government
on which a right which is being vested upon on the state government means it is totally against the federal principles of the constitution, and it is centralization of the power with the center. It is against the basic principles of the federalism which is envisaged in the constitution. That is my second objection. And further the curriculum, the syllabus, and all these things are being determined by this University Higher Commission. The name is it is little bit different in Hindi. I don't know it, but I think that it is a Higher Education Commission. There also the political philosophy and the political ideology of the government at the center has to be imposed on the state. That is the main object and purpose of this bill, by which this bill is being brought in, by which the state's resources, the local requirements, and the state culture, tradition, language that will be taken away means that is also against the basic principles of the constitution, the federal principles of the constitution. And also I fully agree with the objections already raised by Mr. Manish Tiwari ji. Along with that objection, and also the bill is not being circulated in proper time, and it is being bulldozing in the house without having proper agenda in the list of business. That also I do object with this objection. I very humbly request the Honorable Chairperson, please refer this matter for tomorrow so that we can have a detailed discussion regarding the introduction, and otherwise this may be withdrawn by the government. These are my objections. Thank you very much, sir. Professor Saugat Rai ji. Sir, already Mr. Manish Tiwari, Honourable Member, and Honourable Mr. Premchandran has opposed the introduction of the bill. But I first point out to the ineptness of the Ministry of Parliamentary Affairs. We got a copy of the bill late last time. Today in the list of business, the introduction of the bill was not mentioned. The supplementary list of business was circulated at 1 o'clock this afternoon. Now, is this the way the Parliamentary Affairs Ministry functions, where they do not even give us a chance to prepare for opposing the introduction? The main points opposing the introduction has been mentioned by Honourable Members Manish Tiwari and Mr. Premchandran. Sir, the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 is an effort to centralize power in the central government's hand with regard to educational matters. Earlier, there was a UGC, University Grants Commission, which decided on allocating funds for educational institutions, both universities and colleges. Now, that is being taken over and subsumed into the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill. I do admit that under Article 66, the centre has the power to legislate on the educational matters, though it is in the concurrent list. Entry subject 25 is subject to entries 63, 66 of list 1. So Parliament cannot assume comprehensive control over state universities. We have so many state universities in West Bengal. The Parliament will have total power over this. They will appoint vice chancellors and all that. As it is the governors in Kerala, West Bengal, and Tamil Nadu, they are interfering with the functioning of the universities. Now this gives legitimate power to the centre to control the functioning of the universities in higher education. This is essentially undermines autonomy and independence of statutory regulating body and checks on executive power under Article 25. This bill, hence, should not be brought. We oppose the introduction. We oppose the ineptness, the failure of the Parliamentary Affairs Ministry. They do not even give us an opportunity to study a bill. Thank you, sir. Mananiya Shri Selvan This Ganpati is not ji. done. Sir, you are a learned man. Teneti sir, you give a ruling on this. Let it be a historic ruling that this is not the way the Parliament should function. Thank you, sir. Sir, I raised to oppose the introduction of the bill titled the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2020 under Rule 72 of the Rule of Procedure.
So the very name, the nomenclature itself is, we deem it to be an imposition of Hindi on those states which do not know Hindi at all. The reason, sir, all these years this government, any law they bring up, any scheme that they bring up, that they title it only in Hindi language and not as required by the Constitution of India. The Constitution is clear. The bill has to be, the name has to be, the nomenclature has to be in the language in English, so that every citizen, every part of the country knows what is the veracity of the bill. So second, this against the federal principle of the Constitution. Sir, the concurrent list, the regulatory council under the commission proposed in the bill is against the spirit of the Constitution, particularly contravening the provisions under entry 32 of list 2. The power which entry 44 of the list 1 says the union government does not have power to regulate universities and is being vested with the union by this bill is arbitrary. Sir, in the name of the coordination and determination of the standards, the entire regulation of higher education institution comes under the Government of India, the union government. This is totally a colorable legislation that gives arbitrary decision-making powers to the union government. Sir, this bill is nothing but an abuse of process of law. As per various provisions of this bill, practically the union government will be the sole decision-making authority, which is against the spirit of the Constitution. The union government will have the final say as if the bill is passed, which is totally contrary to the Constitution. In the name of Bharatiya knowledge system, whatever is asked to be followed by the Commission and its 3 vertical pillars has to be implemented by the higher education institution, failing which the institute will be deemed to have violated the Act and its accreditation may be withdrawn. So they have an enormous power. Whichever university they want to completely deem to be violation, they can reject the accreditation. Without accreditation, no institute can function, and the accreditation power lies with the accreditation council. Sir, we therefore we Thank you. Thank you, Thank you, Chairman, sir. On 3 grounds, I would like to oppose this bill. The bill's aggressive, unnecessary Sanskritized nomenclature directly violates Article 348(1)(b), which mandates that authoritative text of all bills shall be in the English language. There is no technical reason to use in Hindi names. 53 times Hindi names are used in this text of the bill. This Vinayam Parishad, இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. We don't எதுமே எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எங்களுக்கு நாங்க பேசுறது எப்படி உங்களுக்கு புரியலையோ அதே மாதிரி நீங்க இப்படி இந்த மாதிரி இந்தியை கொண்டு வந்து எங்க மேல திணிச்சா எங்களுக்கும் ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. So அதனால வந்து it should be in English so that whichever the state wanted to understand the language, that language has to be allowed in this bill. This sees I see this as a kind of Hindi imposition. Already Tamil Nadu been actually deprived of Samashkrit SSA funds just because of we are not agreeing to the 3-language policy in the new education policy. This is another way of imposing Hindi on state like Tamil Nadu, which is very successful in 12-language system. Second thing, this is an attack on the federal structure. This bill moves forward despite the parliamentary standing committees on education explicit finding that the bill maintains a union government heavy composition and insufficient state representation. Sir, actually, given that state public universities and their affiliated colleges educate over 81% of India's total students enrollment and govern a network of over 46,000 affiliated institutions nationwide. This policy-making body's composition must reflect the immense scale and responsibility held by the state education sector. Then executive overreach and undermining autonomy. The proposal moves decisively away from the independent regulation. Provisions granting the union government overriding power over the commission represent a clear attempt at executive outreach, fundamentally violating the doctrine of separation of powers
by subordinating a key regulatory body of the executive. Clause 11.4 clearly states that regulatory council needs the prior approval of central government to provide or revoke authorization of higher educational institution, the authority to grant degrees. On this ground, I oppose the introduction of the bill. Thank you, sir. Thank you, ma'am. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ है हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करें। Sir, I introduce the bill and propose that this should go to. Sir, 1 second, sir. One second. I introduce the bill, sir. माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी। During the meeting in the Business Advisory Committee, many honorable members have requested that this is an extensive bill and we need further deliberation on this bill. So government hereby proposed to send it to joint parliamentary committee and we authorize the Honorable Speaker to constitute the JPC in consultation with the other house and also with various political parties. Matter is placed. माननीय मंत्री जी आइटम नंबर 14C माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. Thank you, Speaker, sir. Thank you, sir. माननीय श्री बी बेहानंद जी। माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. I rise to oppose the introduction of the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025 under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha on the following grounds. First, the bill confers sweeping and pervasive powers on the central government across licensing, regulation, acquisition, tariff fixation, exemptions, emergency powers, and even novation of private contracts. Clauses empowering the centre to acquire mines, plants, reactors, substances, and contractual rights by executive action, while compensation determined largely by the government itself raises grave concerns under Article 300A of the Constitution of India and the guarantee against arbitrary deprivation of property. Second, permitting profit-seeking private participation in ultra-hazardous nuclear activities while simultaneously limiting liability, granting statutory immunities, and restricting judicial remedies undermines the state's non-delegable public trust obligations over life, health, and the environment. Such an arrangement amounts to an unconstitutional abdication of essential sovereign responsibilities and functions under Article 21 and 48A, where the state is required to act as a trustee and a guarantor and not merely as a facilitator or a licensor. Third, the bill suffers from excessive delegation of essential legislative functions. Core policy matters such as liability limits, safety standards, exemptions, regulatory norms, emergency measures, and even amendment of schedules are left to rules, regulations, or notifications issued by the executive. This abdication of parliamentary responsibility violates settled constitutional limits on delegated legislation under Article 245 and 246. And finally, Mr. Chairperson, sir, the bill concentrates legislative, executive, regulatory, and quasi-judicial powers in the central government and authorities appointed, controlled, and removable by it, including the Atomic Energy Regulatory Board, which needs to be an independent, autonomous statutory regulator.
the absence of institutional independence coupled with wide direction issuing powers and insulation clauses undermines the doctrine of separation of powers, which is a basic feature of the Constitution. On these grounds, I strongly oppose the introduction of this bill. Thank you, sir. Honorable Minister, sir. Want to? No, Manish ji is a good friend, his points well taken, but I just want to mention that most of these objections are based on the merits of the bill, which are normally and by convention taken up during the discussion. So right now we are here only to the competency of the introduction of the bill. माननीय श्री बेहनान जी, माननीय श्री बेहनान जी. He is not speaking. Call on N.K. Premchandran. माननीय श्री N.K. Premchandran जी. Sir. And on legislative competence, Premchandran ji. Yeah, sir. Thank you very much, sir. Sir, by Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I do oppose the bill, the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. So my point is, it is against the principles, against the directive principles of the state policy in Part 4 of the Constitution of India. Because the entire purpose of this bill, promoting this bill, we are having the Atomic Energy Act. And also we are having all these legal mechanisms are also there. And you see that the nuclear energy as well as rare earth minerals and mining and mineral separation and the nuclear section, everything is being vested with the public sector undertakings. The basic purpose by which this law is being brought in is so as to privatize this nuclear energy sector for the private companies. I am not mentioning any companies. I am from an area, from the minerals, beach and mineral area, by which we are having abundant thorium is there, supply is there, but unfortunately it is not being exploited and utilized by the government public sector undertakings so as to make use by the private entities and the private corporates for which this bill is being brought in. So it is against the directive principles of state policy. Therefore, I strongly oppose the introduction of the bill on the basis of this objection. Thank you very much, sir. Shri Professor Saugat Rai ji. I oppose this bill with a long name, Sustainable Harnessing of etc. etc. Now, this bill is being a watershed in the history of development of nuclear power in the country. You know, the Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, he set up the Atomic Energy Commission. The Atomic Energy Commission made significant progress in harnessing atomic energy. We had our first nuclear power plant in Tarapur. India undertook 2 nuclear implosions, whatever you call it. First at Pokhran in '74, then under Atal Bihari Vajpayee, again in Pokhran in 1998. So nuclear energy has been a matter which has exercised. Kindly be seated, please. Lot of Excuse me. importance to the people. Remember, sir, in 2000, Mananiya Sanjay Jaiswal ji. During Manmohan Singh's prime ministership, there was a big dispute in the country over nuclear liability bill should be introduced. Manmohan Singh's purpose was to get nuclear energy technical know-how from America and other countries. Now this is a new step where slowly the nuclear energy sector is sought to be given over to private sector. The government has been talking about this for some time, and now we have the Adani's big in power sector. Now they want to get into nuclear power sector, and this bill is meant to facilitate Adani and other people. 1 second, sir. I heard you, sir. Mananiya Mantri Shri Kiran Rijiju ji. Since honorable members are repeatedly raising the opposition, opposing the introduction of the bill, today we are not passing the bill. There is no proposed for consideration. It is only introduction of the bill. And most of the opposition are coming, which are repeatedly being mentioned by honorable member, including what Manish Tiwari has mentioned. I have a specific point only. Under
under Rule 72(1), it is very specific on the legislative competence of this House to bring this legislation. Yes. And under Schedule 7 of the Constitution, in the list of unit list at serial number 6, it is very specific. Atomic energy and mineral resources necessary for its production. Yes. So this House has very much have its full legislative competence to bring this bill. And as the Honourable Minister has stated, if there are consideration on merits, it should be brought out at the time of consideration. At this point of time, it is only introduction of the bill. So that will come back. Today, we are not putting it for consideration. Sir, if we assume that it is not in the competence of the House to bring, even if it is assumed that it is not in the competence of the House to bring in a bill related to nuclear energy or atomic energy, may I remind the honourable members and the House that the same House brought the Atomic Energy Act 1962 when Pandit Ji was the Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and the same House brought the CLND bill when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. So, if the bill could be brought in the House when Nehru ji was the Prime Minister, when it could be brought when Dr. Manmohan Singh ji was the Prime Minister, why now suddenly, because there is a different political party in power, suddenly the House has been forbidden from the prerogative of bringing in a bill on this subject? Yes, sir. I heard both the sides. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने के अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के हुआ, पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 16 अनुदानों की अनुपूरक मांगे, श्री नीरज मौर्य जी। धन्यवाद सभापति जी। पूरक अनुदान मांगों के लिए 2025-26 72 अनुदान मांगे शामिल हैं। कुल राशि 1,32,268 करोड़ रुपए और अतिरिक्त अनुदान की मांग 41,455 करोड़ रुपए। इसमें दो तिहाई यानी कि 27,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी पे खर्च करने की बात कही गई है। मान्यवर, ये आंकड़े कागज पर तो चमकदार लगते हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसी सरकार की कहानी बयान करते हैं जो प्राथमिकताओं से भटक गई है, क्योंकि ये ना केवल व्यर्थ का खर्च है बल्कि आम आदमी की पीड़ा को नज़रअंदाज करने का प्रमाण भी है। मान्यवर, किसानों के लिए जो रासायन उर्वरक पे मांग रखी गई है उसमें ज़्यादातर जो धन है वो सब्सिडी के लिए रखा गया है। मान्यवर, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से किसानों का बुरा हाल रहा। लोगों को ना तो फास्फोरस पोटास मिला, ना यूरिया मिली, ना DAP मिली। मान्यवर, इस अनुपूरक मांग में 23,423 करोड़ रुपए सब्सिडी पे लगाने की बात कही गई है। महोदय, आज जहां हमारा किसान MSP की मांग को लेके दर भटक रहा है और उसको MSP नहीं मिल रही है, किसान सड़कों पे खड़ा है, लेकिन सरकार सब्सिडी के नाम पे विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। आयातित यूरिया पर इतना खर्च क्यों? सरकार अपनी क्षमता बढ़ाने में नाकाम रही है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को केवल महंगाई, कर्ज और आत्महत्या करने पे किसान मजबूर है। हम मांग करते हैं कि सब्सिडी को पारदर्शी बनाया जाए,
आयात पर निर्भरता कम करें और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, तभी मान्यवर अनुपूरक का कोई महत्व होगा। मान्यवर, बहुत सारे विभागों की बात इसमें चर्चा की गई है। हम प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग पे बात करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग का जो हाल है, जिस तरह से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो अनुपूरक मांगा गया है उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 1303.72 करोड़, इसमें 2023.25 करोड़ की एक नई योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए 65.45 करोड़। सभापति महोदय, ये क्या मजाक है जब भारत के जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं आज वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए 42.63 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जबकि जो SC/ST के लिए मात्र 2.04 करोड़ और ST के लिए तो केवल 33 लाख रुपए की मांग की गई है। ये भेदभाव क्यों? शिक्षा का अधिकार का जो कानून है वो अधर में लटका हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वादा अधूरा है, लेकिन पूरक मांगों में एलीट इंस्टीट्यूशन को प्राथमिकता। हमारी मांग है बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया जाए, RTE को मजबूत बनाएं, ना कि चमकदार योजनाओं के नाम पर फंड बर्बाद करके ये जो 90,812 करोड़ के ग्रास वे का हिस्सा है, जो सेविंग से मैच तो हो रहा है, लेकिन सेविंग कहाँ से आई? शिक्षा बजट में कटौती करके आई है। तो शिक्षा के बजट को काटा ना जाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को भी महत्व दिया जाए। ये हम आपसे, सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं। मान्यवर, अनुपूरक जो बजट आया है, इस बजट में अच्छा होता कि हमारे बरेली के अंदर एक सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड रबर फैक्ट्री के 1400 से अधिक स्थायी और हजारों अस्थायी श्रमिक जो बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्री बंद है और लगभग 1432 कर्मचारियों की देनदारियों का मामला भी लंबित है। मान्यवर, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण इन परिवारों पर जीवन यापन का गहरा संकट लगातार बना हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन ने बकाया वेतन और अन्य देयों का समुचित भुगतान नहीं किया। सरकार की उदासीनता के कारण ये परिवार भूखों मरने के पर मजबूर हैं। सरकार इन श्रमिकों के भुगतान की व्यवस्था भी अगर इस अनुपूरक में करती तो शायद उन परिवारों का भी कुछ भला हो जाता, लेकिन मान्यवर सरकार ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मान्यवर, अनुपूरक बजट आता है, मुख्य बजट आता है और हम सब लोग यहाँ 543 लोग चुन के आते हैं। मान्यवर, हम लोग अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता हर तरफ विकास की बात करती है, क्योंकि एक यहाँ से नारा दिया जा रहा है विकसित भारत का नारा, और हम लोग खास करके जो मेरा आंवला क्षेत्र है, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रास्ते अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पीने की पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं। मान्यवर, जब हम लोग जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो हमसे कुछ विकास की बात करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन मान्यवर सरकार ने जब केंद्रीय सरकार को खर्च करने का बजट कम लगा तो सरकार ने अनुपूरक की मांग कर ली। लेकिन मान्यवर, हम सांसदगण जिनको बहुत कम सांसद निधि दी जाती है 5 करोड़ की, आप कृपया कंक्लूड। जब हमारे पास विकास की कमी आए या हम लोग नहीं काम कर पाते तो हम किससे पैसा मांगे? इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस विकास में सरकार को
हम सांसद लोगों की निधि को बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। मानवर, जहां तक मुझे जानकारी है कि सांसद निधि सन 2010 में 5 करोड़ की गई थी। 5 करोड़ तब की गई थी जब जीएसटी नहीं थी। आज पूरे देश की कई विधानसभाओं में जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनका क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन उनकी निधि हम सांसदों से ज्यादा है। मान्यवर, 5 करोड़ कहा जाता है, उसमें भी 10 लाख कंटीजेंसी काट लिया जाता है माननीय और जीएसटी लगाई जाती है। धन्यवाद। इसलिए मान्यवर प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर मेरी बात सुन लीजिए। आप माननीय प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर कंक्लूड कर रहा हूं बस थोड़ा। मान्यवर, 2010 के मुकाबले महंगाई बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, मतदाता भी बढ़े हैं, लेकिन सांसद निधि बढ़ाने पे विचार नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार विकास नहीं कराना चाहती, और अगर विकास कराना चाहती है तो इस सांसद निधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों के हम लोग छोटे छोटे काम कर सकें। मान्यवर सभापति महोदय, मैं अंत में प्रोफेसर सौगत राय जी, यस। उनको रोकने को बोलिए। नहीं, सौगत राय जी आप बोलिए। नहीं, आपको 3 बार एक्सटेंशन दे चुके हैं सर। आप 20 सेकंड में रखिए, आप 20 सेकंड में रखिए। यस, सौगत राय जी आप बैठ जाए। 20 सेकंड्स प्लीज। मान्यवर सभापति महोदय, जो प्राथमिकताएं हैं वो तो गड़बड़ लग रही हैं। रुपए 1,32,00,000 लाख करोड़ का जो व्यय है, इसमें किसान, युवा, महिला, गरीब कहाँ हैं? ये सरकार अमीरों के लिए अनुपूरक बजट लेके आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सब्सिडी से कारपोरेट्स को ना ध्यान दिया जाए, प्रोफेसर सौगत राय जी, जो हमारे गरीब जनता है उसका ध्यान दिया जाए। मैं इस अनुपूरक का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर next honorable member T.R. Baluji will be speaking, so kindly. I rise to speak on the supplementary demands for grants. I resent the fact that the finance minister is not here. Even the minister of state, he is there, he has become president of UP BJP. What will he look into finance? Sir, this demand is one for additional 41,000 crore spent. 41,000 crore please look at budget me. Yeah. Outgo. But actually the total supplementary demands is rupees 1.32 lakh crores. Out of this, 90,000 is technical, because this amount will be made up from savings of different departments. 41,000 crores roughly will be outgo from the government. Out of this 41,000 crore, fertilizer is 11,000 crores is for fertilizer subsidies, 7,000 crore is for import of urea, and 9,500 crores to Petroleum Ministry, out of which the oil companies will be made up for their loss as far as LPG is concerned. Unfortunately, this country produces only 33% of its petroleum requirement, so you can understand the situation. Now, I would say that the finance minister has tried to do a reasonable job, in the sense that only 4.4% is the fiscal deficit target we shall be able to meet this year. So even though the finance minister does not have a finance background, she has worked hard, I must say. But there are severe fault lines in the supplementary demands. What are the fault lines? Urea is in crisis. Farmers are lining up every day
from the morning to get urea. Urea is being sold in black market. The government is doing nothing about that. Our production will be hit because of lack of urea. So second thing I want to mention is that oil marketing company, they want to be fully compensated for their loss in supplying LPG. So we may be in for another LPG subsidy, LPG price rise. I would urge the government that let them give more money, but not increase the price of LPG. Now, are you saying that there are some fault lines in this whole budget? Why? Because even though we are controlling this thing, another is Vodafone. Vodafone government is considering relief for the financially stretched telco. So I would like to know whether government will actually give the answer. Now, sir, you are a studious man. You must have noticed 5 months ago, Modi's friend Trump, he said that India is a decaying economy, finished economy. This is what Trump said. I want to know what the central government says. Sir, the IMF has said that India is in C category. As far as IMF retained its C grade for India's national account statistics or GDP data. So even though the कमलेश जी आप उनको फ्री छोड़ दीजिए, हमारा बात नहीं सुनेंगे एकदम। सर, GDP, they are saying that GDP growth is increasing, but IMF is saying that this is C grade in statistics. The government will have to reply what they are saying about. Sir, everybody will congratulate you for your election. But you listen to me. Sir, the other point I want to say is that where we are terrible is the rise in the fall of rupee. Rupee against dollar became 89.46 against the dollar from 89.12 against the euro. Our currency has fallen against all other major currencies, more against euro and also against the dollar. So we are in a very bad situation. All imports, including petroleum imports, will cost more. This is very bad. So we have to reply to Trump that we are not a dead economy. He said it on record that India is a dead economy. That's why you are not in a hurry to have a trade pact with India. IMF has given them a C grade. So we should be very concerned about all this. And you know, sir, we are discussing education a little while ago. India's rank in the Human Development Index is United Nations, UNDP, is 130. We are 130th country in the name of Human Development Index. That is on health, education and other matters. What has the government to answer about that? I don't want to speak for a long time, since Pratima Mondol will speak on our party. Sir, I want to pose one question. Why is the finance minister depriving West Bengal in the matter of MG-NREG? This year, the NREGA dues to West Bengal was 7,000 crores. For the last 2 years, it's 52,000 crores. And total dues of West Bengal is 2 lakh crores. So why West Bengal is being deprived?
You think we shall be kept down forever? No. We have already protested. We shall continue to protest. There are some people who are inimical to West Bengal, like Shukanto Mojumdar. They don't want West Bengal to get money. But in spite of everything, we shall give poor people their sustenance and we shall win the elections in 2026. That's why supplementary demands is an essential part of the budget making exercise. We know that if the government has shortfall, it has to be made up. We know that there is also technical savings in the sense that they will be made from savings of other departments. So in this way, another technical supplementary expenditure is rupees 8,337 crores is sought for transfer to monetization of national highways, fund infrastructure investment draft, INVIT, and rupees 35,950 crore is sought for investment under conversion of outstanding spectrum auction dues into equity in respect of Vodafone Idea Limited. So all is not well in the state of Denmark. Even though the government says our economy will be third economy in the world, it will be $1 trillion economy. Economy has serious fault lines. I hope that the finance minister who insulted this house by not coming to the house in the time of debate will reply to all these questions whenever she comes here. Thank you, sir. Honorable Thiru T.R. Balu, sir. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த மாமன்றத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில் முதல் துணை மானிய கோரிக்கை 1,32,000 கோடிக்கான துணை மானிய கோரிக்கையில் பேசுவதிலே எனக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தாலும் இந்த 6 மாத காலத்திற்குள் இந்த 1,32,000 கோடிக்கு ஆன அதிகப்படியான செலவு எப்படி வருகிறது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற நேரத்தில் 2 வகையாக பிரித்து சொல்கிறார்கள். ஒன்று 90,812 கோடி ரூபாய் அதிக வருவாய் வந்ததாகவும் சேமிப்பு வந்ததாகவும் ஒரு வகையிலே சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த அதிக செலவினங்களுக்காக 41,400 கோடி ரூபாய் அதிக செலவினங்களுக்காக அது தேவைப்படுகிறது சொல்கிறார்கள். முன்னாலே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அந்த 90,812 கோடியில் அவர்கள் மிகவும் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டிய ஒன்று, எதிர்பார்க்காமல் வந்ததல்ல. சேமிப்பு என்றால் சேமிப்பு எப்படி வரும்? சேவிங்ஸ் பேங்க்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்களா? இல்லை. அந்த பணம் அவருக்கு வழங்கிய பணம் அதிகப்படியாக அதிக தொகையை முன்னாலேயே ஜெனரல் பட்ஜெட்டில் முதலாக அளித்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறார். அது திரும்ப வருகிறது, திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. அதே போல அவர்கள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்று சொல்வதற்கு எந்த நியாயமும் இல்லை. எப்படி என்று கேட்டால், பணம் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் திருப்பி அனுப்புகிறார்கள். அதற்கு பிறகு அதிக வருவாய் என்று சொல்கிறார்கள். எப்படி அதிக வருவாய் வரும்? அதிக வருவாய் என்றால் ஏதாவது அவருக்கு வணிகத்துறையில் ஈடுபடுகின்ற இலாக்காக்கள் வைத்திருந்து அந்த வணிகத்துறையின் மூலம் அதிக வருவாய் வந்திருக்கிறதா? இல்லை. ஆக இரண்டுமே குளறுபடிகளாக நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது மட்டுமல்ல, 41,455 கோடி ரூபாய் அதிக செலவினங்கள் வருகிறது. ஆகவே எங்களுக்கு இந்த நிதி இந்த மானிய கோரிக்கை நான் சேர்த்திருக்கிறேன் என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். 41,455 கோடியில் 18,525 கோடி ரூபாய் உரமானியமாக இருக்கிறது. 9,500 கோடி ரூபாய் கச்சா எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கின்ற மானியமாக இருக்கிறது. இது ரெண்டும் ஆண்டுதோறும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். உரமானியம் என்பது ஆண்டுதோறும் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒன்று. அதே போல கச்சா எண்ணெய்க்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பெட்ரோலியத்துறையில் கொடுக்கப்படுகின்ற மானியம் என்பது ஆண்டுதோறும் வருகின்ற ஒன்று. இது எப்படி எதிர்பார்க்காமல் இருந்தார்கள்?
அது மட்டுமல்ல, உள்துறைக்கு 2500 கோடி ரூபாய், 1200 கோடி ரூபாய் வெளியுறவுத்துறைக்கும், 1300 கோடி ரூபாய் கல்வித்துறைக்கும் அவர் வழங்கியிருக்கிற காரணத்தினால் ஏறத்தாழ 41,500 கோடி ரூபாய் புதிதாக அவர்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நியாயமில்லை. ஏனென்றால் இதெல்லாம் முன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும். முன்னாலே அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தும் இந்த தொகையை ஏன் அவர்கள் முன்னாலே முதல்ல அறிவித்த நிதிநிலை அறிக்கையை சேர்க்கவில்லை என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி. அவர்கள் பதில் உரைக்கின்ற பொழுது இதற்கு 90,812 கோடி ரூபாய்க்கும் அதே நேரத்தில் 41,450 கோடி ரூபாய்க்கும் உள்ள விளக்கத்தை அம்மையார் அவர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த நிதி மானிய கோரிக்கையில் மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால், அவர்கள் IMF அகில உலக மானிட்டரி அகில உலக ஆணையம், அந்த ஆணையம் நிதி ஆணையம் என்ன சொல்கிறது? இவர்கள் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்படுகின்ற நிதி நிலை அறிக்கைகளும் அவர்கள் கையாளுகின்ற கணக்குகளும் சரியாக இல்லை, எல்லாம் சப்ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது, தரக்குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்வது மட்டுமல்ல, நம்முடைய நாட்டினுடைய நிதிநிலையை அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி தரக்குறைவு என்று சொல்லி சி கிரேட் என்ற நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளிவிட்டார்கள். இந்த சி கிரேடுக்கு போனதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன நியாயமான காரணங்கள் என்ன? ஏன்னா 10.1% இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில் நிதிநிலை அறிக்கை முதலிலே வைக்கிற நேரத்தில் 10.1% இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் ஜிடிபி. அதற்கு பிறகு இப்போது என்ன சொல்கிறார்கள்? 8.2% தான் ஜிடிபி என்று பிரதமரே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஆக 2% திடீரென்று குறைந்ததற்கு என்ன காரணம்? இப்படிப்பட்ட மோசமான நிலையிலே இந்திய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி கண்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் அந்த தரத்தை சி கிரேடுக்கு ABCD என்ற நிலையில் சி கிரேடுக்கு அவர்கள் தள்ளியிருக்கிறார்கள். ஆக இப்படிப்பட்ட நிலை உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்திய அரசினுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் நிச்சயமாக பலரும் சந்தேகப்படுகிறார்கள். டாக்டர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம், அதே போல டாக்டர் அருண் குமார், இவங்க 2 பேருமே இந்தியாவினுடைய மிகச்சிறந்த பொருளாதார நிபுணர்கள். அவர்களே இப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களே இதை நம்ப முடியாத நிலையில் இருக்கிறது என்று அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லை, செஸ் வசூல் பண்றாங்க. செஸ் வரி, இந்த செஸ் வரி ஆண்டுதோறும் வசூல் பண்றாங்க. செஸ் வரி குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு குறிப்பிட்ட துறையில் அதை வசூல் செய்வாங்க. அந்த நிலை சரியான பிறகு அதை திரும்ப பெற்றுக்கணும். அதே நேரத்தில் குறிப்பிட்ட இலாக்காவுக்கு அந்த பணம் போய் சேரணும், செஸ் வரி போய் சேரணும். அப்படி போகல. குறிப்பாக 1975 போடப்பட்ட பெட்ரோலிய செஸ் வரி இன்று வரை 50 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2.9 லட்சம், கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் கோடி வசூலாக இருக்கிறது. இந்த 3 லட்சம் கோடி 2.296,000 கோடி வசூலானதுல 902 கோடி மட்டும்தான் பெட்ரோலியத்துறைக்கு போகிறது. பெட்ரோலியத்துறையில் OIDB என்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது, ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு. இந்த ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டுக்கு இந்த 2,95,000 கோடி அங்கே போயிருக்கணும். ஆனால் போனதா இல்லை. அங்கே போயிருந்தா புதுசா திட்டங்கள் வந்திருக்கும். இந்த எண்ணெய் பற்றாக்குறை, கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறை 20% மேல இருக்குது. 80% இம்போர்ட் ஆகுது, வெளிநாட்டிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகுது. இந்த இம்போர்ட் வெளியுறவுத்துறையிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகிற நிறை எல்லாமே போயிருக்கும். ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒழுங்கினங்களுக்காகத்தான் IMF துறை இன்றைக்கு சி கிரேட் என்று நம்மை தாழ்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் கவலையோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இப்போது அது மட்டுமல்ல, அவருடைய துறை, இந்த இந்தியனுடைய நிதித்துறை அவருடைய இந்தியாவில் இருக்கின்ற மற்ற துறையை நம்ம சரியாக நடத்துவதில்லை. எப்படி நடத்துவதில்லை என்றால் இப்படித்தான். செஸ் வரி வாங்குறாங்க, வாங்கிட்டு இவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. 902 கோடி ரூபாய் மட்டும் பெட்ரோலியத்துறை கொடுத்துட்டு மீது 2,90,000 கோடிக்கு மேல அவங்களே வச்சுக்கிறாங்க. இது நியாயமா என்பதை கேட்க விரும்புகிறேன். ஒன்று, இதை போலத்தான் மாநில அரசுகளையும் ஏமாற்றுகிறார்கள். I need some 5 or 10 minutes, please. மாநில அரசுகளை ஏமாற்றுகிறார்கள். எப்படி ஏமாற்றுகிறார்கள்? மன்ரேகா திட்டம். இந்த மன்ரேகா திட்டத்தை காந்தி பேருக்கிறதால இன்னைக்கு மாத்திரத்தை முயற்சி பண்ணுகிறாங்க. மிக மோசமான நிலையில் இந்த அரசு போய் கொடுக்குறது. இதே ஒன்று எடுத்துக்காட்டு. இன்றைக்கு 100 நாள் வேலை திட்டம்
குறைந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது மட்டுமல்ல, 30 கோடியை மனித நாட்கள் தமிழகத்திற்கு இருந்த நிலை மாறி இன்றைக்கு 12 கோடி மனித நாட்கள் மட்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இதை விட கேவலம் என்னவாக இருக்க முடியும்? 1290 கோடி ரூபாயை மாநில அரசுக்கு ஒன்றிய அரசு தரணும். இதுவரைக்கும் தந்தபாடு இல்லை. 1290 பொருள்களுக்காக வழங்கிய தொகை, தமிழ்நாடு அரசு பொருள்களுக்காக வழங்கிய தொகை இதுவரை அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. அது மட்டுமல்ல, ரயில்வே துறையில் 31,450 கோடி திட்டம். அந்த திட்டத்தில் 301 கோடி மட்டும்தான் ரயில்வே திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கி இருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? 0.95%, 1% கூட இல்லை. ஆனால் தமிழகத்திலிருந்து மத்திய அரசுடைய வரி வருவாய் கொடுக்கப்படுவது 1 லட்சம் கோடி. இந்த 1 லட்சம் கோடி வாங்கிட்டு 301 கோடி மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க சொன்னா அது எப்படி சரியா வரும்? ரயில்வே துறைக்கு 301 கோடி, இது எப்படி சரியா வரும்? மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் திட்டங்களை அனுப்பிச்சோம். 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் அனுப்பிச்ச திட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால திருப்பி அனுப்புறாங்க திட்டம். மதுரைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் மிகப்பெரிய நகரங்களாக இருக்கின்ற 2 இடத்துக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வேணும் சொல்லி நாங்கள் அனுப்பிச்சதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாம திடீர்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா 20 லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு குறைவாக இருக்கிறது. அது 2011 சென்சஸ். 2011 சென்சஸ்ல எடுத்த போது 20 லட்சம் மக்களுக்கு குறைவாக இருக்காங்க, அது உங்களுக்கு கிடையாது என்று இன்னைக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள். நான் கேட்கிறேன், ஆக்ராவில், இந்தூர்ல, புவனேஸ்வர்ல, நவி மும்பையில் இந்த கணக்கு வராதா? அது மட்டுமல்ல, ஜனத்தொகை கணக்கு பார்க்கறது, திட்டத்தை நிறுவது ஜனத்தொகை கணக்கு பார்க்கறதா, வயபிலிட்டியை பார்க்கறதா, லாப நஷ்டத்தை பார்க்கறதா, திட்டத்தில் லாப நஷ்டம் வருதான்னு பார்க்கறதா, அல்லது ஜனத்தொகை கணக்கை பார்க்கறதா? இந்த முறை மிக மோசமாக இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதோட பூந்தமல்லியிலிருந்து சென்னை வரைக்கும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர், இந்த 10 கிலோமீட்டர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, முடிந்து போனது, சேஃப்டி சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்துடுச்சு. ஆனாலும் அந்த திட்டத்தை இதுவரை துவங்கி அந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. இது மிக மிக மோசமான நிலை என்பதை இந்த ஒன்றிய அரசு எப்படி தமிழக அரசை நடத்துகிறது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. மாய்ச்சர் கண்டென்ட், விவசாயிகள் நெல்லை விளைவிக்கிறாங்க. செப்டம்பர் மாதத்தில் மழை பெஞ்சு அந்த மாதிரி மோசமான நிலை வந்த பிறகு அறுவடைக்கு போகின்ற நிலை, அறுவடை பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. அறுவடை பன்றிய நெல்மணிகள் களத்துமேட்டுக்கு வருது. களத்துமேட்டில் இன்னும் ஈரப்பதம் அதிகமாகிறது. 17% தான் ஈரப்பதம் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் 22% வேண்டும் என்று தலைவர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப கடிதம் எழுதுகிறார், கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆனால் இவர்கள் தரவில்லை. இப்ப என்ன பண்ண போறாங்க? தஞ்சாவூர்ல எங்க இந்த நிலை ஏற்பட்டதோ, தஞ்சை டெல்டாவிலும் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டுல இந்த நிலை ஏற்பட்டது. தஞ்சாவூர்ல இவங்க மாநாடு போட போறாங்களா? யாரு? அடுத்த 2-3 மாசத்துல பிரதமர் போக போறாரு. பிரதமர் போகும்போது என்ன வரவேற்பு இருக்கும் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இந்த 17%-இருந்து 22% என்பதை அவர்கள் கொடுப்பதற்கு தவிர்க்கிறார்கள். அடுத்தது கல்வி திட்டம், சமக்ர சிக்ஷா SSA ஸ்கீம். இந்த SSA ஸ்கீமுக்கு 3548 கோடி கொடுக்கணும். இந்த 3548 கோடியை புறக்கணிக்கிற முடியாதுங்கிறாங்க. ஏன் முடியாது? கல்வி திட்டத்தை ஏற்றுக்கணும். கல்வி திட்டம் இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்ட், இட் இஸ் எ பாலிசி ஒன்லி. ஒன்றிய அரசுடைய கொள்கையும் மாநில அரசு கொள்கையும் வேறு வேற இருக்கலாம். இதை நீங்க எப்படி எங்களை இன்சிஸ்ட் பண்ண முடியும்? அந்த கொள்கை எங்களுடைய கொள்கை தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இன்னைக்கு இல்லை, எப்போதும் இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாத தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நீடிக்கும். இது அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய கொள்கை, அண்ணன் கலைஞர் அவருடைய கொள்கை. இந்த திட்டத்திலிருந்து நாங்கள் மாறவே மாட்டோம். இந்தி என்றைக்கும் கிடையாது தமிழகத்தில் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். 2010 ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். 4 லட்சம் ஆசிரியர்கள் தமிழ்நாட்டில் நியமிக்கப்படுகின்ற ஆசிரியர்களுக்கு புது கொள்கை வகுக்கிறார்கள். நீங்க தகுதி தேர்வு பெற்றாதான் நீங்க ஆசிரியராக தொடர்ந்து போக முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். 2010 அப்பாயின்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கு 2024, 14 வருஷம் கழிச்சு 2 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க தகுதி தேர்வு பெற்று நீங்க பாஸ் பண்ணாதான், தகுதி ஏற்பட்டாதான் நீ தொடர்ந்து ஆசிரியராக தொடர முடியாது. முடிவதற்கு சான்ஸே கிடையாது. மத்திய அரசு நேரடியாக கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகி புதிதாக அவர்களுக்கு அனுமதி வாங்கி தர வேண்டும். இல்லை என்றால் 4 லட்சம் ஆசிரியர்களுடைய நிலை என்னவாகும் என்பதை அவர்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஆகவே
என்னுடைய அன்புக்குரிய நண்பர்களே, we demand immediate release of pending MNREGA funds due on resolution of labor and materials allegation. Number 2, to approve the increased moisture content of paddy 22% from 17%. Immediate approval of metro projects, Coimbatore and Madurai. Immediate release of rightful due of 3,548 from SSA scheme without any further delay. ஆசிரியர்களுக்காக 2010 வழங்கப்பட்ட அந்த 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 பணி தொடர்ந்து நீடிப்பதற்காக அரசு இந்த ஒன்றிய அரசு நீதிமன்றத்தை நாடி புதிய அரசு ஆணையை பெற்று அந்த ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்வளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you. Thank you, honourable member. Sri K.C. Neni Sivanathji. Thank you, sir. I raise to speak on first batch of supplementary demand of grants for year 25-26. This batch covers 72 grants with government seeking Parliament's approval for additional gross of 1.32 lakh crores. Sir, some of honourable members from opposition have spoken about economic disorder, but the facts are different. Under the leadership of our Honourable Prime Minister Narendra Modi ji, FDI has crossed 81 billion USD. MSP for major crops has gone up by 50 to 70% with record procurement helping farmers, and over 75% of defence capital budget is now kept for Indian industry, boosting jobs and national security. Now speaking about supplementary demand for grants 25-26. Under these supplementary grants, Minister of Chemical and Fertilizers has been reappropriated 31,000 crores, a significant portion of which will strengthen urea subsidy scheme, sir. Sir, urea is not only a fertilizer, it is the backbone for crop growth. Any delay in supply threatens entire agricultural cycle. This year, Andhra Pradesh faced sudden surge in demand during peak Kharif season. At this critical moment, our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu ji personally intervened. He took up issue with Union government. The Minister J.P. Nadda ji, who swiftly responded, releasing fresh stocks and ensuring uninterrupted supply across the states. This timely assistance protected our farmers, our crops and their livelihood. Sir, an amount of 18,800 crores has been reappropriated to the Ministry of Road Transport and Highways. The Union government has built 10,660 kilometers highways in financial year 25, exceeding its target of 10,400 kilometers. This indicates government commitment to ensure connectivity across the country. Another critical transport project to ensure connectivity is the metro rail. Sir, among all the southern states, Andhra Pradesh is the only state without metro rail system. In this background, Vijayawada and Vizag metro projects are not just transport systems, they are necessary for the growth of this region and achieving Prime Minister's goal of Viksit Bharat. Sir, 1,303 crores is being reappropriated to Ministry of Education. One of the key sectors in education is medical, for which building of new colleges are essential. Sir, when there is a crunch in financial resources, the central government from time to time comes up with innovative models to ensure development does not stop. But sir, YSRCP party today in AP is opposing the development of medical colleges. This is the sector they themselves neglected with inaction and false promises. They promised to build 17 new medical colleges, but the truth is that not even a single stone was laid to most of them. In 4 years of YCP government, instead of 85,000 crores, they have spent less than 1,000 crores. In this space, it will take 15 years for completion of these 17 medical colleges. Sir, after failing so badly, the same party now opposes nationally approved PPP model. The Department of Economic Affairs, Government of India has notified this model, and the apex body of medical education, the National Medical Commission, has recommended to build PPP medical colleges. Sir, yet
And also, the House Standing Committee on Health also recommended this colleges of this model. Yet YSRCP is against this model because they don't understand the difference between PPP and privatization. Sir, under PPP model, the government keeps full control while the private partners only support infrastructure, operation, and completing the construction within 2 years. Half the seats remains under government quota, all the reservations stay same, and the fees for these seats are capped to protect the students. In these hospitals, 70% of beds are reserved for Ayushman Hospital Ayushman Bharat patients. This model ensures better infrastructure while safeguarding students and poor. Sir, if YSRCP is really committed for the public, they would have not spent 500 crores government money to build a palace for their chief minister, a gross ugly waste of public wealth. They could have instead used 500 crores for operational of these medical colleges. Their opposition to medical colleges through PPP model exposes their hypocrisy. Neither they will work nor they will allow anyone else to work. They cannot digest the development being pursued by our Honorable Chief Minister Nanda Chandrababu Naidu ji. Finally, sir, I conclude the supplementary grants show the government's clear commitment to welfare, agriculture, education, and health. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has delivered 8.2% of GDP growth despite of global uncertainty. Together, we build a stronger and brighter nation to our people. Thank you, sir. Thank you, Honourable Member. माननीय सदस्य श्री केसी वेणुगोपाल जी. Honourable Chairman, sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion of supplementary grants for demands. Basically, these demands for grants introduced in December 2025, about 72 demands and 1 appropriation. Sir, today the truth, the Indian economy is staring in the rise. Indian economy is staring in the face, sir. The rupee is weak, sir. Prices are high. Job is lacking, and confidence is collapsing. This is not a bad luck, sir. Bad governance of this government. The rupee has fallen to its lowest ever, closing 90 against the US dollar, and still sliding, sir. This is not a small technical issue. When Honorable Finance Minister is not there here, 1,32,000 rupees they are asking from the Parliament, but Honorable FM is not here. Supplementary demands, I think FM's presence is needed. When we are talking about the rupees lowest price, she used to reply to us that it is not going to affect the economy at all. But what is the real thing, sir? It means it will higher the fuel prices, it will costlier imports, sir, and rising pressure on the common man, actually. And Honorable Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, he has told the rupees reaching, that point of time, rupees reaching 58 against US dollar. Then what he told, sir, seems there is a competition going in between the rupee and the government in Delhi about whose dignity goes down faster. This was told by our Honorable Prime Minister, sir. Now, sir, now rupees now 90 against the US dollar, then whose dignity is now glowing, sir. That point of time, then Gujarat Chief Minister compared to the Delhi government. Now the rupees is 90, then whose dignity is now lower? Certainly union government dignity is lower comparing to the rupees. Very, very unfortunate, sir. Sir, even more worrying is that the GDP rates that are given by the government is totally questionable internationally. They are questioned internationally. The IMF has flagged serious weakness in India's GDP data. Still the government is telling our GDP is better, but IMF still is already contesting it. So I would like to point out the concern with regard to the Ministry of Road Transport and Highway. We are passing the demands for supplementary demands for road transport and highway, sir. For the year 25-26, the Ministry of Road Transport and Highway proposed an expenditure nearly 2.87 lakh crore, which is higher than last year. The allocation for roads and bridges alone is more than 1.16 lakh crore. India today has the second largest road network in the world. I agree, sir. National Highway network is developing and expanding. But Speaker, sir, the House must ask a fundamental question, sir.
If the massive spending resulting in safe roads, sir, accountable governments is there, and value for public money is there in this? Or is it creating a system where public funds are converted into private few for a chosen few? The debate is not about opposing highway development. We are all for development, sir. But debate is about the corruption happening in this area. Sir, the Bharatmala project we discussed so many times. It was intended to complete within 5 years. Now it is already 8 years already over. 50% of the work is not completed. Sir, now I am coming to my state, Kerala, sir. The consequences of reckless model are most visible in Kerala, sir, now. From Kasaragod in the north to Kollam in the south, national highway projects, two major stretches, NH66 and NH544, are collapsing before the eyes of the public. It's virtually collapsing, sir, roads. I think you are also aware of that. The roads are collapsing like anything in national highway. In Kerala stretch, sir. Elevated structures are sinking, retaining walls are collapsing, service roads are flooded, and fresh cracks are appearing on newly constructed roads. Sir, in May this year, the entire stretch of elevated highway in Kuriyad was collapsed. The scene was catastrophic. The entire stretch is now beyond repair. Recently, NH wall in Kollam has been collapsed. Our Ramachandran raised this issue already. I can list out dozens of such incidents, sir. Sir, the problem, what is the problem? What is the problem? In my own constituency, one death was happened. 40 people died because of this construction site. There is no proper management. Sir, what is happening in Kerala is not act of nature, sir. It is the result of a system where speed and profit were prioritized over safety and scientific planning, sir. Sir, the House must understand that these failures are not accidental. They are the outcome of a development model designed to maximize corporate profit, not public safety. And this brings me to the core issue behind the supplementary demand, basically the highway scam, sir. Let us look at one project, Adiyur Vengalam stretch of NH66 in the North Kerala. A road of just 40 kilometers. This project was awarded to Adani Enterprises for 1,832 crore. Adani did not build, sir. What they have done? Adani did not build. He subcontracted the entire work to Wagad Infra Projects, an Ahmedabad-based firm, for just 971 crore. You see, sir, the total contract was 1,838. He has given the subcontract to 971 crores, almost half the amount. The actual construction cost is therefore 23.7 crore per. Basically, the actual construction cost is 23.7 crore per kilometer. But Adani is being paid 45 crore per kilometer, sir. Sir, Adani will earn 2,043 crore from this one project alone, an excess profit of 1,310 crore funded entirely by public money, sir. This route is legal, sir. I am not telling it is illegal. This route is legal because the system was designed for it, sir. Kerala NH66 six-lane highway project has been divided into more than 90 phases. Some of these phases are being executed under the EPC model and some are in the HAM model. Projects executed under EPC model in Kerala have cost between 26 crore and 32 crores per kilometer, even with higher complexity. The bridges are there. Actually, the area is designed. Area is also very much complicated, but their money is lesser. The scam is not accidental, sir. It was designed and facilitated through the hybrid annuity model HAM introduced in 2016 under the Modi government. Here is how HAM works. 40% of the project cost is paid during the construction itself. 60% is paid over 15 years annuity with interest of the bank rate plus 3%. A separate contract covers 50 years of maintenance on top of the 1,838 crores. Sir, you can see that
in this case, the contractor got 735 crore during the construction itself. He will get 1,102 crore over 15 years as annuity. He will also get 940 crore as interest. He spent only 97 crores and earns over 2,043 crores. This is the profit margin more than 1,000 crore without laying a single brick himself. Just a minute. Rule. Mr. What's the rule? What's the rule? Rule 216. Please. 216 ये कहता है, वेणुगोपाल जी हमारे सीनियर सांसद हैं, पीएससी के चेयरमैन हैं। रूल ये कहता है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में जिन चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स आया है, केवल और केवल उसी के लिए चर्चा हो सकती है। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की चर्चा नहीं हो सकती, न किसी पॉलिसी की चर्चा हो सकती है। इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए उनको केवल डिमांड पर कहिए सर। ये रूल हमने नहीं बनाया है, रूल आपने बनाया है, रूल मावलंकर साहब ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। यही 216 है सर, रूल यही है। इसीलिए उनको कन्फाइंड करिए सर कि केवल और केवल वो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर ही चर्चा करेंगे, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर। माननीय My colleague in the member, Venugopal. My colleague in the Treasury bench, Srikanth ji, point out about a point of order. Sir, we are giving supplementary demands. They are asking for national highway also, sir. I quoted that. They are asking supplementary demand for national highway. It's okay. Then we cannot discuss about national highway project, sir. No, you can. Then what else we have to discuss, sir? But what else has to discuss, sir? Sir, let me come. Only 3-4 minutes I will take, sir. 216. Sir, you have to follow the rule 216. Sir, I am serious. I am seriously taking it, sir. Sir, this is a concern of our state, sir. Sir, this is a concern of our state. Every day road is collapsing, sir. Every day road is collapsing. People are in a very much fear complex. Please. Just 216, the rule. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same, and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them, save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion. You are a senior member of the House. You should follow the rules. You should follow. No. Please be seated. You are not allowed. Please be seated. He knows. He is capable. He is capable. He is senior member. And Nishikant ji raised this concern under Rule 216. Okay, so you should go with the Rule 216. Please be seated. Let you go. Let me complete, sir. Yeah. Sir, I am very much speaking on the issue of national highway, where the finance is demanding amount from Parliament. The finance ministry is demanding to the Parliament that this much amount has to be given to the National Highway Department as a supplementary demands for grants. That's why I am speaking about that. This is one of the major issue Kerala is concerning, sir. Every day, road is collapsing, bridge is collapsing. People are in a fear complex. Sir, people are dying, sir. Sir, if you are not discussing in the Parliament, where it has to be discussed, sir? If you are not discussing in the supplementary demands for grants, where it has to discuss? Sir, my point is that this corruption, sir, I talk about the Adiyur Vengalam, sir, 45 crore per kilometer. You see Talapadi to Changala, there are only 43.7. There were 7 major bridges and 17 grade separators are there. This road is very plain. There are 17 bridges are there. There are only 43 crores. Kappirikadu to Talikulam, similar geography, cost only 35.1 crore. Sir, this is a clearly loot, legalized loot, sir. This is a legalized loot, sir. Sir, we have to discuss. Then every day, Honorable Minister itself sometimes told that everything is going wrong. Honorable Minister already told. Sir, my point is that, sir, this should be investigated, sir. This should be investigated. Because this is our public money, sir. Public money cannot be taken away by some individual, sir.
Sir, there should be a scrutiny, there should be an investigation, sir. We are demanding for an investigation. With these words, I am concluding my speech, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Honourable Member. Sri Alok Kumar Sumanji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर 2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के माध्यम से लगभग 41,455 करोड़ रुपए के नगद खर्च के लिए अनुमोदन मांगा गया है। यह राशि ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर 1,32,268 करोड़ रुपए का एक हिस्सा है। हालांकि 90,812 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंत्रालयों ने आंतरिक बजट से एडजस्ट की जाएगी। शेष राशि 41,455 करोड़ रुपए के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल आवश्यक है। महोदय, वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्राइसेज के बढ़ने या घटने के कारण और जन कल्याण की योजनाओं के बढ़ते खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाया गया है। वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का बड़ा हिस्सा सब्सिडी को पूरा करने के लिए दिया गया है महोदय, जिसमें एलपीजी बिक्री कर पर नुकसान की भरपाई के लिए 9,473 करोड़ रुपए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2,500 करोड़ रुपए, होम मिनिस्ट्री के लिए 2,298 करोड़ एवं हायर एजुकेशन के लिए 1,303 करोड़ रुपए दिए गए हैं महोदय। मतलब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यह कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि वर्ष 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी का 8.2% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, जो इम्प्रेसिव है एवं देश के राज्यों एवं अन्य सबों के लिए यह इनकरेजिंग है। यह सरकार की ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के कारण संभव हुआ महोदय। आप आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है और हम जल्दी ही वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं। वर्ल्ड के विकास के लिए भारत का योगदान 20% होने जा रहा है। आज हमारा फिस्कल डिफिसिट 4.4% होने की उम्मीद है। महोदय, देश में कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड जुटा रही हैं, हमारे बैंक्स मजबूती के साथ योगदान दे रहे हैं, देश में इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, देश की करंट अकाउंट डिफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। महोदय, सरकार के सुधार का ही परिणाम है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। टेक्नोलॉजिकल विकास में भी देश काफ़ी आगे बढ़ा है। 5G स्टैक देश में ही विकसित हुआ और हमने मेड इन इंडिया 5G भी बनाया और आज हम मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। आज देश में पारदर्शी नीति के कारण सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्री भी लगनी शुरू हो चुकी है महोदय। महोदय, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो और उसके लक्ष्यों को देखें तो हमने काफ़ी हद तक अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लिया है और यह देश के लिए और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में हथुआ में सब्या एयरफील्ड है जो 471 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी उड़ान योजना में 2020 में शामिल हो चुकी है और उसकी पिलरिंग एंड बाउंड्री हो चुकी है। बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अतः महोदय, मेरा निवेदन है कि बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर इसको जल्द से जल्द चालू करने की कृपा की जाए। महोदय, मैं अपनी बात रखते हुए अनुरोध करूंगा कि राज्यों में वेतन एवं पेंशन पर हो रहे खर्च के लिए भी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान किया जाए ताकि विकास संबंधी जरूरतों के लिए अधिक रकम खर्च हो सके। राज्यों के बीच बढ़ती राजकोषीय असमानता को भी कम किया जा सके। सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों में वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अगस्त के दौरान बजट आवंटन के अनुपात में अधिक व्यय हुए महोदय।
पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि एवं राजस्व में आई कमी के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरोसा है महोदय। अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में सरकारी खर्च कम है। 2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो जीडीपी का 28.62% है, चीन का 33.4%, ब्राज़ील का 46.38%, अमेरिका का 36.2% और फ्रांस का 58.32% है। मेरा इसमें सुझाव है महोदय कि आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। महोदय, सरकार ने विकास विरोधी बाधाओं को दूर करने के लिए और उसे सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे कारोबारी लोगों की सुगमता बढ़ी है। बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग दिखती है। वैश्विक जटिलताओं के बावजूद सर्विस निर्यात बढ़ने से व्यापार में संतुलन बना हुआ है। महोदय, दुनिया भर में जहां 2.3 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसमें भारत सरकार देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री बजरंग सोनवाने जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे बोलने के लिए मौका दिया। आज मी या सभागृहात जे बिल आलं त्या बिलावर बोलताना भारत देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ज्याची गणना केली जाते, या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांसाठी ज्या काही मागण्या आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी भारत सरकारने नवीन काहीतरी वाढ केली पाहिजे अशी माझी अपेक्षा होती। पण आता माग करताना भारत सरकारने त्याच्या बाबतीत काही मागणी केलेली नाही। शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ग्रँट या नवीन ग्रँटमध्ये द्यावेत ही एक माझी मागणी आहे। एवढंच नाही तर साहेब, माझ्या महाराष्ट्रामध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये धाराशिव बीड संभाजीनगर या रेल्वे मार्गासाठी अतिरिक्त निधी दिला पाहिजे। बऱ्याच दिवसापासून मागच्या 2014ला मोदी सरकार आलं तेव्हापासून जुन्नर चोंडी आष्टी असा एक रेल्वे मार्ग आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा नवीन पैसे दिले पाहिजेत, बजेटमध्ये तरतूद केली पाहिजे। बऱ्याच दिवसापासून मागील 14-15 वर्षापासून अहिल्यानगर बीड परळी रेल्वे हा पण एक मार्ग आहे। या मार्गासाठी बजेट देऊन सुद्धा काम वेळेत पूर्ण होत नाही। त्याला जर बजेट कमी पडत असेल तर ते जास्तीत जास्त दिलं पाहिजे। आणि अध्यक्ष महोदय, संबंध या सभागृहातील MP जे आहेत, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, यांचा जो निधी आहे हा निधी अगदी कमी आहे साहेब। माझ्या महाराष्ट्रात जर बघितला तर MLAचा जो निधी आहे, जो फंड आहे, हा फंड 5 करोड रुपये आहे, म्हणजे 6 माझ्या खाली म्हणजे कमीत कमी 30 करोड। माझी एवढीच मागणी आहे की येणाऱ्या काळामध्ये 30 ते 35 करोड निधी वर्षाला तुम्ही MP लँडचा दिला पाहिजे अशी माझी या सभागृहाच्या वतीने आपल्याला मागणी आहे। साहेब, अध्यक्ष महोदय, आपल्या भारत देशामध्ये पोस्ट ऑफिस एक दळणवळणाचं खूप मोठं साधन होतं, पण पोस्ट ऑफिसेस बरेच काही बंद आहेत। त्याला नवीन पोस्ट ऑफिसेस काही माझ्या बीड जिल्ह्यामधील माझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये झाले पाहिजेत अशी माझी मागणी आहे। आपल्याकडे मोबाईलचं युग आलंय, मोबाईलच्या युगामध्ये आपण मोबाईलवर आता पूर्ण जग चाललंय। या सर्व गोष्टी करत असताना माझ्या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये आणखी बऱ्याच भागामध्ये मोबाईल टावर्स नाहीत। महाराष्ट्रामधील बऱ्याच भागामध्ये हिल एरियामध्ये मोबाईल टावर नाहीत, त्याच्यामुळे मोबाईल टावरसाठी सुद्धा अतिरिक्त ग्रँट देऊन मोबाईल टावर झाले पाहिजे ही माझी मागणी आपल्याला आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आहे। त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग आमचे नितीनजी गडकरी साहेबांनी खूप मोठा देशामध्ये जाळं निर्माण केलं, पण साहेब काही माझ्या मतदारसंघामध्ये आणखी 4 लेन करण्याचे बाकी रस्ते आहेत। 548D 548C त्याच्यासाठी 4 लेनिंग आणि 6 लेनिंगसाठीचे एक निधी द्यावा अशी सुद्धा माझी मागणी आहे। साहेब, महाराष्ट्रामधील आरोग्य व्यवस्था पूर्ण ढासळलेली आहे। केंद्र सरकारनं आरोग्यासाठी सुद्धा
इमारत असेल किंवा मेडिकलसाठी असेल, सिटी स्कॅनच्या मशीन असतील, अशा काही विविध योजना महाराष्ट्रासाठी दिल्या पाहिजेत अशी माझी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे मागणी आहे. एवढंच नाही तर मेडिकल कॉलेज माझ्या इथं प्रत्येक जिल्ह्याला एक नवीन मेडिकल कॉलेज द्यायचं हे केंद्र शासनाचं धोरण आहे, पण माझ्या जिल्ह्याला मेडिकल कॉलेज नाही. हे मेडिकल कॉलेज द्यावा ही एक आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी विनंती आहे. साहेब, शिक्षणाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, आर्मी स्कूल याच्यासाठी निधी कमी पडतो, याच्यासाठी सुद्धा अतिरिक्त निधी दिला पाहिजे. माझ्या गोरगरीब जनतेच्या लोकांचे मुलं तिथं शिकले पाहिजेत. माझ्या जिल्ह्याच्या बाबतीत, माझ्या एका निर्वाचन क्षेत्राच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर माझा जिल्हा महाराष्ट्र सबंध देशाला ऊसतोड मजूर पुरविणारा जिल्हा म्हणून ज्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यातील माझ्या ऊसतोड मजुरांचे जे मुलं आहेत, या मुलांसाठी एक शाळा प्रत्येक कारखान्यावर किंवा फिरती शाळा तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करावा आणि शाळा द्याव्यात, ही एक माझी कळकळीची विनंती आहे. साहेब, एवढंच नाही तर आपला हा भारत देश हा ग्रामीण भारत देश म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण एरियासाठी, रूरल एरियासाठी ग्रामपंचायत ही सर्वात महत्त्वाचं केंद्रबिंदू आहे. या ग्रामपंचायतसाठी इमारत नाही. ज्या ग्रामपंचायतमधून आपला जसा मुख्यमंत्री एका स्टेटचा असतो तसा त्या गावचा तो मुख्यमंत्री आहे, पण त्याला तिथं बसायसाठी जागा नाही, खुर्ची नाही, इमारत नाही. इमारतीसाठी सुद्धा केंद्र सरकारने अधिक निधी द्यावा असं माझं प्रांजळ मत आहे. साहेब, पंतप्रधान घरकुल जी योजना आहे, पंतप्रधान आवास योजना, या योजनेसाठी आपल्याकडे तुटपुंजा निधी आहे. साहेब, आपण त्याचा निधी वाढवला पाहिजे. एका गरीबाचं घर जर व्हायचं असेल त्याला 5 लाख रुपये निधी अध्यक्ष महोदय दिला पाहिजे, ही माझी अत्यंत कळकळीची विनंती आहे आणि आपण सरकारला सांगून ती द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. एवढंच नाही साहेब, घर घर जल पहुंचाने की केंद्र शासन की या मोदी सरकार का एक ये जल जल कहाँ पहुंचा घर. अभी जल जीवन मिशनचं 3, 13, 9, 12 वाजलेत, जल जीवन मिशन बंद पडले, त्याला पैसे नाही. साहेब, पैसे लवकर द्या. अध्यक्ष महोदय, आपण आपल्या माध्यमातून सरकारला सूचना कराल की त्याला जल जीवन मिशन या योजनेला पैसे द्याल. एवढंच नाही तर MREGS सारखी एक प्रचंड मोठी योजना आहे जी की गोरगरीब जनतेसाठी, महाराष्ट्रातल्या माझ्या देशातल्या गोरगरीब मजुरांना मजुरी मिळते. ह्या MRE योजनेसाठी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये MREGS बंद केले. साहेब, त्याला केंद्राचा 100% पैसा असताना सुद्धा पैसा दुसरीकडे वळवला जातो आणि त्याच्यावर खर्च होत नाही. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला की हा निधी जास्तीत जास्त त्याच्यावर खर्च झाला पाहिजे, माझ्या गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. एवढंच नाही साहेब, आदिवासी ट्रबल आहेत, जे की दलित आहेत, यांच्या सर्वांसाठी वसतिगृह, केंद्र सरकारचे काहीतरी वसतिगृहासाठी निधी दिला पाहिजे आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वसतिगृह झाले पाहिजेत. आणि शेवटची अल्पसंख्याकांसाठी एक माझी डिमांड आहे की अल्पसंख्याक मुलं असतील, मुली असतील, मुस्लिम समाज असेल, त्यांच्या शाळा कमी आहेत, कॉलेजेस नाहीत, त्यांच्यासाठी हॉस्टेल नाहीत, तर ज्या बिग सिटी आहे तिथं हॉस्टेलच सुद्धा दिले पाहिजेत अशी माझी मागणी आपल्या मार्फत सरकारला आहे आणि याच्यासाठी नवीन ग्रँट्स द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद जी. माननीय श्री सदस्य रविंद्र वाईकर जी. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 की पूरक मांगदान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के पहले बेंच पर अपने विचार रखने का अवसर दिया. इसके लिए मैं आपका सर्वहृदय से आभार व्यक्त करता हूं. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की न केवल रक्षा की है बल्कि उसे नई ऊंचाई पर पहुंचा है. महोदय, अब मैं सदन के पटल के रखी हुई पूरक अनुदान मांगों पर आता हूं. महोदय, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 41,455 करोड़ रुपए की अतिरिक्त यानी नेट एडिशनल स्पेंडिंग की मांग की है. मैं सदन का ध्यान 7 प्रमुख आवंटनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. यानी उन्होंने पहला जो आवंटन किया है फर्टिलाइजर सब्सिडी, यानी 18,528 करोड़ का आवंटन वहाँ किया है. महोदय, कुल मांग का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 18,528 करोड़ रुपए केवल उर्वरित विभाग के लिए आवंटित किया गया है. आज दुनिया में खाद की कीमतें आसमान छू रही है, युद्ध चल रहे हैं, सप्लाई चेन टूटी हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ हमारे किसानों के कंधों पर नहीं पड़ेगा, दिया जाएगा. ये राशि यूरिया P&K के उर्वरित सब्सिडी के लिए है ताकि हमारे अन्नदाता को खाद सस्ती दरों में मिल जाए. दूसरा आवंटन जो किया है पेट्रोलियम LPG के ऊपर यानी करीबन 9,473 करोड़ का, पेट्रोलियम मंत्रालय के लगभग 9,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं. उसका उद्देश्य तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करना है ताकि जनता को रसोई गैस
और ईंधन उचित दामों पर मिलता रहे। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गरीब परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन जारी करने के लिए ये आवंटन किया गया है। ये बजट का कुशल प्रबंधन है। तीसरी जो आवंटन किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास करने के लिए, यानी 3028 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए, 340 रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया उसमें से। इसमें लद्दाख में बिजली खरीदना, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय के लिए 1226 करोड़ का आवंटन किया है। भारत की ग्लोबल छवि और कूटनीति के पहुंच के मजबूत करने के लिए 1226 करोड़ रुपए की मांगे है। इसमें हमारे पड़ोसी मित्र देशों में जैसे मॉरिशस हो, जैसे पैसिफिक आइलैंड देशों की सहायता और ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए योगदान शामिल है, जो रणनीति का रूप है, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए 1303 करोड़ का नींव रखी गई है। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1303 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि हमारे डिम विश्वविद्यालय के, जो अभी एक ही सदस्य ने कहा कि कॉलेज और ये स्टडी ये होना चाहिए, इसके लिए विश्वविद्यालय और प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसे क्रांतिकारी योजना के लिए, जिसमें हमारे छात्रों और शोधकर्ता को दुनिया के बेहतरीन रिसर्च पेपर्स मुफ्त उपलब्ध हो जाए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आयकर और बुनियादी ढांचे के लिए देखिए, यानी फाइनेंस एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1831 रुपए का आवंटित किया गया है। उसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, आईटी विभाग के लिए आधुनिक कार्यालयों का निर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ताकि करदाताओं को बेहतर सुविधा मिले। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और राज्य देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, वो महाराष्ट्र है, वो मेरी मुंबई है। उसके कुछ ज्वलंत समस्या और मांगों को आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। मुंबई देश को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन मुंबई की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक केंद्रीय सहयोग की आवश्यकता है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट टाइम बजट में कहा था कि हम लोग घरकुल के लिए, देश के घरकुल के लिए, पीएमवाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत रख देंगे, 10 लाख करोड़ की लागत रख देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 की लागत देंगे। तो उसी में का, जैसे मुंबई केवल एक शहर नहीं बल्कि एक मेगा रीजन यानी एमएमआर बन गया है। महोदय, लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफ लाइन है, लेकिन अब हमें मल्टी मॉडल काम चल रहा है, लेकिन लास्ट माइलेज कनेक्टिविटी अभी तक एक मेरी मांग है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट एमयूटीपी के अगले चरणों के लिए बजट किया जाए। हमें कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास की आवश्यकता है, ताकि आम आदमी का ट्रैफिक में बर्बाद होने वाला समय बचे। मुंबई हमारी नॉर्थ वेस्ट बड़ी हुई है, तीनों तरफ समुद्र है, एक बाजू हिमालय की पर्वतरांगा है। जो हमारा एरिया है 493 चौरस किलोमीटर, और मुंबई के जो रोड है वो 2005 किलोमीटर के है, मगर वो अभी पूरे नहीं गिरे। ताकि ये ट्रैफिक के समय बचने के लिए उसके आर्थिक लागत की जरूरत है, केंद्र शासन में ध्यान दिए। वर्सावा जेटी का आधुनिकीकरण, मेरे संसदीय क्षेत्र में वर्सावा एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कोलीवाड़ा यानी मछुआरों की बस्ती है। यहाँ की जेटी की हालत बहुत जर्जर है। हमारे मछुआरे के भाई बहन को मुंबई के मूल निवासी है, उन्हें अपनी नावें खड़ी करना और मछली उतारने के भारी कठिनाई होती है। मेरी मांग करता हूँ कि सागरमाला परियोजना के तहत वर्सावा जेटी में आधुनिकीकरण विस्तार के लिए विशेष फंड जारी किया जाए। साथ ही मुंबई में जल वाटर मेट्रो, जैसा मैंने कहा, हम लोग कोची गए थे जहां वाटर मेट्रो की सुविधा है, उसी प्रकार से रोरो सेवा का विस्तार मुंबई शहर में होना चाहिए। सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, महोदय, मुंबई रोज करीबन 6,500 मैट्रिक टन कचरा पैदा करती है। देवनार और डंपिंग ग्राउंड अब कचरे से पहाड़ बन चुके हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ है। बार बार यहाँ आग लगती है और जहरीली धुआं फैलती है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाए कि मुंबई महानगर पालिका को विशेष तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करे।
हमें कचरे के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को जल्द से जल्द अपनाना होगा। सभापति महोदय, जल निकाय का कार्यक्रम यानी रीजनरेशन ऑफ वाटर, मुंबई में नदियों और तालाबों का शहर कहा जाता था। आज मीठी नदी नाले में परिवर्तित हो चुकी है। पवई झील और यानी कचरे का कूड़ा बन गया है, यानी सीवर का पानी वहां डायरेक्ट जा रहा है। मेरी मांग करता हूं, ना गंगा की सफाई की गई है, उसी प्रकार ही मीठी नदी की भी सफाई कर दिया जाए। मुंबई में जल निकाय के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की जाए। जब तक हम अपने जल स्रोतों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, मुंबई बाढ़ और जल जमाव की समस्या मुक्त नहीं सकती है। दमन गंगा और पिंजरा और मेरे को 2 मिनट चाहिए सभापति महोदय। महोदय, जल की जो मुंबई यानी गारगाई यानी पिंजर, उसके माध्यम से मुंबई में पानी लाना बहुत जरूरी है। मुंबई की आवश्यकता अभी जो है 4,400 दशलक्ष लीटर की आवश्यकता है, हम देते हैं 3,800 दशलक्ष लीटर पानी। तो गारगाई एंड पिंजर ये 2 धरण जो बांधे जाएंगे शासन के माध्यम से, तो मुंबई के लिए फायदे का होगा। उसी प्रकार कोकण रेलवे जो सिंगल ट्रैक पे चल रही है, हालांकि विद्युतीकरण काम पूरा हुआ है, लेकिन अब तक पूरी लाइन 2 पदरी एंड डबल लाइनिंग नहीं होगी, कोकण का विकास अधूरा रहेगा। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि रोहा से मडगांव तक उस दोहरीकरण के लिए बजट समेटा जाए। उसी प्रकार के खाली घुसपैठी का एक पॉइंट है मेरा महोदय, ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा मुंबई के अस्तित्व से जुड़ा है। मुंबई और उपनगरों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। लोग न केवल झुग्गी झोपड़ियों में अवैध कब्जा करे, बल्कि स्थानिक नागरिकों को संसाधन, पानी, राशन और रोजगार पर डल्ला मार रहे हैं। यह जनसंख्या परिवर्तन भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। मैं गृह मंत्री से मांग करता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र में एनआरसी की तर्ज पर एक अभियान चलाया जाए, अवैध घुसपैठियों को पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित यानी डिपोर्ट किया जाए, ये मेरी मांग है। उसी प्रकार मुंबई में एम्स की स्थापना करना चाहिए कि सब देश से कैंसर के इलाज के लिए हमें मुंबई में आना पड़ता है, कि एम्स की मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। किफायती घर यानी एफोर्डेबल घर और भाड़े के घर मुंबई में ज्यादा से ज्यादा पीएमआई के माध्यम से लाना चाहिए, ये मेरी मांग है। अंत में यही कहना चाहता हूं, ये पूरा बजट भारत की विकास यात्रा को गति देने वाला बजट है। सबका साथ सबका विकास के लिए मंत्र को चिरदार्थ करता है। मुंबई और महाराष्ट्र की इन मांगों को विशेष एम्स की स्थापना पर सरकार सकारात्मक रूप अपनाए, इसीलिए इसी में मांग करता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सिंह जी, सामने। मैं आसन और सदन के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि अभिव्यक्ति के ये बहुमूल्य सूक्ष्म क्षण मुझे प्रदान किए। आदरणीय, इस पूरी अभिलेखों के प्रति जो व्यापक व्यवहार चिंतन के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किया गया, उसमें गंभीरता के वो क्षण भी समाहित हैं जहां वैश्विक दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिपक्ष का उदासीन वक्तव्य इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थित छवि होनी चाहिए उस पर कहीं आखेट हुआ है। अभिव्यक्ति के वो क्षण सदन की सत्यता की विषय को और सारगर्भित मर्यादा की व्यवस्था को संपादित होने चाहिए थे, लेकिन इस बात का अचरज होता है कि कैसे शब्द के व्याकरण की वर्णमाला को प्रस्तुत करने में सच को व्यवस्थित तौर पर न प्रस्तुत कर एक ऐसा अंश प्रस्तुत किया जाए जो सच का आधा हो और सत्य के संपूर्णता को परिभाषित करने में कहीं न कहीं कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मैं इस बात के लिए बड़े आदर से सभापति महोदय आपसे विवेचन करता हूं। सम्मान्य निशिकांत जी दुबे ने यह बात बिल्कुल सही कही कि 216 के माध्यम से जब आप अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हो तो आपकी सीमा अनुपूरक मांगों तक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि व्यापक चर्चा
भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को परिदर्श करते हुए विवेचन के रूप में प्रतिपक्ष ने प्रस्तुत कर दी। तो यहां मैं एक बात आपके बीच में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भारत की स्थिति आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? पूरे संसार की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने भारत की वर्तमान सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया हुआ आज आर्थिक विवेचन, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्र की व्यवस्था को विमोचित करने का पारदर्शी मार्ग प्रस्तुत करता है। उसके उपरांत भी प्रतिपक्ष इस बात के लिए बार बार अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है कि कहीं भी इसमें सफलता की चिंगारी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आदरणीय, उसी अमेरिका जिसके डॉलर के संबंध में इतनी चिंता व्यक्त की गई है, मैं वहीं के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा वो विवेचन प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भारत जैसा एक डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है, what do you do when the world's largest democracy decide it no longer needs your permission? उन्होंने अमेरिका के लिए कहा है कि how does America have to behave? India, the world's largest democracy, feels it doesn't require anyone's permission. You push back. This isn't about just tariff. It is about control. And right now, India is breaking free. The United States knows it, and it sits nervous. US President has threatened tariffs on Indian exports. The official reason, trade imbalance. The real reason, India is rising fast and Washington doesn't like what it can't control. Now, why are they not in a position to accept this? Instead of targeting the government of India, its proper deeds, why are they not accepting this fact? Somebody wants to control you with Mr. Narendra Modi. It is not possible. यहाँ इस बात की व्यवस्था को हमें अंजाम देना पड़ेगा। I'll just, please let me know when my time runs out. भारत की स्थिति क्या है? हम अपने ही शास्त्र उचित चरित्र की मर्यादा में जब वैश्विक व्यवस्था का परिलेख देखने की कोशिश करते हैं, तो भारत की स्थिति आपको ठीक वैसी नजर आती है जो महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अपनी मैत्रिक संधि के माध्यम से कुरु के राष्ट्र को एक मैत्रिक रूप में एक विवेचना प्रस्तुत करी थी। अगर जब अहंकार परिस्थिति के परिदृश्य में सर्वोपरि हो जाता है तो विनाश की शुरुआत होती है। इस महाबली राष्ट्र जिसको आप अमेरिका के नाम पर उसकी डॉलर की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, जब अहंकार के अंगारे से वो अपने बात को राष्ट्र में और संसार में प्रस्तुत करना चाहता है, तो भारत के शास्त्रीय उचित मर्यादा और चरित्र इस बात का आगाज करता है कि प्रतिरोध होना चाहिए, सदन में भी होना चाहिए और संसार के पटल पे भी होना चाहिए। मैं अभी आ जाऊंगा सर, मैं आपके बजट की अभिलेखा तक आ जाऊंगा और सूक्ष्म बिंदु तक आ जाऊंगा। आपने ये बात बड़े तर्क से कही, तो आर्थिक स्थिति के अंदर आंकड़े क्या कहते हैं वो भी मैं निवेदन कर देता हूं, और अगर आपको अनुचित ना लगे तो आप उसको लिख लेना और वापस देख लेना। While unprecedented geopolitical has surfaced, आज से पहले आपने इस स्थिति को नहीं देखा, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। The fundamentals of the Indian economy remain strong.
The foreign direct investment in India rose by 18% from year to year, अगर आप बैक से देखें तो, to 35.18 billion during April-September of this fiscal year, while the inflow from US more than doubled to $6.62 billion during the period. According to the latest government data released on December 1, investment from overseas during April to September period of the previous fiscal year stood at 29.79 billion. During the preceding June-September quarter 25-26, the inflow increased by over 21%. I am not saying, sir, I have not conjectured this figure. Even if I wanted to, I couldn't have put it in this way. The question is, why aren't we in a position to accept the reality? आपने अनुपूरक मांगों के माध्यम से फर्टिलाइजर्स के लिए 11,000 करोड़ तो आपने फॉस्फेट और उसके लिए मांगे, और यूरिया के लिए आपने मांगे तकरीबन 20,000 करोड़। आपको और हमको इस बात का हर्ष होना चाहिए कि जिस प्रकार से मॉनसून हुआ, जिस प्रकार से बारिश हुई, जो संभावित रूप से बजट के समय जो हमने आकलन किया था कि कितनी भूमि पर एग्रो एक्टिविटी होगी, अच्छी बरसात के कारण ऐसी भूमि जो एरिड या बारानी थी, आज वो भी कल्टीवेशन में आ गई। जब कल्टीवेशन में आ गई तो आपको यूरिया, फॉस्फोरस, एनपीके, डीएपी सबकी आवश्यकता पड़ी, और उसके अगर लिए आपने अनुपूरक मांगों के माध्यम से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह होना चाहिए कि जब बजट आया था 50.62 लाख करोड़ के बजट के बाद अगर आप अनुपूरक मांग लेके आ रहे हैं, तो क्या फिस्कल डेफिसिट पे, क्या रेवेन्यू डेफिसिट पर इस पर असर पड़ेगा, और जो वो आपने किया था क्या आप उससे बाहर चले जाएंगे, वो टारगेट पूरा नहीं होगा। तो मैं आदरणीय आज आपसे निवेदन करता हूं, 1.9 से 1.5% रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट हमारा है, और हम इस टारगेट पे रहेंगे। और हमने फिस्कल डेफिसिट 4.8 से 4.4 करने का जो वादा किया है, मुझे पूरा विश्वास है इस वित्त वर्ष के अंत तक हम इस टारगेट के भीतर रहेंगे, अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेंगे। मैं आज वित्त मंत्री जी आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, आपका तकरीबन 2 लाख करोड़ के ऊपर का जो व्यय है वो फर्टिलाइजर्स पे। प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं, कृषि मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार, हमें अपने एग्रीकल्चरल पैटर्न को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल खेती की तरफ जाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, तो एक सबसे चीज जो अभी कहीं ना कहीं इस परिदृश्य में नहीं आ रही कि जिस काश्तकार को या जिस कृषक को या जिस अन्नदाता को अपने प्रोडक्शन में जो कमी आएगी उसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे। साइंटिफिक तरीके से ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये बात कही है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती की प्रति तरफ जाते हैं या परंपरागत खेती की तरफ जाते हैं या नेचुरल, तो आपका जो प्रोड्यूस आता है उसको सामान्य बाजार भाव से कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन यहां एक बात को और देखना है सर, हमारे भारत मूल की ऐसी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक कंपनी ने सिंगापुर से 6.32 मिलियन मैट्रिक टन का एग्रीमेंट किया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कृषकों के अपनी कृषि की व्यवस्था से, और उस खेती के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करके उसको ट्रेड करके उनको उसका लाभ पहुंचाए। इस प्रकार की अगर व्यवस्था नीति आयोग, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और इसके साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, आप अगर भारत के अन्नदाता को यह बात सुनिश्चित कर दें कि उसके पैदा के अलावा जो कुछ भी वो इस प्रकार की गतिविधियों में जहां प्रदूषण की कमी हो सकती हो, आपको वित्तीय व्यवस्था मिलेगी। मैं
मुझे 5 मिनट का आप समय दीजिएगा, मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। तो कम से कम ये बात होगी। और मैं राजस्थान के संबंध में एक निवेदन करने जाता हूं। हमारे पास में भूमिगत पानी नहीं है, हमारे पास में नदी से पानी आता है, जहां कैनाल है वहां कैनाल से आता है, कैनाल का पानी प्रदूषित हो रहा है। हम ये मानते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से राम सेतु के माध्यम से आप नेशनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं, या आप यमुना वाला ला रहे हैं, ये अगर सारे आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को इसमें लाभ मिलेगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आदरणीय, आपने पेट्रोलियम के लिए यहां पैसे मांगे, मैं अगर स्टैटिस्टिक्स में जाऊं तो बात दोहराऊंगा, लेकिन मैं एक निवेदन वित्त मंत्री जी आपसे करना चाहता हूं। राजस्थान, गिव मी 2 मिनट्स सर, आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई नो आई हैवंट बीन एबल टू कवर एवरीथिंग। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान जैसे और भी कई प्रदेश हैं, आसाम है, आपके बॉम्बे हाई पर है, जहां तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। 2010 में पहली बार, आखिरी बार 2004 में आखिरी बार रॉयल्टी पर बात हुई थी। सर अगर आज डॉलर की कीमत बढ़ गई है, तो डॉलर की कीमत बढ़ गई है, इन राज्यों को अपना जो रॉयल्टी मिलता है डॉलर की तुलना में मिलता है, लेकिन रॉयल्टी पिछले 15 बरस में दोबारा रिविजिट नहीं की गई है। अगर हम प्रोडक्शन से इतना पैसा आपको दे रहे हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज में उतनी ही कमी आती है। अगर हम इंडिजीनियस इस चीज को दे रहे हैं तो एक राज्य के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की रॉयल्टी को आप कम से कम दोबारा इस पे करिए, और क्यों ना हम इसको दोबारा इसका अवलोकन करें। मैं इतना सा निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे बार बार ये निवेदन, आपने ये बार बार घंटी बजा दी। मैं इतना सा ही निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय अनुपूरक मांगों से भारत की अर्थव्यवस्था की व्यवस्थित स्थिति में कहीं कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और भारत अपने आप खड़ा होकर इस विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपना नाम करेगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्रीमती संभवी जी। इतने महत्वपूर्ण चर्चे आपने मुझे मेरी पार्टी का पक्ष रखने की अनुमति दी। सबसे पहले हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 का समर्थन करते हैं, और चर्चा शुरू करने के पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी नीतियों और वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि आज विश्व स्तर पर लोग उम्मीद से भारत की तरफ देख रहे हैं। ये उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। आज सर पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 8.2% का ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इसकी चर्चा विपक्ष वाले कभी नहीं करेंगे, ना ही इसकी सराहना करेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, वहीं अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार या जीएसटी कलेक्शन जो प्रति महीने है, वो भी अभी अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। पर जितने भी हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो खटाखट और फटाफट पैसा देने की बात कर रहे थे, वो अब देश से ज्यादा विदेश में देखे जाते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 की बात करें तो इसमें लगभग जो पहला बैच रखा गया उसमें 1,32,268 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है। विपक्ष के नेता जो हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की क्या आवश्यकता है, बजट तो पेश हुआ था। पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार एक गतिशील सरकार है जो ना कभी रुकती है और ना ही विकास कार्यों से कभी पीछे हटती है। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये पैसा सारा, ये जितना भी सारा पैसा है वो गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जा रहा है और उस विकास कार्य के लिए निकाला जा रहा है। ये जो आवंटित राशि है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एलपीजी सब्सिडी की भरपाई के लिए जा रहा है, जिसके लिए लगभग 12,500 करोड़ की भारी राशि दी गई है। गरीबों के गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रोग्राम कंपोनेंट के तहत 3,178 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 302 करोड़ और जनजाति के लिए लगभग 156 करोड़ अलग से रखे गए हैं।
अगर हम बात करें एलपीजी सब्सिडी के लिए तो एससी और एसटी वर्ग हेतु क्रमशः 83 करोड़ और 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत लगभग 2023 करोड़ का बड़ा राशि आवंटित किया गया है। इससे छात्र, जितने भी हमारे देश के छात्र हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको विश्व स्तर पर जो आप कह सकते हैं कि जनरल रिसर्च का जो मटेरियल्स है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत काम आएगा। अगर हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके लिए कुल मिलाकर लगभग 235 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये राशि आवंटित जितने भी पॉलिसी और स्कीम के लिए आवंटित की गई है, ये हमारी जो बेस आधारशिला है, जो विचारधारा है, उसको और मजबूत करता है, जो है अंत्योदय, कि जो विकास का कार्य है वो पंक्ति पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सदन में एक सांसद महोदया ने पिछले चर्चे में एक बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के राज में सेल नहीं होता, इसरो नहीं होता, एम्स नहीं होता, डीआरडीओ नहीं होता, तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होता। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी तरीके से शिलान्यास करने को और काम पूरा करने को, वो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इमारत की नींव को रख देने से मकान नहीं बन जाता है। आप सब ने 51 साल में आपने मात्र एक एम का निर्माण किया है। ये जब 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर 5 नए एम्स की स्थापना हुई। हमने 23 एम्स बनाए हैं। आपने 60 साल में, आपने आईआईएम की बात की, आपने 60 साल में सिर्फ 13 आईआईएम बनाए हैं। हमने 10 साल में 9 नए आईआईएम्स बनाए हैं और इसीलिए बिहार में भी एक नया आईआईएम मिला है। सर, डीआरडीओ की बात हो रही थी, डिफेंस की बात हो रही थी, तो उसके भी कुछ आंकड़े मेरे पास है। India recorded its highest ever defense production of 1.54 lakh crore in financial year 24-25. Defense exports reached a record of 23,622 crores and 16,000 MSMEs आज रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब आपके डिफेंस डील्स की बात होती है, जब आपने डिफेंस में क्या कहा, तो हमको जरूरत नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि डिफेंस डील में आप लोगों ने क्या करके यहाँ पे रखा था। इस मौके पर जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात करते हैं, तो ये हम लोग सिर्फ अर्थव्यवस्था में अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, हम लोग चुनाव परिणाम में भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे। हम बिहार से आते हैं और बिहार की तमाम जनता को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे सरकार को चुना, एक ऐसी गठबंधन को चुना जो नफरत और झूठी राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करती है। बिहार में सर सबसे ज्यादा लंबे समय की डबल इंजन की सरकार को आप कह सकते हैं कि अगर आप साल दर साल देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर डबल इंजन की सरकार कहीं रही है तो वो बिहार में रही है। और 20 साल बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिला। ये एनडीए की ताकत है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। चुनाव के दौरान बहुत ड्रामा देखने को मिला, मछली पकड़े जा रहे थे तालाब में कूद कूद के, पर बिहार ने पूरे देश को बताया है कि राजनीति ड्रामा से नहीं, राजनीति नीतियों से चलती है, विकास से चलती है, नेता से चलती है और नेतृत्व से चलती है। इसी नेता और नेतृत्व ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में इतना बुरा हाल था कि इनका जो चुनाव चिन्ह है हाथ छाप, उसमें जितनी उंगलियां हैं उतने इनके विधायक ही बचे हैं अब बिहार में। बहुत ही जल्दी, 2 मिनट में बस समाप्त करें, बहुत ही जल्दी बिहार में भी कांग्रेस का वही पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन होने वाला है जैसे दिल्ली में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात भी हाईलाइट करना जरूरी है कि इंडिया अलायंस, मैंने पिछले सत्र में कहा था कि बिहार इलेक्शंस विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंस कॉफिन, और आज ये देखने को मिलता है कि मकर द्वार में साथ में प्रोटेस्ट तो करते हैं पर इतनी शर्मनाक हार के बाद ये दोनों एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पाते ये अलायंस वाले। आज अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से
इंडिया अलायंस वालों ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। लोक जनशक्ति पार्टी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पहले विपक्ष वाले पहले दिशाहीन थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ये संस्कारहीन भी हो चुके हैं। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार ने एनडीए को बहुत बड़ी जीत दी है, बहुत मजबूती से सरकार को एक सशक्त सरकार चुना है। इसीलिए मेरी कुछ बिहार के लिए मांगे हैं जिसको हम सभा के पटल पर रखना चाहेंगे। हम समस्तीपुर लोकसभा से आते हैं और मेरी ये मांग है, एक विनम्र अनुरोध है कि समस्तीपुर लोकसभा में भी बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान खोले, लॉ यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो, कृषि संस्थान का निर्माण हो। एक सेकंड मैम, हम बस खत्म करें, 2 मिनट। पटना, बिहार में बहुत युवाओं में पोटेंशियल है, एक आप कह सकते हैं टेक्निकल इंडस्ट्री को स्थापित करने का। पटना, समस्तीपुर, भागलपुर जैसे एरियाज को नोडल एरियाज बना करके यहाँ पे आईटी हब्स का निर्माण हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पे संस्थान बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे एक आप कह सकते हैं संस्थान जैसे ट्रेनिंग हो, ये सारे संस्थान का यहाँ पे निर्माण हो, ताकि हमारा स्टॉप माइग्रेशन विद थ्रू इनोवेशन का जो एक मुद्दा है उसको पूरा कर सके। बस 2 पंक्ति में हम श्री सुधाकर सिंह जी, ऑनरेबल मेंबर श्री सुधाकर सिंह, बात को खत्म करना चाहेंगे। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनके। माननीय सभापति महोदया, मैं विनियोग विधेयक सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 के विरोध में खड़ा हुआ हूं। विनियोग विधेयक पूर्णतः दिशाहीन और लक्ष्यहीन है। यह आंकड़ों और अंकों के भ्रमजाल के सिवा कुछ नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी की बात भारत सरकार के द्वारा मांग की जा रही है। बस कंक्लूड कर रहे हैं कि विपक्ष को आरोप और प्रति आरोप से बच करके अपने अंदर भी झांकना चाहिए। 4 लाइन आप लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए की तरफ से भी सुन लीजिए। नजर नहीं, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनके जबान का जादू, लगा कर आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सभापति महोदया, विनियोग विधेयक 2025-26 के विरोध में खड़ा हुआ हूं। विनियोग विधेयक पूर्णतः दिशाहीन और लक्ष्यविहीन है। यह आंकड़ों अंकों के भ्रमजाल के सिवा कुछ भी नहीं है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी की भरपाई के लिए सरकार मांग कर रही है। बिहार जैसे राज्य में जहां गेहूं की बुआई अपने चरम पर है, पूरे बाजार से यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पोटास जैसे प्रोडक्ट बाजार से गायब हैं। महंगे और काला बाजारी के जरिए वहां पे बिहार में फर्टिलाइजर बेचा जा रहा है। सभापति महोदया, फर्टिलाइजर एक्ट 1985 में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर कालाबाजारी होगा, महंगे दर पे होगा, तो कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी कानून का राज नहीं है, ना बिहार के भीतर न देश के भीतर। मनमाने तरीके से कंपनियों को फर्टिलाइजर का सब्सिडी दिया जा रहा है। लंबे समय से देश में किसानों की मांग रही है कि जो सब्सिडी है वह डायरेक्ट किसानों के खाते में आना चाहिए, सब्सिडी कंपनियों के खाते में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी नहीं। पूरा बिहार धान की खरीफ फसल पूरे खलिहान में पटा हुआ है। 15 से 20 दिन हो गए खेतों से निकल करके खलिहान में आया, लेकिन पूर्णतः खरीद वहां पे बिहार में बंद पड़ा हुआ है। और जो थोड़ी बहुत खरीद भी हो रहा है, 300 से 400 रुपया प्रति क्विंटल के दर से अवैध उगाही पूरे बिहार में चल रहा है। इसकी कोई चिंता नहीं है। चुनाव बीता बिहार में, एनडीए ने नारे के साथ आए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लाएंगे। केवल धान नहीं, मक्का, गन्ना और गेहूं पर भी हम एमएसपी का गारंटी देंगे। लेकिन चुनाव बीतते ही 1 महीना देख लिया जाए बिहार में,
बाकी फसलों का क्या मूल्य मिलेगा? जो सामने है उसका भी पैसा वहां पर नहीं दिया जा रहा है। 23 एम्स की चर्चा हो रही थी। माननीय सांसद बिहार से ही हैं, उनके क्षेत्र के बगल में दरभंगा में 2016 में शिलान्यास हुआ था। उस 23 एम्स के ऑपरेशनल में से दरभंगा का भी नाम है, जिसमें 5 ईंट आज तक नहीं रखा गया। कम से कम माफी तो मांग लेते लोग, सरकार के लोग, कम से कम कोई बात रखने से पहले अपने ही जो जमीन पर देख लेते कि दरभंगा एम्स कहाँ है। 2017 में एक विश्वविद्यालय महात्मा गांधी जी के नाम पे मोतिहारी में सरकार ने दिया, आज तक उसके 5 ईंट नहीं रखे गए, बिल्डिंगें नहीं बनी, लेकिन बात तो बहुत ऊंची ऊंची बिहार के बारे में होती है। पिछले बजट सत्र में बक्सर से भागलपुर नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात हुई थी, बकायदा 18,000 करोड़ इसी सदन के भीतर वित्त मंत्री ने कहा था, वो परियोजना बंद कर दी गई। मैं सरकार और पूरा बिहार पे बजट पे चर्चा हुआ था कि बिहार को स्पेशल पैकेज हम लोग 58,800 करोड़ देने का काम किए। उस 58,800 करोड़ से 18,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे हटा लिया गया और फिर पैती में एक बिजली घर भी लगाने की बात किया था इन लोगों ने। 21,600 करोड़ में वह फिर पैती घर, बिजली घर भारत सरकार नहीं लगाएगी, अब वो अडानी जी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बजट का दिया गया पैसा कहाँ गायब हो गया? ये सरकार के बैठे हुए लोगों से मैं कहता हूँ, सदन से माफी मांगना चाहिए। एक बार सदन का ठप्पा लग जाता है बजट पर तो वह कम से कम बाइबिल, गीता और महाभारत से कम नहीं होता। अगर आपको ड्रॉप करना है कोई तो सदन के भीतर ड्रॉप करिए। नारे तो बहुत गढ़े गए सरकारों के द्वारा। एक बिहार में भारतमाला परियोजना की सड़क बन रही है, कैमूर से लेकर बनारस से लेकर के कलकत्ता जाएगा, उसमें सर्विस रोड नहीं है। किसानों के जमीन से हाईवे जाएंगे, लेकिन किसानों को चलने के लिए कोई सर्विस लेन नहीं। कल मैं आ रहा था उत्तर प्रदेश होके दिल्ली, आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश जी ने बनाया है, उस एक्सप्रेसवे के बगल में सर्विस लेन भी किसानों के लिए बनाया गया। यह विकास होता है। विकास का दोहरा मापदंड इस देश में सीखना हो तो गुजरात के लिए नए मॉडल हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल के लिए दूसरे तरह के मॉडल हैं। बिजली में बिहार को बिजली घर चाहिए, लेकिन बिजली घर क्या मिला? कोयला से बिजली पैदा करने वाले देश में हाइड्रोजन से बिजली पैदा होगा, परमाणु से बिजली पैदा होगा, ग्रीन एनर्जी दिए जाएंगे। बिहार को प्रदूषण फैलाने वाला बिजली घर, कोयला वाला बिजली घर दिया जाएगा। कैमूर की पहाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं। पंप स्टोरेज के जरिए आप एक हरित बिजली पैदा कर सकते हैं, नई तकनीकी के जरिए, रन ओवर द रिवर्स के जरिए, जिससे आप पूरे बिहार नहीं देश के कई हिस्सों में आप बिजली सप्लाई कर सकते हैं। रेलवे, इस रेलवे क्यों हमारे लोग आते हैं, बिहार के लोग दिल्ली बॉम्बे क्यों जाते हैं? बिहार के लोग रोजगार के तलाश में, स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्धता के लिए दिल्ली एम्स आते हैं या पढ़ने के लिए उच्च संस्थानों में आते हैं। लेकिन बिहार जाने वाली रेलवे लाइन अब भी 2 लेन की लाइन है। जो दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाली जो दोनों लाइनें हैं वह 2-2 लाइन की है। लेकिन रेलवे को पैसा चाहिए, लेकिन रेलवे का निवेश बिहार में 2 लेन से 4 लेन रेलवे का नहीं। आज तक मुगल सराय से पटना भाया 2 लेन का रेलवे ट्रैक इतना कंजेशन में रहता है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिहार की ट्रेनें लगातार लेट से चलती हैं और नई ट्रेन नहीं चलाई जाती क्योंकि इस ट्रैक पर चलने के लिए जगह नहीं है। ये साधारण लड़ाई नहीं है। बिहार के लोग बिहार को लेकर के लगातार पलायन को लेकर के बहस चलाते हैं लोग। पलायन बिहार में क्यों है? कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर, हाईवे के क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर, बिजली के क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर। बिहार की आबादी देश की आबादी का 10% है। 11.25 साढ़े 11 लाख हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए बजट में प्रोविजन है। क्या बिहार की हिस्सेदारी अगर 10% भी अगर है तो बिहार की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ की बनती है। लेकिन बिहार को मिलता कितना है? पिछली बार 58,800 मिला था, जिसमें 2 परियोजना निकाल दीजिए 40,000 करोड़, तो बिहार को 18,000 करोड़ मात्र मिला। इस बार का तो वह भी नहीं मिला। मुश्किल से 19-20 हजार करोड़ की परियोजनाएं बिहार को इन्होंने देने का काम किया है।
बिहार के जो ये नाइंसाफी है केवल बिहार के साथ नहीं, या उत्तर भारत और पूर्वी भारत के साथ नाइंसाफी है। इस देश में जो 11.25 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे जाते वो ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में चले जाते, इसलिए बिहार लगातार विकास के पैमाने में पिछड़ता जाता और पलायन बढ़ता जा रहा है। माननीय सभापति महोदया को मैं बहुत विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता। धन्यवाद। माननीय सांसद श्री आर सत्यनाथम जी। Madam, thank you very much for giving me the opportunity. The first batch of supplementary demands for the financial year 25-26 was presented by our Honorable Finance Minister on December 1st, 2025. She demands rupees 18,525 for the fertilizer subsidy, rupees 9,500 for LPG subsidies, rupees 2,500 crore for Ministry of Home Affairs, rupees 1,200 crore for External Affairs, rupees 1,304 crores for higher education. On behalf of CPIM, we have some differences in these demands. I saw from the newspaper published on December 9th, which noticed 52-year-old Jamuna Kushwaha collapsed and died while waiting in the line for 3 consecutive days to secure 2 bags of urea at the distribution center in Tilgamgarh district of Madhya Pradesh. Protest against looting and farmers' death going on as the fertilizer crisis continues. Another news I read through newspaper earlier in August, the FACT, a central public sector undertaking, is selling private company fertilizer in its own bags. The 2 companies which manufacture single superphosphate SSP fertilizer manufactured by Coimbatore Pioneer Fertilizer have signed an agreement for this. FACT is facing a major production crisis as a result of union government policy. It is purchasing fertilizer from private sector as a part of an effort to avoid a major decline. Fertilizer shortage crisis and block marketing of fertilizer is occurring all over India, but our finance minister seek approval to release fertilizer subsidy. If the subsidy benefits goes directly to the farmers, they can buy fertilizer anywhere. But we give subsidies to the companies, it will be useful for black marketers, not for the farmers. So you make suitable change in the policy. Regarding LPG subsidies, the subsidy amount rupees 300 per 14.2 kg LPG cylinder. The beneficiary is about 10.33 crore with PMUI connection across India as of July 2025. No others getting subsidies. While acknowledging the schemes like PMUI, the adequacy of number of subsidized cylinders provided annually, initially 9, later increased to 12, then back to 9 in some proposals for financial year 25-26. They have noted that high recurring cost of refills, even with the subsidy, can force poor households to revert to using traditional, less clean cooking fuels like firewood. After April 22nd, Pahalgam attack in India administered Kashmir, which killed 26 civilians. The terrorist organization Lashkar-e-Toiba was involved in this attack. After Sindoor operation, from May 7th to 10th, all terrorist camps are demolished by our drone attack by our defense team. We all supported. Even after this attack was brought to an end by the American president. Why is a car bomb explosion still occurring in the capital Delhi near the Red Fort? What action have been taken regarding this? Is this failure of the intelligence agencies operating under the Union Home Ministry? Or should we ask the American president to investigate this as well? Ensure internal security, focus on the citizens instead of just the temples. From April 2nd to November 23rd, our Prime Minister visited 18 countries. Today he added his visit to 3 more countries. What work did he do domestically? The only things that happened were the hoisting the flag at Ram Temple and waving the flags to the trains.
What happened to the promises made during the farmers' protest? Enact a law, provide fair prices for agriculture produce, implement the health care plan for all, immediately release PM JVK scheme funds for minorities, start postgraduate Ayurveda course in Tamil Nadu colleges, start a rope car scheme from pilgrimage center Palani to tourist center Kodaikanal under Prasad scheme. We demand immediate fund release for Rega in Tamil Nadu. Don't change the name of Mahatma Gandhi to Bujye Babu. We condemn the government for name change. We demand to procure paddy with 22% moisture in Tamil Nadu. We demand reconsider the approval of Coimbatore and Madurai Metro Rail project. We demand rupees 3,000 pension per month for the disabled persons instead of rupees 300 per month. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you. Honorable Member, Sri P.V. Midun Reddy ji. Thank you, ma'am, for letting me participate in this discussion on demand for grants. Madam, in our state of Andhra Pradesh, the state debt is rising at an alarming level. The difference in the growth of revenue and the increase in debt there's a huge mismatch. And if you see, madam, after the new government has formed, in the past 18 months, the debt of the state is 2,66,000 crores. It is the highest in the country that any state has borrowed. And if you see the previous government's debt for the 5 years, that is the YSRCP government's debt for the 5 years, that is from 2019 to 24, is 3,32,000 crores according to the Parliament Minister's answer. The debt is really alarming, and if you see the growth of debt, it is growing at a CAGR of 22% in Andhra Pradesh right now, ma'am. It's the highest in the country, and the previous government was just 13.5%. Madam, the government is borrowing desperately through any possible means. If you see recently, Andhra Pradesh Mineral Development Corporation raised debt through NCDs, through private people. They borrowed at 9.3%, which is very, very high for a government to borrow. And they gave a commission of 1.5%, which is coming to almost 150 crores to private people. Madam, the worst part is the part of the conditions in this NCDs is that private people get access to the consolidated fund of the state. Imagine, madam, how can private people draw money without the government permission or without any official people? And most recently, right now, the Andhra Pradesh Beverage Corporation Limited has again called for NCDs for 5,950 crores, or roughly below 6,000 crores. And again with the interest rate of 9.9+% and a commission of 1.5%. Madam, I would like to recall that in the previous 2019 and 24, the Finance Secretary wrote to all the states saying that any borrowing you do through government subsidiaries to the corporations, it will be a part of the Article 293 of 3 of the Constitution, which says that all the borrowings, indirectly if you do also, it will be in the part of net borrowing ceiling, part of the NBC. And even in August 22, 2022, the Finance Secretary wrote to the Chief Secretary of Andhra Pradesh saying that the then government wanted to borrow same through NCDs through the Beverage Corporation Limited. They said this is going to be part of the borrowing limit of the state. So even you borrow through your corporations, it is going to be part of the borrowing limit of the state. Madam, right now, I would like to ask the government. Right now, the current TDP government has borrowed through APMDC, and now they are borrowing through Beverage Corporation Limited. My question to the Honorable Finance Minister through you is, has the rules changed then and now? When the previous government wanted to borrow, they said it is part of the borrowing limits. Is it part of the borrowing limits now or not is what we want a clarification from the government. Point two is that when the government banks are prepared to give at 6% interest rate, why do you want to borrow from private parties at 9.3%?
Why do you want to waste public money, and why do you want to give commissions, 1.5% commission running into hundreds of crores? Is this not a scam, ma'am? This has to be taken up seriously. And the third part is that similarly between 2014 and 19, when TDP was in power, it was part of the NDA, they overborrowed, and then the next government, it was again deducted in the next YSRCP government between 19 and 24. Madam, and I want to ask the government, is it not a very bad precedent letting private people have access to the consolidated fund of the state? Imagine all the borrowers have access to the consolidated fund of the state. Everybody is going to put condition that we want this condition to borrow to the state, to lend to the state. What is the situation in the future? State will not have any access. There won't be any access for the government to control it. So this is a very bad precedent. The center has to step in and make sure that such conditions are not put up by the states. And we want the Honorable Finance Minister in her reply to talk about this bonds which the AP government is raising and which is against whatever rules set by the central government themselves, whatever letter the central government has written to our state. And coming to Manrega, ma'am, for the past 7 months, the labor component is pending in our state. The center, when we met the Honorable Minister, they said that the fund is ready, you have to talk to your state. Madam, the labor component has to be paid in 3 days. The Act says the labor component has to be paid in 3 days. How can the labor sustain for 7 months? And there are almost 90 lakh active laborers registered in the state and who are dependent on this. What is the future of, how do they sustain and how do they survive, ma'am? And the worst part is from the Telugu Desam party, we have a minister who handles rural development from the center, ma'am. Mr. Chandrasekhar, I don't know if he's here or not. What is he doing? I don't know, ma'am. Even in his own constituency, the Manrega payments are pending for the past 7 months. This is a shame to our state, and it's really pathetic. Madam, we demand that Manrega payments be released soon, and the minister, at least somebody put some sense into the minister's head and make at least in his own state, the neighboring states of Telangana and Karnataka are much better off in Manrega compared to our state. And Madam, we oppose the privatization of Visakhapatnam steel plant. Systematically, step by step, it is being privatized. Our party demands that Visakhapatnam steel plant should not be privatized, and it should be, the government should support it with mines, madam. Without mines being allotted to Visakhapatnam steel plant, it will not be viable, and selling it at dead cheap rate is not an option. We oppose the privatization of Visakhapatnam steel plant, and this current government, it has borrowed 2,66,000 crores in Andhra Pradesh. They need just 4,000 crores to complete all the 17 medical colleges, which the previous government has taken up. Now, this government is planning to sell all these medical colleges to private people in the name of PPP, which we are opposing, ma'am. We asked the central government to step in. Already the central government earlier had given funds for 3 colleges, and now the rest of the other colleges also. We demand that central government step in and stop this process. Anywhere we go in Andhra Pradesh, ma'am, anywhere, any private hospital and any private, government hospital, you see thousands of people around a government hospital, and we don't find people outside because they are all profit motivated. So healthcare should be in the hands of the government, and we demand that the privatization of medical colleges not be there. And one more, the last issue, ma'am, Kadapa Bangalore railway line. Madam, the recently Honorable Railway Minister said, I am ready to do this project if your state provides the matching grant. Madam, TDP government is part of the NDA government. Through you, I demand the government, they provide the matching grant, and the funds for complete project has to be given by the center, because TDP and BJP is one and part in the state. So we demand that Kadapa Bangalore line, which is important, be taken up. Thank you very much, ma'am. माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी कि आपने पूरक अनुदान की मांगों पर पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज के इस मौके पर सभापति जी, मैं सुन रहा था जब बजट के बारे में सत्ता पक्ष से जगदम्बिका पाल जी ने बात शुरू की थी,
और बात कुछ इस कदर शुरू कर दी थी कि लग रहा था कि मोदी जी के राज में 11 साल के कार्यकाल में पता नहीं देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। समाजवादी, अरे सुनते चलिए, भी सुनाएंगे। सभापति जी, समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से इतना स्वामी राम जी को वहां बैठाए पीछे, भगवान राम जी का जो पात्र लेके जिनके नाम पे चुनाव जीते हो, कम से कम सीट तो उनको आगे दे दो, ही मैं अनुरोध करूंगा। सीट तो आगे दे दो, भगवान राम के सम्मान तो कर दीजिए। उन्हें आगे बैठाना चाहिए। सभापति जी, नहीं आप आगे आइए। सभापति जी, ये अनुपूरक बजट की जब चर्चा शुरू हुई तो सबसे ज्यादा सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी के नाम पर बिल बजट मांगा गया और लगातार किसानों के लिए जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई। कुछ सच्चाइयों को मैं आपके माध्यम से सदन और सदन के साथ साथ देश के सामने रखना चाहता हूं। जब 2014 में यूपीए की सरकार थी, उस समय देश के किसानों के ऊपर केवल 7.5 लाख करोड़ कर्ज था और 11 साल में वो 7.5 लाख करोड़ कर्ज बढ़ के 28.5 लाख करोड़ हो चुका है। सभापति जी, उस समय प्रति किसान केवल 37,000 रुपए कर्ज था। आज की तारीख में वो 37,000 बढ़ के पर किसान 78,000 रुपए हो चुका है प्रति किसान। सभापति जी, ये जो सरकार है ये चुनिंदा कॉर्पोरेट लोगों के लिए काम कर रही है। 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज कॉर्पोरेट का माफ किया गया, लेकिन पूरे कार्यकाल में किसानों के लिए एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ। सभापति जी, लगातार प्रधानमंत्री जी से लेके पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं 2015 से लेके लगातार कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। हमारे पास डेटा है, पूरे के पूरे 11 साल में किसानों की आमदनी केवल प्रति किसान 1,000 रुपए बढ़ी है। स्वामीनाथन जी के बारे में 2014 में कहा, 17 में कहा, 19 में कहा, 22 में कहा, आज तक स्वामीनाथन जी की सिफारिश रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। किसान नहीं है इसलिए नहीं कर। ये सच्चाई है इनकी। सभापति जी, दूसरी बात इन्होंने की रोजगार की। रोजगार के मामले में जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप पे कोई अगर वो सेल्समैन बना हुआ है, पेट्रोल भर रहा है, कोई घुमचे वाला, तमाम तरीके के सर्वे करा के, फर्जी आंकड़े पेश करके, और अब तो विदेशी संस्थाएं भी यहां तक कहने लगी कि हिंदुस्तान की तरफ से फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो इसलिए सभापति जी, मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। सभापति जी, अगर देश की हालत जो बात करते हैं, तमाम सत्ता पक्ष वाले, जीडीपी मैंने इतनी बढ़ा दी, जीडीपी उतनी बढ़ा दी। आप सोचिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 2014 में 55वें नंबर पे था और आज हम 2025 में बात कर रहे हैं तो 102वें स्थान पे पहुंच गया है, केवल 123 देशों में से। प्रति व्यक्ति आय घटी है, किसानों का रेट बढ़ा है। लगातार प्रधानमंत्री जी उस समय 2014 से पहले जब बातें करते थे, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अपमानित करते थे और उम्र की बातें करते थे, लेकिन जब तक उनका कार्यकाल चला तब तक डॉलर के मुकाबले रुपया केवल 60 था और आज आपके समय में 90 पार कर चुका है। आप सोचो, इस बात को हम किस तौर पे परिभाषित करें। आपने रोजगार की बहुत बातें की, नौजवानों की। सभापति जी, आज हम आपसे जब बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आज ही उत्तर प्रदेश के अंदर जिस आयोग को आपने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बदनाम किया, आज उस कार्यकाल, उस आयोग का यह हाल हो गया है। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 53 से ज्यादा पेपर लीक होके परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर, और 11 सालों में देश के अंदर कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई है। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं माननीय सभापति जी, इस समय इलाहाबाद के लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान अपनी बात को रखने के लिए, वहां के निमित्ताओं को दूर करने के लिए जब इलाहाबाद के आयोग के सामने खड़े थे, तो आप विजुअल्स, आप महिला हैं, आप संवेदनशील हैं, आप देख के आश्चर्य करोगी कि किस तरह से वहां के नौजवानों को, युवकों को, युवतियों को लाठी चार्ज करके, बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। अमानवीय व्यवहार आज प्रयागराज और इलाहाबाद में हो रहा है।
सभापति जी बहुत बातें की बेरोजगारी को दूर करने की। अरे सुन लो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने की और 2 करोड़ रोजगार देने के बाद सभापति जी साल दर साल मेरे पास डेटा है और आज की तारीख में आजादी से लेके अब तक अगर बेरोजगारी की दर कभी सबसे ज्यादा बढ़ी है तो आज हमारे देश में 8% से ज्यादा बेरोजगारी की दर आज बढ़ी हुई है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। सभापति जी बात करते हैं ये लोग जनगणना के नाम पर पूरे देश में। मुझे याद है, मुझे भी सौभाग्य मिला था सदन में, श्रद्धेय नेताजी, श्रद्धेय शरद जी, आदरणीय लालू जी से लेके पासवान जी थे, सभी लोगों ने मांग रखी थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए 2010 में। ये गलती की कांग्रेस के साथियों ने उस समय नहीं की, लेकिन इस समय जब एनडीए की सरकार ने वादा किया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं वादा किया है, लेकिन वादा तेरा वादा, अब कोई वादे पे भरोसा नहीं रहा। हालत ये हो गई है, एक भी वादा पूरा नहीं है, इसलिए जातीय जनगणना के भी वादे पर देश की जनता को अब आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आपने बजट मांगा है, आप ले जाइए बजट, लेकिन ये इस बात का जवाब आना चाहिए कि आखिर जनगणना कब हो रही है और जो जनगणना हो रही है उस जनगणना में जाति जनगणना आप शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सभापति जी, यूरिया की जहां तक सवाल है, सबसे ज्यादा ढिढोरा पीटा जा रहा है। यूरिया के लिए पूरक मांगे की गई है, लेकिन यूरिया की हालत क्या है? बिहार के साथी चर्चा कर रहे थे, बिहार के बारे में आप जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूरिया के वितरण के लिए पूरी की पूरी कोतवाली, पूरी की पूरी तहसीलों में किलोमीटरों लाइन लग के, लाठी चार्ज खा के, गर्मी सर्दी बरसात में किसान अपना पूरा परिवार लाइन में लगाता है, तब जाके उसको कहीं 1 या 2 बोरी यूरिया मिलती है, क्योंकि उसमें से जो यूरिया की सब्सिडी आ रही है किसानों पे जाए अगर तो हमें स्वागत करेंगे, लेकिन माननीय सभापति जी, ये यूरिया की सब्सिडी किसानों के पास न जाके सत्ता पक्ष के दलालों की और अधिकारियों की जेब में जा रहा है। इसलिए सभापति जी, हम इस बात से नहीं सहमत है इस तरह से जो इन्होंने किया है। इसलिए सभापति जी, इस मौके पर मेरे और भी साथी बोलने वाले हैं, मुझे इसलिए इस मौके पे इतना ही कहूंगा कि नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को हक अधिकार मिले, उनको वाजिब मूल्य मिले, उनको सुविधाएं मिले, खाद बीज पानी बिजली की जो व्यवस्थाएं किसानों की, कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं, बंगाल के बारे में आप जाने, बिहार के बारे में आप जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी तरह से बर्बादी है। और सभापति जी, एक बात और कहूंगा, जो एमएसपी की बात की गई थी वो एमएसपी आज तक लागू नहीं की गई। और तो और सभापति जी, पहले भी सदन में उठाया हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, बच्चों को दवाएं भी मिलावटी दी जा रही, जहर बेचा जा रहा है। और एक लास्ट सभापति जी, शुक्रिया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार दवाई, जहरीली दवा बेचने वाले, कफ सिरप बेचने वालों को बचाने पे लगी हुई है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स केवल विपक्षी नेताओं के लिए है, लेकिन जो लोग डकैती डाल रहे हैं उनके लिए कहीं आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको एहसास है कि अगर आपने ढंग से कार्रवाई कर दी तो धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभापति महोदया, सभापति महोदया, मैं आज सरकार के सभापति जी, लखनऊ वाले बचाने में लगे हैं, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, और दिल्ली वाले डर रहे हैं कि लखनऊ वाले कहीं रूठ न जाएं। कोई रूठे कोई मने, हमारी इस मौके पे मांग है कि जो बच्चों के ऊपर, जिन्होंने बच्चे मरे जहरीली दवाओं से, उन पर कठोरतम कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, कम से कम नए नए अध्यक्ष बने, बधाई लेते हुए यही नेक काम करके दे दीजिए, यही नेक काम कर दीजिए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के वो बच्चे
जो मरे उनके परिवारों को, दिलों को कहीं ना कहीं सुकून इस बात का मिलेगा कि आपने कार्रवाई कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदया, मैं आज सरकार के 2025-26 के प्रथम पूरक अनुदान के समर्थन पे खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदया, यह हमारे सरकार की लचीली अर्थव्यवस्था का एक तरह से अनुमोदन करता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के नारे को बुलंद करता है और आने वाले समय में सबके प्रयास से इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपने देश को आगे ले जाएगी। सभापति महोदया, इस बार सरकार ने 1.32 लाख करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मांगा है, जिसमें महज 40,000 करोड़ ही अतिरिक्त है। अन्यथा हम लोगों ने रीएलोकेट करके उस बजट में अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए पूरा सहयोग किया है। यह हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में जो एक संतुलित व्यवस्था है उसको दर्शाता है। अध्यक्ष महोदया, किसी भी तंत्र को अगर आप उसका उन्मूलन करें तो 3 विषय होते हैं। एक, आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़त, दूसरा हमारी महंगाई पे कंट्रोल और तीसरा वित्तीय अर्थव्यवस्था में कमी। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो पिछले 1 साल में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण हुई हैं। आप ये पूरा सदन जानता है कि पूरे विश्व में इस बार आर्थिक अर्थव्यवस्था हो रही है और उसी के साथ साथ इसी वित्तीय वर्ष में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी टेररिज्म को ध्वस्त करने के लिए बहुत बड़ा एक प्रयोग किया है। इस परिस्थिति में भी आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था 8.2% से आगे बढ़ रही है। हमारी जो इन्फ्लेशन की दर है वो 2.7% है, जो कि इस पूरे विश्व के सबसे कम इन्फ्लेशन दर में है। और तीसरा, हमारा जो वित्तीय अनुपात है, जो वित्तीय घटत है, वो भी बहुत कम है, 4.5% तक मेरे हिसाब से थम जाएगी। आपको जान के खुशी होगी कि पूरे विश्व में आज की तारीख में अगर आप ब्राजील को देखें तो उनकी अर्थव्यवस्था हमसे करीब 1.3% उनका जो वित्तीय अनुपात है वो ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील और ऐसे देश भी हमसे मेरे हिसाब से अनुशासित रूप से नहीं चल रहे हैं। महोदया, इसमें कई ऐसे अनुदान दिए गए हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मोदी इकोनॉमिक्स को दर्शाते हैं और उसमें 5 सिद्धांतों के माध्यम से इन पूरक मानदंडों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला सिद्धांत है सबका प्रयास, दूसरा सिद्धांत है स्वावलंबन, तीसरा सिद्धांत है स्वदेशी, चौथा सिद्धांत है कि हमारे जो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें दूरगामी प्रवेश, और चौथा और पांचवा सिद्धांत है हम लोग कैसे विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया, हम लोग जो सबके प्रयास से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं उसमें जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म से हमारी सरकार ने हमारे नागरिकों में विश्वास किया है और उनके जेब में करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने अपने समाज पे विश्वास किया है। इसके कारणवश आज की तारीख में इन्फ्लेशन का दर घटा है। इसके कारणवश कई जगह बहुत बढ़त हुई है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगी कि आज की तारीख में 4 पहियों की गाड़ी में लगभग 40 लाख गाड़ियां आजकल बिकी हैं। उसी के साथ साथ 2 करोड़ 2 पहिए बिके हैं। इस प्रकार की प्रगति तभी हो पाती है जब सरकार अपने नागरिकों में विश्वास करके इस प्रकार की जीएसटी की बढ़त होती है। उसी के साथ साथ इस अनुदान में आप देखेंगी अटल पेंशन योजना में और प्रधानमंत्री वन विजन योजना में 230 करोड़ का अनुदान माना गया है। उसी के साथ साथ नाबार्ड में हम लोगों ने 270 करोड़ का समावेशित इंक्लूसिव फंड में अनुदान मांगा गया है। इससे सामान्य नागरिकों को बढ़त मिलेगी और इंक्लूजन में फायदा होगा। उसी के साथ साथ पशुपालन में, दुग्ध विकास में और राष्ट्रीय गोकुल विकास मिशन में भी 30 करोड़ है। ये छोटा है लेकिन मेरे हिसाब से पूरे देश के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं देवरिया जैसे क्षेत्र में भी इसका बहुत प्रयोग होगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग सबके प्रयास से अपनी अर्थचाश को आगे बढ़ाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वावलंबन दूसरा विषय। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी जिनके इकोनॉमिक्स को मैं मोदी इकोनॉमिक्स कहता हूं, उनके सौजन्य से हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश आ रहा है, हमारी प्रौद्योगिकी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है और आने वाले समय में मूलभूत सुधार आ रहे हैं।
हमारी जो अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर में बहुत रिफॉर्म आया है। कई अन्य चीज़ों में हम लोगों ने ईज ऑफ बिजनेस किया है। आपने देखा होगा कि आए दिन हम लोगों ने लेबर रिफॉर्म किए हैं। हम लोगों ने इस प्रकार की परियोजनाएं बनाई हैं जिसमें बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें हम लोग प्रोसेस रिफॉर्म करा जाए। इन सब चीज़ों के कारणवश स्वावलंबी भारत अभियान आगे बढ़ रहा है। इस अनुदान में दो महत्वपूर्ण अनुदान माने गए हैं। एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अनुदान जो 2000 करोड़ का है, और उसी के साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि ऐसे अनुसंधान जहां पर मूलभूत रक्षा में इन सब चीज़ों में हम लोग अनुसंधान करें, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये विजन आया है। उसी के साथ साथ स्वावलंबन के लिए हम लोग रक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐसे काम कर रहे हैं। तीसरा, स्वदेशी। आप जानते हैं कि वोकल फॉर लोकल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत दिनों से कह रहे हैं। उसी के साथ साथ आज की तारीख में, आज के परिवेश में लोकल फॉर वोकल के लिए स्वदेशी का बहुत बड़ा नारा लगा गया है, और उसके लिए देवरिया में भी मैं अमृत प्रयास के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग स्थानीय रोजगार के लिए, स्थानीय विकास के लिए काम करें। और इसके लिए अध्यक्ष महोदया 2-3 प्रमुख इसमें अनुदान दिए गए हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। यहाँ पर रक्षा पूंजीगत व्यय में नौसेना के लिए आधुनिकीकरण के लिए 17,000 करोड़ का अनुदान है, और यहाँ पर बाहर से परियोजना में 540 करोड़ का योगदान है, जिससे मैं समझता हूँ चाबहार पोर्ट में हम लोगों ने जो वैश्विक स्तर में आजकल प्रतिद्वंद चल रहा है उसके विरोध में हमारी नौसेना खड़ी रहेगी और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इससे लाभान्वित होगी। चौथा और लगभग सबसे महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचों में हमने निवेश किस प्रकार से किया है। आपको जान के खुशी होगी कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी तो कुल मिला के लगभग 1 लाख किलोमीटर की हमारी सड़कें थी। आज की तारीख में उससे 1.5 गुना, सिर्फ 11 साल में 1,50,000 किलोमीटर की हमारी सड़कें हैं। ये बहुत बड़ा इसमें निवेश है, और उसी के सर में होते होते हमारे पास एक इनविट राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंधन, एक उसमें 18,000 करोड़ का अनुदान मांगा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है। अंत में, विकास की राजनीति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और इसका पूरा अंजाम हमें बिहार में दिखा है। बिहार की जनता ने उस प्रकार की राजनीति को अपना मोहर लगाया है जिसमें एक तरह से शालीन राजनीति हो, जिसमें पैसा फेंक तमाशा देख वाली राजनीति या फिर जातिगत राजनीति पे हम लोग अपनी राजनीति नहीं करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि बंगाली जनता भी इस प्रकार की राजनीति चयन करेगी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, अभी सपा के लोग बैठे हुए थे, चले गए। अखिलेश जी यहाँ पर बैठे हुए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पंकज जी जा रहे हैं यहाँ से, हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, और वहाँ पर हमारी सरकार ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। अंत में अध्यक्ष महोदया, मैं अंत में क्रांतिकारी क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूँ वहाँ से मैं समझता हूँ वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ में क्रांतिकारी क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं पूर्वांचल में, जहां मंगल पांडे उठे, जहां लक्ष्मीबाई उठी, जहां सोना सुनार उठे, जहां पर रामचंद्र विजाती उठे, ऐसे महापुरुषों ने हमें आज की तारीख में आजादी दी, और उसके 150वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। मेरा आग्रह होगा सरकार से कि इन क्रांतिकारियों क्षेत्र के लिए कुछ अनुदान दे। इन क्रांतिकारियों क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार ने और उसके बाद पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत कम काम किया है। इन क्रांतिकारी क्षेत्रों के लिए आज की तारीख में हम लोगों को कुछ अनुदान देना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले बजट में इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाए। अंत में, हमारी सरकार के जो 5 बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे हैं, मोदी इकोनॉमिक्स के, उसके समक्ष उद्यमिता को विकास दे रहा है। सबके प्रयास से विकसित भारत का लक्ष्य हम लोग पूर्ण प्राप्त करेंगे, और उसमें उद्यमिता के लिए एक बहुत सुंदर सा संस्कृत का दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मूर्खे मृगा। अध्यक्ष महोदया, पूर्ववर्ती सरकारों में जो हमारा आर्थिक सिंह था वो सो रहा था। आज की तारीख में हमारा आर्थिक सिंह जाग गया है। हमारा आर्थिक सिंह विकसित भारत की तरफ बढ़ता रहा है, और यह पूरक अनुदानों से उस आर्थिक सिंह को और ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय सांसद श्री गुरजीत औजला सिंह। थैंक यू चेयरमैन मैम, आपने मेरे को फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में बोलने का मौका दिया। करीब जो इंक्रीमेंटल कैश बजट कैश आउटगो है 41,455 करोड़ है, जबकि रिवाइज बजट है 1,32,269 करोड़ का। इसमें जो की मिनिस्ट्रीज हैं
उसमें केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर पे 11%, इंक्रीमेंटल कैश आउटगोइंग मांगा गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे 48%, होम फेयर पे 3%, एजुकेशन पे 1%, एक्सटर्नल फेयर पे 6%। स्पीकर मैम, देश जिस परिस्थिति में जा रहा है, मेरा मानना है कि मैं चर्चा जब अपने साथी लोगों की सुनता हूं सत्ता पक्ष की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उससे गायब रहते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई भी, चाहे सप्लीमेंट डिमांड फॉर ग्रांट की बात हो, चाहे बजट की बात हो, उनकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बहुत पीछे तो चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जहां से इन्होंने सरकार शुरू की 2014 से, मैं इनको थोड़ा याद कराना चाहता हूं। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको आपने राजघाट में तो जगह नहीं दी, मेरा मानना है कि अच्छा स्टैचू बना के पार्लियामेंट में लगा दीजिएगा, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक रहेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वो लेके आए। मनरेगा जैसी स्कीम जो गरीबों के लिए है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए। राइट टू एजुकेशन एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यूपीए सरकार के समय में आया। इंडो यूएस जैसी न्यूक्लियर डील 2008 में उन्होंने सक्सेसफुल पास की, जब ग्लोबल रिसेशन चल रहा था 2008 में। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज भी लोग याद करते हैं, यूपीए के समय में सिलेंडर 350 का था, आज 1200 के पार है। यूरिया का खाद 400 रुपए में था, आज 1200 के पार है। पेट्रोल 60 का था, आज 95 है। 55 का डीजल था, आज 85 का है। 50,000 का बाइक आता था, आज 90,000 का है। डिस्चार्ज जो कॉमन है हर बंदे के लिए 150 का था, आज 500 का हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस 250 का बनता था, आज 5,000 का है। और 55 लाख का जो डेबिट था, आज 2.5 लाख करोड़ का करीब गवर्नमेंट के हो गया। मैडम, आज लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यूपीए की सरकार की हर जगह चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है, मैडम हमें ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। आज हमारा जो एजुकेशन के ऊपर खर्च है वो 3 से 4.6% ऑफ द जीडीपी, जिनका मुकाबला कर रहे हैं, जिनको कभी ये मित्र बताते हैं, जब वो बात करते हैं तो उनके पास उनके लिए जवाब नहीं है। जापान जैसा कंट्री 5 से 7% जीडीपी का, यूएसए 6%, चाइना 6.13%, जर्मनी 4.6%, यूके 5.3%। मेरा कहने का मतलब है मैडम, जब तक एजुकेशन का बजट आप नहीं बढ़ाओगे, चलो बजट पास हो गया, लेकिन उसके बाद सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए थी, उसका रिसर्च के ऊपर डिमांड होना चाहिए था। ड्रॉप आउट रेट बच्चों का बहुत बढ़ रहा है, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है। सेकेंडरी लेवल का 8.2%, मिडिल लेवल का 3.5%, प्राइमरी 2.3%। मैडम, ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है, ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन है। पिछले 5 साल में 65,70,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। मैडम, चिंता की विषय है, 30,000 हमारी बच्चियां हैं, गर्ल्स उसमें ड्रॉप आउट हुई। इस बजट में उसके लिए कोई भी प्रावधान की नहीं मांगा गया कि उसको कैसे सही होना चाहिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वो नहीं है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, टीचर कम है, और सबसे बड़ी जरूरत, मैं संसद से कहना चाहता हूं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए समय समय पे अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूल में लेके आनी होगी, तब जाकर ये हम ठीक हो सकता है। मैडम, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ने 5244 करोड़ मांगे। उन्होंने P&K फर्टिलाइजर फॉर DAPSC में पैसे मांगे हैं उनके लिए। मैडम, मैं कहना चाहता हूं, जब तक प्रोड्यूस, जब यूरिया का अपने देश में क्यों नहीं होता, यूरिया का प्रोडक्शन अपने देश में कम हो रहा है। 2023-24 में 314 लाख मीट्रिक टन था, अब 2024-25 में 307 लीटर मीट्रिक टन है, लाख मीट्रिक टन है। क्यों? 33 यूनिट जो ऑपरेशनल यूनिट है, वो उनमें से 27 जो है वो 25 साल पुराने हैं, 7 से ज्यादा 50 साल पुराने हैं। तो हमें जब ये बजट मांगा गया, इनको भी सब्सिडाइज करके, इनकी टेक्नोलॉजी विकसित करके यूरिया अपने देश में बननी चाहिए। जो बाहर से यूरिया मंगाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, फायदा उनको हो रहा है, अपने देश को क्यों नहीं हो रहा। और उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अलॉटेड बजट में
स्पेंड इन्होंने सिर्फ 7% किया है। मैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहता हूँ। पंजाब में फ्लड्स आए, पंजाब में करीब बहुत बड़ी जो आपदा थी, फ्लड्स की वजह से घर खत्म हो गए, एग्रीकल्चर लैंड खत्म होगी। मैडम ये इन्होंने बोला जाकर, पहले तो प्रधानमंत्री जी नाराज है पंजाब से वैसे ही, क्योंकि जब से कृषि कानून वापस लिए हैं उसके बाद कोई ना कोई पंजाब के साथ छेड़छाड़ ऐसी होती है कि उधर के जो इनके पार्टी के लोग हैं उनको भी नहीं पता होता, तो फिर यू टर्न भी लेते हैं। इन्होंने बोला 1600 करोड़ हम देके जाएंगे। मैडम जो स्कीम है केंद्र की उनको उसमें डाल रहे हैं, जबकि 1600 करोड़ कैश चाहिए था। जैसे इन्होंने मणिपुर के लिए, लद्दाख के लिए अलग बजट रखा था, तो पंजाब के लिए क्यों नहीं जी? अब ये कहते हैं 12,000 करोड़ सरकार के पास पड़ा है, वो कहते हैं हमें खर्चने की इजाजत नहीं है। उसका जो नुकसान है वो वहां के लोग, किसान, मजदूर जिनके घर गिर गए हैं। मैडम आज सर्दी है, -2 डिग्री पे टेम्परेचर चला जाएगा, उनको कौन सहायता देगा? घर बन नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम जो जल शक्ति योजना है, इनको पहले तो वो जो फ्लड आते हैं 5 किलोमीटर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मेरे जो रावी एरिया का है, करीब गुरदासपुर का कुछ एरिया पड़ता, कुछ अमृतसर का। और मैं आपके ध्यान में लेना चाहता हूँ, ये जल शक्ति मिनिस्टर नोट करें कि जो भी बांध बने पूरा कंक्रीट का अच्छा बांध बनना चाहिए। ये मिट्टी का बनाते हैं, वहां गोलमाल हो जाता है, हर बार फ्लड आते हैं वो चला जाता है, कोई इंक्वायरी भी उसकी कोई नहीं होती। तो इसके लिए हमें जितने भी जो बांध बनने, जहां जहां फ्लड आए हैं, चाहे रावी में, सतलुज में, ब्यास में, उनकी दोनों साइड पे पक्के कंक्रीट के बांध बनने का सरकार प्रावधान करे, क्योंकि 7% बजट महज जल शक्ति मिनिस्टर ने यूज किया है, बाकी उसके ऊपर ध्यान दें। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर, मैडम फार्मर की इंक्रीज जो इनकम है, इन्होंने 6,000 रुपया देते हैं साल का फार्मर को। मैडम 2019 में शुरू किया था, अब महंगाई भी बढ़ गई है, अब उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं है कि उसको भी बढ़ाना चाहिए। जो बॉर्डर के किसान है, मैडम ये सबका है, जो बॉर्डर के किसान है उसके ऊपर हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जब गोली चलती है वो आमने सामने होता है, उसको तो जॉब भी नहीं मिलती, हर समय लड़ाई के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। मैं मिनिस्ट्री होम से कहता हूँ, ड्रग्स का बड़ा इशू है। हजारों क्विंटल ड्रग जो पंजाब में, कभी तो मुंद्रा पोर्ट से आ रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई, देखिए किसी की कार में कोई नजायज एक दारू की बोतल पकड़ी जाए ना जी, नजायज, तो उसकी कार के मालिक में पर्चा हो जाता है। तो टनों के हिसाब से जो मुंद्रा पोर्ट पे, डानी की पोर्ट पे ड्रग पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम मैडम होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। जो हमारे, नहीं एक मिनट मैडम, अभी तो शुरू हुआ है जी, अभी ठीक है, अभी तो मैडम शुरू किया है। नहीं मैडम प्लीज, मैडम जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, देखिए खत्म डरा को मैडम, ये मुद्दा है, बॉर्डर स्टेट का मुद्दा है, बॉर्डर से अकेला मैडम मैं बोल रहा हूँ, और किसी को मौका नहीं है। मैडम बॉर्डर का ड्रग्स क्या है, इसको टेररिज्म के तौर पे लिया जाए। 1000 किलो ड्रग पकड़ रहे हैं, वेपन पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान भेज रहा है। मैडम 2 लाख लोग मारे गए पहले आतंकवाद में, अब ड्रग की भेंट चढ़े हैं, इनके ऊपर जो नहीं सकती। इस सप्लीमेंट्री डिमांड में, ग्रांट में एक भी पैसा उसके लिए नहीं मांगा गया। कैसे प्रोटेक्ट करना है बॉर्डर? 50 किलोमीटर बीएस के पास है। और दूसरी, जब इतनी आपदा हम झेलते हैं, तो जब बॉर्डर है जो खुलने की बात हम करते हैं, ठीक है हमारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैडम अफगानिस्तान आगे तक हम जा सकते हैं। हमें देखिए, एक मिनट मैडम, देखिए बार बार पंजाब देश के साथ खड़ा रहता है। मैडम प्लीज, एक ही मिनट। मैडम देखिए, जो मेट्रो सिटी से लोग आते हैं, ये अपनी तरक्की तो कर लेते हैं, बॉर्डर वाले की बात, बॉर्डर में तरक्की नहीं होती बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों में। मैडम जो पंजाब को देखो, बीएमपी में आपने इन्होंने छेड़छाड़ की, यूनिवर्सिटी का मसला इन्होंने खड़ा कर दिया, चंडीगढ़ का मसला इन्होंने खड़ा कर लिया, 131 होते लेने आते हैं। क्यों बार बार पंजाब को छेड़ते हैं? राजधानी देनी, हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उसको नई राजधानी बना दो, हमारा तो पेरेंट्स आके उसके ऊपर, उस राजधानी के ऊपर, लेकिन उसके लिए कोई चिंता नहीं है, सिर्फ राजनीति करने की चिंता है। मैडम मैं देखिए अमृतसर, देखिए मैडम मैं कंप्लीट करता हूँ। मैडम अमृतसर एक ऐसा सिटी है जो बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई एयर इंटरनेशनल कनेक्टेड है। मैडम वहाँ मेडिसिटी बनानी चाहिए अच्छी, वहाँ आईटी हब होना चाहिए, वहाँ का यूथ है उसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पहले 2%, अब इन्होंने हमारा कोटा फिक्स कर दिया यूथ जंग में। मैडम जब हम लड़ने वाले लोग हैं, हम शुरू से लड़ाई लड़ते हैं दुश्मनों के साथ, तो हमारा कोटा को कम करते हो, और नहीं और तो हमारा जो
फौज का कोटा है, उसको तो ओपन कर दो। हमारे ऊपर इतना टेररिज्म का, इतना ड्रग सिस्टम का मतलब दिक्कत रहती है। मैं सबके बाद ये पढ़ के बंद करने लगा। मैडम एंड में मैं कहना चाहता हूँ, कदे वंडिया गया, कदे लुटिया गया। पंजाब जिन्नी बार उठिया करके धोखेबाजियां सुटिया गया। हाले जिउंदे ने अणखां वाले पंजाबी, जुरत रखते ने पंजाब बचाउण दी। भावें तुसीं कुछ करो या ना करो, पर असीं देवांगे गवाही जिउंदे होण दी। थैंक यू। Honourable Member C.T. Mohammed Bashir, sir. Thank you very much, Madam. A supplementary demand for 1,30,000 crores to different departments, ministries. Madam, I feel that an introspection is very much necessary, especially with the financial management of our country. It is high time to recast our financial management system. Considering the short time available to me, I'll just pinpoint certain suggestions about this financial management. Let us have a critical analysis. That is, causes of delay in budget work implementation. That's my first point. The delays can stem from financial, administrative, and procedural bottleneck across different levels of the government, center, state, and implementation agencies. Similarly, financial and fund flow issue. That is also very important, sir. Delayed, unpredictable fund release. In order, exorbitant delays in the transfer of the central share of the fund to the state government or to program implementation agencies. That also is a delay kind of matter. Similarly, late release of state share also is there. We often delay the release of the matching share, which is mandatory for the scheme. Similarly, the cash management problem like that. Parking of fund by implementation agencies outside the government accounts, leading to the incorrect reporting of the financial position. Similarly, unrealistic estimates. That is another hurdle in making the delays. Planning and administrative deficiencies, inadequate project planning. That also is another issue. Poor forecasting, unrealistic timelines, and insufficient preliminary work, example, lack of thorough feasibility report, etc. These kind of things are also adversely affecting the movement of the thing. Slow decision-making process, lengthy and multi-layered approval process, slow sanction of annual action plan, and bureaucratic delays. All these things are there, sir, unless we address this issue, we will not be able to tide over this crisis. Then capacity constraint related issues. That also is very important, sir. Madam, we know that shortage of quality human resource and inadequate technical capacity in the government apartment for effective planning and execution. That also is a problem of obstacles. That also is to be addressed properly. Clearance delay, time-consuming process for obtaining environmental, forest, and other statutory clearance. It's a very difficult thing. The clearance will not get in time. That is another reason. That also may kindly be addressed. Now, let us examine where we are now. What is our position now? We claim India as the fastest developing economy. Is it a ground reality, or should we re-examine that? It is need of the hour to streamline our methodologies in accordance with the speed taking place worldwide. We have to realize that. Our old slogan, what is that, our old slogan? That is survival of the fittest. Now that has been changed. This era is survival of the fastest. We have to take that also into consideration. Then financial reforms. There are many recommendations, madam. In our country, there are very useful recommendations are there. But unfortunately, we are going reverse. It's a fact. Financial reforms and Indian style. An era of adopting to provoking policies. India's foreign direct investment. I would like to say about that. We want money. We are having a lot of difficulties. But at the same time, India's foreign direct investment, privatization is paving way for the entry of the multinationals and very existence of our
public sector. We have to realize a lot of discussions are going in different parts of the world on globalization, liberalization, privatization. But India really wants Indianization of globalization. We must think in that broad-mindedness should be there. Examine India's then and now. I will speed up, madam. 1 minute. Then and now. Nehruvian economic philosophy. What it was, according to Nehruji, he had a vision. Our government also had a vision. We were doing that way. But what is the contemporary situation, sir? When we analyze the contemporary situation, let me just give me 1 or 2 minutes more. That also is very important. So this kind of experience, past experience, that also may kindly be examined. Next issue is their involvement of the multinational companies. For Indian industries are having its own difficulties. We are facing difficulties. At the same time, the multinationals are coming in a big way and spoiling the entire situation. One challenge is, that is what the various parts of the country, alarming situation is there. A peaceful situation, 1 minute I will conclude, madam. That is pertaining to a very important, in the country, whatever may be the reforms, the most important thing is harmony and peace and coexistence that way. What is happening in this country, madam? We know that economy is moving in a different way. Peaceful atmosphere is not there. My learned friend was saying about the UP and other places. Yes. In a country like ours, if there is no safety for the property and the life, it is something very sad, madam. I would like to say one thing. One thing in the end I would like to say. India is a country of peacefulness. We were adopting a glorious tradition. We have to keep it up. I would like to say, marginalized section in this country is going from bad to worse. I hope that government will address that with few words. I wish that the government wisdom may prevail on the government. With a few words, madam, I conclude. Thank you. Thank you very much. Thank you. ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ 2-3 ਮਿਨਿਸਟਰੀ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 100 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 102 ਨੰਬਰ ਤੇ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 4500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 2250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 32% ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਟੰਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 51% ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਸ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਫਰੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ 올림픽 'ਚ ਮੈਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਡਲ ਆ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ 426। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 올림픽 ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਡਲ ਆਇਆ 8 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆ 7 ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ 올림픽 ਦਾ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 올림픽 ਦੇ 7 ਮੈਡਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਐਤਕੀ 14 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ 30 ਸਕਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਦਿਓਗੇ। 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 5 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्रिया। ऑनरेबल मेंबर श्री के सुब्बड़ैन जी नहीं है क्या? अच्छा மேடம் வணக்கம். 1,32,000 கோடி துணை மானிய கோரிக்கையின் மீது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் சில கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். ஆட்சியாளர்களை பொறுத்தவரையிலும் இந்தியா உலகில் 3வது பெரிய பொருளாதாரம் என்று சொல்லுகிறார்கள். 4 டிரில்லியன் பொருளாதாரம் என்றும் பெருமை பேசுகிறார்கள். ஆனால் நடைமுறை என்ன என்பதை பார்த்தால்தான் அவர்கள் சொல்லுகிற சொல்லுக்கும் நடைமுறைக்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். IMF என்ன சொல்லுகிறது? சி கிரேடு பொருளாதாரம் தான். நம்முடைய பிரதமர் மோடிக்கு மிக நெருக்கமானவர், நெருங்கிய நண்பர் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லுகிறார்? இந்திய பொருளாதாரம் செத்த பொருளாதாரம் என்று சொல்லுகிறார். இந்திய நடைமுறை அனுபவம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் 80 கோடி மக்கள் அரசின் புள்ளி விவரப்படி இலவச கோதுமையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கோடிக்கணக்கான இந்தியர்கள் தங்கள் குடும்ப தேவைகளுக்கான பொருளை வாங்கிக் கொள்ளுகிற அளவுக்கு சக்தியற்ற நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வாங்கும் சக்தி மிக மிக குறைந்திருக்கிறது. சாதாரண விஷயமா 80 கோடி பேர் இலவச கோதுமையில் வாழ்வது என்பது இதையெல்லாம் மூடி மறைத்துக் கொண்டு தாங்கள் பெரும் பொருளாதாரம் வளர்ந்திருக்கிறோம், பணவீக்கம் குறைந்திருக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கு குடியிருக்க வீடே இல்லை. அரசு அறிவிக்கிற திட்டங்கள் யானை பசிக்கு சோளப்பொறி போட்ட மாதிரி பயனற்றவை.
முழு செலவை ஈடுகட்டுவதற்கு வழி இல்லை. எனவே இவருடைய பேசுவதுதான் அதிகமே தவிர செயலில் எதுவும் இல்லை என்பதை நடைமுறை அம்பலப்படுத்துகிறது. அதேபோல் தீவிரவாதத்தை இவர்கள் சந்திக்கிற முறை என்பது நல்லதல்ல. எந்த தீவிரவாதத்தையும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அது வலதுசாரி தீவிரமானாலும் சரி, இன்ன பிற வகைப்பட்ட தீவிரமானாலும் அதை தீவிரவாதத்தை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். ஆனால் மாவோயிஸ்டுகள் வேட்டையாடுகிறோம், நக்சலைட்டுகள் வேட்டையாடுகிறோம் என்ற பெயரில் உள்துறை செய்து வருகிற செயல் என்பது பல விஷயங்கள் கடுமையான அத்துமீறல்களாகும். அவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வருகிறோம் என்று சொன்னதற்கு பின்னரும் கூட பேசி ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வராமல் அவர்களை வேட்டையாடுவதிலேயே அரசு வெறிபிடித்து திரிவது நல்லதல்ல. ஒரு ஜனநாயக அரசியலமைப்பில் ஒரு பிரச்சனையை தீர்வு காண்பது என்பது பேச்சுவார்த்தைகளின் மூலம்தான் தீர்வு காண முடியும். அதற்கு அவர்கள் ஒத்துழைக்கிற போது கூட அவற்றை ஏற்கவில்லை. தண்டகாரண்யா காடுகள் முழுவதும் பழங்குடி மக்கள் வேட்டையாடப்படுகிறார்கள். மாவோயிஸ்டுகள் என்ற பெயரால், தீவிரவாதிகள் என்ற பெயரால் வேட்டையாடப்படுகிறார்கள். இது கடுமையான கண்டனத்திற்குரியதாகும். அங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை எல்லாம் கொள்ளையடிப்பதற்கு வேதாந்தா கம்பெனியும் இன்ன பிற FDI கொள்ளையடிப்பதற்கு இந்த அரசு கைகழுவி விட்டுவிட்டது. இயற்கை வளம் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது. அந்த கொள்ளையை தடுக்க முயன்ற பழங்குடி மக்கள் வேட்டையாடப்படுகிறார்கள் மாவோயிஸ்டுகள் என்ற பெயரால். இதையெல்லாம் ஏற்க முடியாது. இது கண்டனத்திற்குரியதாகும். அதேபோல் இன்னொன்றை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ரிலேட்டடான விஷயங்களைத்தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். NTC மில், இந்தியாவில் 23 மில்கள் இருக்கின்றன, தமிழ்நாட்டில் 7 மில்கள் இருக்கின்றன. இதில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் வேலை செய்யலாம். இந்த அரசு எவ்வளவு பொறுப்பற்ற அரசு என்பதற்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அந்த NTC மில்லை செயல்படுத்தினால், இயங்க வைத்தால் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் வேலை பெறுவார்கள், நூல் உற்பத்தி பெருகும். ஆனால் அவற்றையெல்லாம் செயலற்று நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. இது சரியா? சரியில்லை. தமிழ்நாட்டில் 7 மில்கள் இருக்கின்றன. தொழிலாளிக்கு ஆஃப் வேஜஸ் கூட கிடையாது. இதையெல்லாம் சட்டமீறல். எனவே NTC ஆலையை திரும்ப எடுத்து 23 ஆலைகளையும் நடத்த வேண்டும், நடத்தி வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்தோம் என்று வாயில் அளந்தீர்கள். ஆனால் இவர்கள் செய்தார்களா என்றால் செய்யவில்லை. நாங்கள் ஆலோசனை சொல்லுகிறோம். 23 மில்லை இயக்குங்கள், லாபம் கிடைக்கும், வேலை வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று நான் வற்புறுத்துகிறேன். அதேபோல் within 1 minute I will conclude, sir. அதாவது ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். நாங்கள் குறை சொன்னால் எதிர்க்கட்சிகள் குறை சொல்லுகிறார்கள் என்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற பொருளாதார மேதைகளே என்ன சொல்லுகிறார்கள்? ஒன்றிய அரசினுடைய புள்ளி விவரங்களில் மோசடி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். மோசடி புள்ளி விவரங்களை வைத்துக் கொண்டு இந்தியா வளர்ந்த பொருளாதாரம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பது நல்லதல்ல. இவர்களை எதிர்க்கட்சிகள் மக்களுக்கு முன்னர் அம்பலப்படுத்த வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much. Next speaker, Sri Rahul Kaswan. Thank you, sir. Thank you, sir, for allowing me to speak on supplementary demand for grants, first batch 25-26. Sir, 2-3 मंत्रालय की डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर ही मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, क्योंकि आपके समय मेरा लिमिटेड ही रहेगा. सर, जो मेजर इंपॉर्टेंट इशू जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की डिमांड है, जो 31,063 करोड़ रुपीज़ की एडिशनल डिमांड रखी गई है. सर, फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है इस कंट्री के अंदर दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि राजस्थान का एक रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल के अंदर 18% इंक्रीज पर हेक्टेयर हो चुका है. सर, NPK की जो रेशियो निर्धारित है ICR के थ्रू 4:2:1 का जो है वो बढ़ते हुए सर आज 23:6:1 तक पहुंच गया है. सर, हालात ये हैं कि फर्टिलाइजर की डिमांड के ऊपर यूरिया DP जब भी सोइंग का एरिया टाइमिंग आएगा सर, किसान लाइन में खड़ा हो जाता है. सर,
आज हालत हमारे राजस्थान के अंदर ये हो गई है कि लोगों ने अपने आधार कार्ड्स को लाइन में खड़ा करके छोड़ दिया है और एक आम आदमी उसको देखता रहता है कि कब नंबर आएगा। आलम राजस्थान सरकार का सर ये रहा कि किसान जब यूरिया की डिमांड के लिए लाइन में खड़ा होने गया और वहां पे इतनी भगदड़ मची, पुलिस ने लाठी चार्ज करने का काम किया राजस्थान की सरकार ने किसानों के ऊपर। फर्टिलाइजर्स की इतनी बड़ी किल्लत सर, इसके ऊपर समझना ही पड़े। डिमांड हमारी बढ़ रही है पर सर वो डिमांड एक्चुअल डिमांड में शो नहीं हो रही। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट ने डिमांड रखी, हमने पूरी कर दी, स्टेट कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। सर एक्चुअल सोइंग एरिया में जो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया एंड डीएपी की है वो सही डेटा डिस्ट्रिक्ट से कभी जाता ही नहीं। और सर हर साल जब भी सोइंग की टाइम आती है हमेशा किसान लाइनों में खड़ा होकर यूरिया डीएपी के लिए ब्लैक मार्केटिंग होती है। सर अनेकों रिपोर्ट है जहां पे ब्लैक मार्केटिंग के कारण डाइवर्जन हुआ है। सर गुजरात, केरला, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका के अंदर 70,000 सुपर बैग्स के लिए गुजरात में पकड़े गए जब आपकी ये जो यूरिया की सप्लाई ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू इंडस्ट्रीज की तरफ सप्लाई की गई। सर मेरा सरकार से ये कहना है कि इस प्रॉब्लम को आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर की एक्चुअल डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप राइट उठाइए। किसान को परेशानी करने का सबब सरकार बनाती जा रही है। हमारी डिमांड 314 लाख मैट्रिक टन की जो 23-24 में थी सर, वो आज भी हम डेफिशिट है सर, हमें इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ सरकार ने सर 3 अलग अलग बातें कही, जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पैरामीटर ही नहीं है सर कोई। आज कोई किसान अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को नेचुरल फार्मिंग के ऊपर चला भी गया, अपने प्रोड्यूस को किसको बेचेगा सर? कौन खरीदने वाला है इस प्रोड्यूस को? क्या हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग की जो प्रोड्यूस है उसके लिए कोई निर्धारित नई एमएसपी डिसाइड करिए सर। मंडी में जाके क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास में है जो डिसाइड कर देगी कि ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है कि ये हमारा नॉर्मल प्रोड्यूस है? और सर उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं, इसीलिए से शिफ्टिंग नहीं हो पा रही। चूरू जिले से आता हूं सर, लोकसभा क्षेत्र मेरा चूरू राजस्थान से है सर। 13.5 लाख 14 लाख हेक्टेयर लैंड है सर जो कल्टिवेबल है। उसके अंदर सर आज की तारीख में भी हम 80% रेनफेड इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। उसके बाद नेचुरली लोगों ने हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया पर सरकार की हैंड होल्डिंग ही नहीं थी सर, और नए हैंड होल्डिंग होने के कारण धीरे धीरे वो भी फर्टिलाइजर तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो डिमांड आपने फर्टिलाइजर्स की करी है और जो आप अलग अलग स्कीम्स निकाल के चल रहे हो, ऑर्गेनिक कंटेंट सर ऐसा हो गया है कि हमारा ओसी 93% ऑफ लैंड में ओसी गिरते हुए इतना नीचे आ गया सर कि विदाउट डीएपी एंड यूरिया यू कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग दी एग्रीकल्चर इन द कंट्री राइट नाउ। तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि आप इन तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करिए। एक तरफ जीरो बजट ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की बात है और एक तरफ यूरिया फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन दोनों विभाग में हो नहीं रहा। सर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 18,837 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट एडिशनल मांगी गई है। सर आज की तारीख में भी इस कंट्री के अंदर सर 90,000 गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 14 से लेकर 24 के बीच में 90,000 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग इस देश के अंदर था वो आज बढ़कर 1,48,000 किलोमीटर हो गया है। सब बड़ी खुशी की बात है सर, इतना अच्छा काम हमारे आदरणीय मंत्री जी नितिन गडकरी साहब कर भी रहे हैं। पर सर क्या अभी पता है कि सर आज भी हिंदुस्तान का 1,48,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, इसका 70% ऑफ नेशनल हाईवे इज लेस देन सर 2 लेन, लेस देन 4 लेन सर, 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर रह गया सर। सर हालत ये है कि मैक्सिमम जो हाईवेज हमारे जो 30-40% हाईवेज 4 लेनिंग के हैं वो इस कंट्री के अंदर ओवर स्ट्रेस्ड है सर। आपने सर गाइडलाइंस दी है कि 10,000 पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट के ऊपर कोई नेशनल हाईवे होगा तो उसको हम 4 लेनिंग करेंगे, 25,000 से ऊपर है तो उसको हम 6 लेनिंग करेंगे सर, और सर 50,000 से ऊपर है तो हम नया हाईवे बनाएंगे। सर राजस्थान के अंदर सर जयपुर से निकलने वाला हर राष्ट्रीय राजमार्ग डबल ऑक्यूपेंसी जरूरत, जयपुर से किशनगढ़ का नेशनल हाईवे सर, मैं प्लीज 2 मिनट लूंगा सर, जयपुर से निकलने वाला किशनगढ़ हाईवे सर आज की तारीख में 50,000 पीसीयू के लिए डिजाइन हाईवे के ऊपर 1,18,000 पीसीयू का ट्रैफिक है सर। 100 लोगों ने एक साथ जान दी हाईवेज के ऊपर, कोई संभालने वाला नहीं है सर। इस मिनिस्ट्री के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए, हमारी आज भी लॉजिस्टिकल कॉस्ट 16% हमारी है जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है सर राइट नाउ। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा सर, इसके साथ में मैं आपसे सर 2 मिनट समझ चाहूंगा सर। इरिगेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर जिसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, ना इस बजट में कहीं इसकी चर्चा भी है सर। सर राजस्थान का ऐसा हरिके बराज जिससे पानी, तीनों नदियां जो हमारी ईस्ट रिवर्स हमारी हैं जो इनका पानी हमें मिलता है, तीनों नदियों का पानी से हरिके बराज भी इकट्ठा होता है सर। 75,000 हेक्टेयर लैंड के अंदर, एकड़ लैंड में वो स्टोरेज हमारा बराज है सर, उसकी डिसिल्टिंग पिछले कई सालों से नहीं हुई। 2 MF पानी हर साल
इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाता है सर, और मेरी लोकसभा क्षेत्र में पीने का पानी तो सर है ही कम, खेती के लिए पानी तक भी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कहीं फोकस इरिगेशन पर नजर नहीं आती, जिससे किसानों को पैसा मिले, पानी मिले। और सर साथ में सर लास्ट पॉइंट, सर समय बहुत कम दिया आपने मुझे, बहुत से इशू उठाने थे, पर मेरा इतना जरूर कहना है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा सर, डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे हैं सर। एक इंजन दिल्ली का, एक इंजन जयपुर का, सर दोनों इंजन ट्रेन के ऑपोजिट साइड पे जुड़ गए हैं सर, और ट्रेन चल नहीं पा रही, ट्रेन वही खड़ी हो गई है। भागीरथ का नाम दिया गया सर, यमुना लिंक के पानी का नाम कहीं चर्चा में नहीं। उसके लिए कब फंडिंग अलाउ होगी ताकि चूरू जिले का 1 लाख हेक्टेयर खिंचे पानी जमीन सिंचाई हो सके। मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि आप यमुना लिंक रिवर के पानी को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम करें। धन्यवाद। डॉक्टर CN मंजुनाथ। Many thanks to Honorable Speaker for giving me this opportunity to speak on supplementary grants, demands for supplementary grants. Despite global challenges, despite adversaries, India's economy stands firm-footed with a very low inflation rate, and GDP is still growing at 6.4%, although in the last quarter it was 8.2%. It is, on an average, it is around 6.4%. India has done very well, both in the sky, also on the ground, also on the sea. In the sky, BrahMos missiles, then the drones and jet fighters, all are indigenously made. On the ground, yes, we see excellent infrastructure, world-class highways, railways, and also airports. Very fact, Tier 2 cities, Tier 3 cities, airports are crowded, means economy is booming. People have a lot of money in their hand, because up to 12 lakhs income tax is exempted. As a result, 1 lakh crore is put into the hands of the people. Recently, because of GST exemption, people also are having a lot of money in their hand. So this is one of the important things. Yes, Honorable Prime Minister is working on the noble concept, local for vocal, vocal for local. It's not just vocal for local, it is local for global also. Because every 4th generic tablet sold in the world is coming from India. And every 4th mobile phone that is used in the United States is coming from India. You look at the defense sector. Last year, the defense export stands at 30,000 crores, and the total defense production is 1.2 lakh crores. We consider particularly semiconductors or digital pearls. India is spending more than 1 lakh crores on semiconductors, and also giving a lot of subsidy on the fertilizers as well as on the EV electric vehicles. So coming back to, because the investment is quite, massive subsidy is extended to the semiconductor zone. See, coming back to the health, Ayushman Bharat is one of the most important, world's largest health assurance scheme. More than 50 crores have been enrolled, and about 9 crore procedures have been done. But we really appreciate the Honorable Prime Minister and the Finance Minister, because now more than 70 years, people above 70 years, irrespective of the financial finance or income, they are all included under Ayushman Bharat. And now the coverage is up to 5 lakhs. 5 lakhs for the entire family. Because now people above 70 years is included, and people above 70 usually will have multiple comorbidities, diabetes, hypertension, malignancies, prostate issues, joint issues. So I urge the government to extend this coverage from 5 lakhs to at least 7.5 lakhs for the family, so that it can be covered. And at the same, of course, there is more than doubling of the medical college. Today there are 820 medical colleges with the MBBS bed strength is around 1,23,000.
So about 19 lakh allopathic doctors and about 5 lakh Ayush doctors are there, but still we see many doctors, we are not willing to go to the village hospital. Semi-urban areas, rural hospital, doctors are not going. So not that there is a shortage of doctors, but there's a maldistribution. More doctors are in cities, less doctors in the rural area. I think I strongly urge the government to enhance the salary of the doctors working in rural areas, semi-urban and rural hospitals. And the second one, we have to incentivize MBBS doctors working in rural hospital. One of the things that can be considered is if the MBBS doctor is working in rural hospital, you can consider giving additional marks in NEET PG examination. That could drive them to work in a rural hospital. Yes, we have CGHS hospitals. In Bangalore city, we have more than 250 Government of India establishments with about 4 lakh central government employees are working. So here what is happening, for the same size of CGHS beneficiary in city of Chennai, in city of Hyderabad, they have 15 CGHS wellness center, but Bangalore city at this point of time has only about 11. So I request the government to set up another 5 CGHS wellness centers in the city of Bangalore. Then we have Janaushadhas, nearly 16,000 Janaushadha Kendras are there in the country, in our own state, 1,480 Janaushadhas. So on the same, because of Janaushadha, nearly 30 to 40,000 crore is saved to the patients. On the same line... No, please try to conclude. Just 1 minute, just 2 minutes. On the same concept, we should also have Janaushadha concept for animal and plant Aushadhalayas, because particularly the plant nutrients, the animal nutrients, animal feeds can be also sold to the farmers at a subsidized rate. Sir, Karnataka is a land of sandalwood. It is called sandalwood state. 65% of the sandalwood is coming from Karnataka. Yes. And each state at this point of time have their own regulations with respect to cultivation, transportation, and trade. No, please, please. So, just 1 second, sir. So, this under Niti Ayog, the Central Vista Committee, Central Vista Oversight Committee has appointed a central sandalwood development board to put up a recommendation under the concept of one nation, one sandalwood policy. One nation, one sandalwood policy. And they have recommended to set up a sandalwood board, All India Sandalwood Board, on the line of coffee board or the spices board at Bangalore. Thank you very much. So under the Ministry of Commerce, 1 second, sir, under the Ministry of Commerce and Industries. So I'm very happy to the Honorable Prime Minister. Ragi has been given a very good MSP at 4,886. But I request the ministry to consider giving a better price to the paddy and also to procure jawar and maize in our state. Thank you. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद सभापती महोदय. मी या ठिकाणी पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. सभापती महोदय, या सभागृहात आल्याच्या नंतर मी वारंवार त्या ठिकाणी ऐकतो की आपल्या देशाला 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी त्या ठिकाणी बनवायची. मी फार मोठा काय अर्थतज्ञ नाही आहे, पण एक साधी गोष्ट मला त्या ठिकाणी निश्चितपणे समजते की आपल्या देशातील जवळपास 60 ते 70% लोक ही शेती या व्यवसायावर त्या ठिकाणी अवलंबून आहेत. आणि त्या शेतीसाठी जोपर्यंत आपण सिंचनासाठी मुबलक पाणी, वीज आणि जो शेतकरी त्या शेतात राबून कष्ट करून पीक पिकवतो, त्यानं पिकवलेल्या माल उत्पन्नाला त्या ठिकाणी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे त्याच्या उत्पादन खर्चावर आधारित त्या ठिकाणी त्याला हमीभाव जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत मला वाटते आपण जे 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं स्वप्न त्या ठिकाणी बघतोय ते आपण कधीही गाठू शकणार नाहीत. सभापती महोदय, मी कायम ऐकतो की आपण
इतके मोठे हायवे बनवले, इतक्या मेट्रो बनवल्या, ह्या हायवेसाठी 70,000 कोटी, त्या हायवेसाठी 1,00,000 कोटी. सभापती महोदय, पण मला वाटतं अटल बिहारी वाजपेयीजींचंच त्या ठिकाणी विजन होतं नदीजोड प्रकल्प. मला वाटतं नदीजोड प्रकल्पाच्या बाबतीत आपण मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करून बजेटमध्ये तरतूद करून त्या शेतकऱ्याला शाश्वत पाणी त्या ठिकाणी का उपलब्ध करून देत नाही? मला वाटतं हा माझा सरकारच्या पुढे प्रश्न आहे. सभापती महोदय, आपण बघितलं असेल ज्या वर्षी चांगला पाऊस होतो आणि शेतकऱ्याचं त्या ठिकाणी पीक पिकतं आणि प्रचंड प्रमाणात उत्पन्न येतं, उत्पन्न आल्याच्या नंतर शेतकऱ्याला योग्य जर भाव मिळाला तर आपण त्या वर्षी बघा किराणाचं दुकान असेल, सोनाराचं दुकान असेल, गाड्याची दुकानं असतील, सगळी जोरात त्या ठिकाणी चालू असतात. पण ज्या वर्षी शेतकऱ्याचं पीक पिकत नाही, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळत नाही, त्या वर्षी मात्र ही सगळे व्यवसाय करणारी लोक त्या ठिकाणी माशा मारत बसलेले असते. म्हणून माझी विनंती आहे की शेतीकडे बघत असताना जो दृष्टिकोन सरकारचा आहे तो दृष्टिकोन त्या ठिकाणी बदलणं गरजेचं आहे. ती शेती नफ्याची, ती शेती फायद्याची कशी करता येईल ह्याच्यासाठी सरकारनं त्या ठिकाणी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. सभापती महोदय, मी महाराष्ट्रासाठी एक म्हणणं त्या ठिकाणी मांडतोय. पश्चिम वाहिनी नद्या ज्या आहेत, वैतरणा, उल्हास समुद्रातनं ज्या नद्या वाहून जातात, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळानं त्या ठिकाणी सप्टेंबर 2024 मध्ये पाणी वळवण्यासाठीच्या प्रस्तावाला त्या ठिकाणी मंजुरी दिली. सभापती महोदय, या प्रकल्पाच्या अंतर्गत जवळपास 55 TMC पाणी आणण्याच्या दृष्टीनं सविस्तर प्रकल्प अहवाल डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट त्या ठिकाणी सरकारनं ठेवलेलं आहे. आणि ह्या प्रकल्पासाठी साधारणतः 70,000 कोटी रुपयाची गरज असून मला वाटते ते जर पैसे त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले तर साधारणतः 70 TMC पाणी ही दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि महाराष्ट्रासाठी नदीजोड प्रकल्पाची का आवश्यकता आहे? नारपार असेल, अंबिका असेल, औरंगा असेल, दमनगंगा, वैतरणा, उल्हास यासारख्या नद्याच्या खोऱ्यातील जे अतिरिक्त पाणी आहे, जी गोदावरी खोऱ्यातील कोरडवाहू भागामध्ये जर आपण त्या ठिकाणी वळवलं तर निश्चितपणे त्या शेतकऱ्याचा त्या ठिकाणी फायदा झाल्याशिवाय आणि त्याला मुबलक प्रमाणात पाणी, शाश्वत पाणी उपलब्ध झाल्यामुळं त्या ठिकाणी निश्चितपणे त्याला त्याची शेती ही फायद्याची त्या ठिकाणी करता येईल आणि त्याच्या माध्यमातून उत्पन्न घेऊन त्याचा प्रपंच त्या ठिकाणी करता येईल. सभापती महोदय, मला माझ्या धाराशिव लोकसभा मतदारसंघामध्ये जून ते सप्टेंबर महिन्यात जी प्रचंड प्रमाणात त्या ठिकाणी अतिवृष्टी झाली आणि ज्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्याचं प्रचंड असं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. सभापती महोदय, त्या नुकसानीच्या बाबतीत जवळपास माझ्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये 5,77,544 हेक्टर इतक्या क्षेत्राचं त्या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे. आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारनं त्या ठिकाणी जवळपास 31,628 कोटीचं पॅकेज त्या ठिकाणी जाहीर केलं आहे. पण सभापती महोदय, दुर्दैवानं या ठिकाणी खंत व्यक्त करावी वाटते की केवळ 14,000 कोटी रुपये त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या पदरात अद्यापर्यंत पडलेत. अजूनपर्यंत जवळपास 17,628 कोटी रुपये त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला मिळणं बाकी आहे. सभापती महोदय, मी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून सरकारला प्रश्न विचारला होता की महाराष्ट्रात जी ही आपत्ती आली आहे, ह्या आपत्तीच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला काय मदत केली. पण सभापती महोदय, त्या ठिकाणी दुर्दैवानं राज्य सरकारचा प्रस्ताव आला नाही. अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी त्या मंत्री महोदयाच्या उत्तरात, जे गृहराज्यमंत्री आहेत त्यांच्या उत्तरात त्या ठिकाणी मला सांगितलं गेलंय. सभापती महोदय, मला अपेक्षा आहे की महाराष्ट्र सरकारनं तातडीनं ती मदतीचा प्रस्ताव पाठवावा केंद्र सरकारकडं आणि डबल इंजिनच्या सरकारच्या माध्यमातून जी शेतकऱ्याला भरीव स्वरूपाची मदत त्या ठिकाणी मिळणं गरजेचं आहे, ती मदत त्या ठिकाणी तातडीनं मिळवून द्यावी ही माझी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारला विनंती आहे आणि राज्य सरकारला विनंती आहे. सभापती महोदय, माझी विनंती आहे, मी एकटाच आहे वक्ता बोलणारा, किमान मला 10-15 मिनिटं तरी बोलू द्या. सभापती महोदय, मला एक सगळ्यात महत्वाचा विषय मला आपल्या माध्यमातून सांगायचा आहे की मराठवाड्यामध्ये साधारणतः 1 जानेवारी ते 30 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत किती आत्महत्या झाल्या? सभापती महोदय, 112 छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, 32 जालन्यात, परभणीमध्ये 45, हिंगोलीमध्ये 33, नांदेडमध्ये 90, बीडमध्ये 108, लातूरमध्ये 47, धाराशिवमध्ये 70. मला वाटतं इतक्या प्रचंड प्रमाणात शेतकऱ्यांनी स्वतःचं जीवन त्या ठिकाणी संपवलंय. सभापती महोदय, माझी विनंती आहे की आपण बघितलं असेल शेतकऱ्याच्या खताला जीएसटी आहे, शेतकरी जे कुठल्या औषधं त्या ठिकाणी वापरतोय त्याला जीएसटी आहे, पण जीएसटीचा परतावा शेतकऱ्यांना कुठून घ्यायचा? सभापती महोदय, शेतकरी हा शेवटचा उपभोक्ता आहे, त्याला जीएसटीचा परतावा त्या ठिकाणी घेता येत नाही. म्हणून माझी विनंती आहे केंद्र सरकारला की जीएसटी जो शेतकऱ्याच्या खतावर, बियाण्यावर, त्या ठिकाणी तणनाशकावर लावला जातो तो जीएसटी त्या ठिकाणी
कमी करावा, रद्द करावा ही माझी कळकळीची विनंती सभापती महोदय आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारला त्या ठिकाणी आहे. सभापती महोदय, मला आपल्याला सांगायचंय की धाराशिवसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा आई तुळजाभवानीचं जे तीर्थक्षेत्र आहे ते रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी, सभापती महोदय मला थोडासा वेळ द्या सभापती महोदय, रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी सोलापूर, तुळजापूर, धाराशिव हा रेल्वे मार्गाची घोषणा सभापती महोदय 2014ला झाली होती. 2019च्या नंतर जवळपास 3200 कोटी रुपयाची त्या ठिकाणी आवश्यकता ह्या रेल्वे मार्गासाठी आहे. सभापती महोदय, राज्य सरकारनं निम्मा खर्च उचलण्याची हमी त्या ठिकाणी केंद्र सरकारला दिली आहे, पण दुर्दैवानं 1 रुपयाची तरतूद त्या ठिकाणी राज्य सरकारनं ह्या प्रकल्पाच्या बाबतीत केली नसल्यामुळं केवळ तुळजापूर पासून धाराशिव पर्यंतच्या रेल्वे मार्गाचं काम चालू आहे, पण तुळजापूर पासून सोलापूर पर्यंतच्या रेल्वे मार्गाचं टेंडर अद्यापर्यंत त्या ठिकाणी अंतिम झालेलं नाही. आणि त्याच्यामुळं जे स्वप्न आहे सोलापूर, तुळजापूर, धाराशिव आई तुळजाभवानीचं तीर्थक्षेत्र त्या ठिकाणी जोडण्याचं ते स्वप्न त्या ठिकाणी अपुरं राहतंय. सभापती महोदय, मला माझ्या मतदारसंघातल्या फक्त 2 मागण्या मला तुमच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या समोर ठेवायच्यात. सभापती महोदय, आमच्याकडं कनेक्टिव्हिटी रोडची चांगले धुळे सोलापूर त्या ठिकाणी हायवे आहे, सुरत चेन्नईचा महामार्ग सुद्धा त्या ठिकाणी भारतमाला प्रोजेक्टमधनं बाहेर आल्यामुळं त्याला वेळ लागतोय, पण माझी विनंती आहे की त्याला सुद्धा लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी. आणि मला वाटतं हे सगळे महामार्ग झाल्याच्या नंतर धाराशिव MIDC मध्ये एक लॉजिस्टिक पार्क त्या ठिकाणी केंद्र सरकारनं उभा करावं ही माझी त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारला त्या ठिकाणी सभापती महोदय कळकळीची विनंती आहे. आणि त्याचबरोबर धाराशिव शहरासाठी जी सुरत चेन्नईचा ग्रीनमेंट अलाइनमेंट जी त्या ठिकाणी अजून प्रलंबित आहे, त्या ठिकाणाहून वैरागपासनं धाराशिव जिल्ह्याला जोडण्यासाठी, धाराशिव शहराला जोडण्यासाठी एक स्पर रोडची मागणी त्या ठिकाणी मी नितीनजी गडकरींकडे केली आहे. त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी मान्यता द्यावी, ज्याला 1365 कोटी रुपयाची आवश्यकता आहे. ही सुद्धा माझी विनंती आपल्या माध्यमातून सन्माननीय केंद्र सरकारकडे सभापती महोदय आहे. त्याचबरोबर सर, on behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the supplementary demands for grants 2025-26 with a sense of deja vu. Every year, we pass a budget with grand claims and booming confidence. And every year, without fail, the government returns quietly with a tray full of supplementary demands, as if the original budget was just a polite suggestion, not a financial plan for the world's largest democracy. So this year, the government needs 1.32 lakh crore more. At this point, I feel the budget is just the trailer. The real movie is the supplementary demands for grants. This is not unforeseen volatility. This is systemic failure masquerading as normalcy. Take fertilizer. Estimate 1.67 lakh crore. Revision 1.92 lakh crore. New demand 18,525 crore more. Fertilizer consumption grew 16%. Subsidy jumped 130%. Somewhere between these numbers lies a forecasting model that has completely given up. Sir, farmers plan their cropping cycles better than the government plans its subsidies. And that extra 18,525 crore could have directly supported nearly 10 crore farmers. But instead, we are told to pay for a system that leaks more than it delivers. Sir, LPG and petroleum subsidies, another 9,500 crore. When states ask for resources, they are told to tighten their belts. But when subsidies need topping up, suddenly that belt becomes elastic. Sir, now I want to speak with seriousness about something that cannot be brushed aside. The Election Commission gets 58 crore. It's fine, but we still have no clarity on support for the families of BLOs who died by suicide. In West Bengal alone, 39 people, including 8 BLOs, lost their lives due to unbearable pressure. Sir, these were ordinary citizens who served quietly, honestly. Their families deserve acknowledgement, dignity, and compensation, not silence. Strengthening democracy cannot mean uploading institutions while ignoring the people who carry the weight of those institutions. Sir, on youth, the concerns deepen. Only 4% joined the PM internship scheme. Only 1.4% scheduled caste, scheduled tribe youth are participating.
And a full one-third of our young population is not in education, employment, or training. These are young Indians ready to work, ready to learn, ready to contribute. Yet they are left standing outside the gates of opportunity. The gap is not in talent, the gap is in implementation. The government promised a fiscal deficit of 4.5% of GDP when it presented the budget, but the commitment was always hollow. These repeated supplementary demands makes a mockery of fiscal target, which are quietly altered mid-year without public scrutiny. Where is the fiscal discipline? Where is the credibility? So now, aviation sector, another crisis waiting patiently for attention. One operator cancelled more than 5,000 flights. DGCA has 50% vacancies, AI 37%, BCAS 38%. With so many vacancies, aviation is not flying, it is floating. And yet, in this entire supplementary demands, 0 rupees for civil aviation. Kolkata, despite being one of India's cultural and economic hubs, still has no direct flight to the United States or Europe. Other metros enjoy 456 flights a week. Kolkata gets none. Even tourists can see the bias while planning their itinerary. Why can't the union government? All of this ties directly into the collapse of cooperative federalism. States like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal rely on stable subsidy flows. But the centre's unpredictable spending patterns throw state planning into chaos. States are expected to act as shock absorbers for decisions they did not make. This is not cooperative federalism, sir. This is federalism where the center drives the car and the states are told to pay for the fuel. Sir, and now Manipur. Suddenly an additional rupees 2,198 crores appears in the supplementary demands for Manipur's development. And a truly welcome development for Manipur, sir. Every part of India deserves growth, dignity, and peace. But, sir, what timing? When Manipur was burning for months, the government couldn't find urgency. But now that elections are coming, now funds have magically appeared. When the state was pleading for help, we were told, quote, we are looking into it, unquote. Now suddenly the purse opens wide. Sir, I appreciate the government efficiency. If only this speed had been shown when people were running for their lives, not when people are running for votes. The message seems to be, in a crisis, wait. In an election, celebrate. That is not governance. That is selective attention, sir. Women's safety presents another distressing picture. The women's helpline budget was cut by 85%. Cybercrime protection for women and children received 0 last year and 0 again this year. Such slogans do not protect women, budgets do. Right now, the budgets for women's safety is practically on a fast. So now coming into the climate sector, despite escalating climate risk, the supplementary demands are silent on environmental protections. There is no meaningful enhancement for climate adaptation, pollution control, biodiversity conservation, or disaster preparedness. Sir, the absence of phrase allocation signals that environmental concerns remain expendable, treated as peripheral rather than integral to growth, livelihoods, and public welfare. Now the broader issue, the silence around these demands, no explanation for failed estimates, no clarity on what changed mid-year, no accountability for the additional money requested. We are simply told, quote, please approve. Sir, Parliament is not a cashier counter, sir. And so the rupee has been weakening due to trade deficits, capital outflows, global interest rate pressures, and weak exports. Yet the supplementary demands offer no funds or policy support to address these issues. By ignoring the failing rupee, the government avoids acknowledging rising import costs, inflation, and the growing burden on ordinary citizens. I would like to request the Honorable Finance Minister to clarify why Donald Trump called Indian economy is a dead economy. And sir, Home Ministry has been allocated 10 crore for advertisement and publication and 5 crore for printing. Sir, I would like to know from the Honorable Finance Minister to explain why such huge amount
allocated to the Home Ministry for only advertisement purpose. Sir, the affront goes deeper. These 72 supplementary demands will be bulldozed through this House via the guillotine procedure. The government has engineered a system where meaningful parliamentary scrutiny is rendered impossible. The Modi government has progressively weakened every institution designed to check executive access. The CAG, the RBI, the Election Commission, the judiciary, and now Parliament itself. Through supplementary demands made immune to scrutiny, it perfects a system where accountability evaporates. Sir, the Union Cabinet has approved a bill to rename the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act as Pujya Bapuji Gramin Rozgar Yojana. Changing the name of a nearly 20-year-old widely recognized welfare scheme is an unnecessary and costly process. Rebranding and all related materials from office signature to official documentation and job cards would be a significant expense of public resources. Our people are the living souls, sir, not the mere lifeless soil. If we truly honor our beloved countrymen, then our Bapuji will be worshipped literally. Sir, West Bengal is being deprived of getting MJNREGA fund. West Bengal is being deprived of getting the fund under Jal Jeevan Mission. Sir, West Bengal is being deprived to get the fund under National Rural Health Mission. West Bengal is being deprived of getting the fund under Pradhan Mantri Awas Yojana. Sir, the note is now ringing in the voice of the underprivileged people of Bengal. Ami bhoy korbo na, dubala morar age morbo na bhai morbo na. Tori khana baite gele माझे tufan mele, tai bole hal chede diye dhorbo na, kanna kati dhorbo na. I shall not be afraid. I shall not die every now and then before death. Sir, people of Bengal will fight for their protector, none other than Mamata Banerjee. People of Bengal will fight for their young leader Abhishek Banerjee. People of Bengal will protect their dear symbol. Thank you very much. Once again in 2026. And lastly, sir, I call this House to demand accountability. I call on Parliament to re-assert its constitutional authority. I demand the large supplementary allocation phase mandatory standing committee review. I demand transparency in subsidy distribution. I demand that fiscal target means something. I demand that this government immediately undertake comprehensive fiscal and administrative reform. Sir, the nation is watching. History will judge. Thank you, sir. Thank you very much. Now I take the sense of the House, whether the House will be extended till 8 o'clock. If the House is agreeable, we will extend the House up to 8 in the night. Yes. Oh, so it's extended up to 8 o'clock. Now the next speaker is Rani Sri Kumar. Thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity. I am going to talk about the supplementary demands for grants at a time when India is facing growing economic uncertainty, rising inequality, and an alarming gap between government claims and the lived reality of ordinary citizens. The figures placed before this House are not just budgetary numbers. They reveal the mindset and priorities. An additional expenditure of 1.32 lakh crore is being sought, out of which 41,100 crore is a direct cash outgo, while the remaining 90,800 crore is expected to be managed through alleged savings and recoveries. Out of this 1.32 lakh crore, 62,446 crore is revenue expenditure and 69,822 crore is capital expenditure. The government claims that this reflects an infrastructure-driven approach, but the reality is that is so-called capital expenditure is not strengthening public hospitals, educational institutions, or welfare systems. Instead, it is largely facilitating corporate expansion. Sir, the neglect of Tamil Nadu under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana exposes the Union government's discriminatory approach. While the Department of Animal Husbandry has sought additional funding, the Department of Fisheries has asked for nothing because it has effectively abandoned its commitments, particularly towards Tamil Nadu fishing community. This is not an administrative lapse. This is deliberate denial of funds.
Tamil Nadu contributes immensely to India's economy, yet its fishing community is being punished for political reasons. The situation of AIIMS Madurai is an embarrassment to this nation. It was announced in 2018. The project remains incomplete even today. Students were admitted without a campus and classes were conducted out of a borrowed medical college building. While 6 other AIIMS institutions were fully funded by the union government, Tamil Nadu alone was asked to take a foreign loan from JICA for most of the cost. Only after repeated pressure, the visit of a delegation of Japan and years of delay did construction finally begin. The treatment of Tamil Nadu reflects not administrative failure but political vindictiveness. India's public health spending paints an even darker picture. While developed nations spend around 8% of GDP on healthcare, India struggles to spend even 1%. The recent claim that out-of-pocket expenditure has declined is misleading, sir. Actually, it has fallen not due to expanded government services, but because citizens are postponing treatment, avoiding hospitals, and absorbing healthcare costs through silent suffering. Sir, பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு ஒன்றிய பிரதம அமைச்சர் அவர்கள் அமெரிக்காவுடன் எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நட்புறவு இருக்கிறது என்று எப்போதும் பெருமையுடன் கூறிக்கொள்வார்கள். ஆனால் அதனால் ஒரு பயனும் கிடையாது. நம்மளுடைய இந்திய பொருட்கள் ஏற்றுமதி அமெரிக்காவுக்கு செய்யப்படுவதற்கு அதிக வரியை விதித்துள்ளார்கள். மேலும் பெனால்ட்டியும் போட்டுட்ருக்காங்க. பாரத பிரதமர் நட்பு ரீதியாக அமெரிக்காவுடன் உறவு கொண்டிருப்பதில் எந்தவித பயனும் இந்தியாவிற்கு ஏற்பட போவதில்லை. ஸ்டேட்ஸ் ஆர் பீயிங் financially strangled. GST dues are withheld. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் சீரிய முயற்சியால் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. உயர்கல்வியில் இந்தியாவிலேயே அதிக உயர்கல்வி பயிரும் மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். புதிய கல்விக் கொள்கை என்ற பெயரில் நீங்கள் வைத்துள்ள இலக்கான 2034 52% உயர்கல்வி என்ற இலக்கை நாங்கள் தற்பொழுதே எட்டிவிட்டோம். எனில் எங்களுக்கு புதிய கல்விக் கொள்கை எதற்கு? மும்மொழி கொள்கை என்ற பெயரில் நீங்கள் இந்தி திணிக்கும் முயற்சியை நாங்கள் எதிர்ப்பதாலேயே எங்களுக்கு சமக்ர சிக்ஷா அபியான்கான நிதியான 2548 கோடியை கொடுக்க மறுப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம்? தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தானே உள்ளது, வேற எந்த நாட்டிலும் இல்லையே. மன்ரேகா திட்டத்திற்கான நிதி நிலுவைத் தொகையை இன்னும் எங்களுக்கு வழங்கவில்லை. அதற்கான பெயரை கூட நம்மளுடைய சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட மகாத்மா காந்தி அவர்கள் பெயரில் இருப்பதற்கான அந்த பெயரை மாற்ற நினைக்கிறீர்கள். இது சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட தலைவர்கள் மீதான உங்களது வன்மத்தையே காட்டுகின்றது. ஜல்ஜீவன் மிஷன் மற்றும் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கும் நீங்க நிதியை இன்னும் கொடுக்கல. எங்களுடைய மாண்பு முதலமைச்சர் பதவியேற்ற காலத்திலிருந்தே பல்வேறு புயல்கள், கொரோனா பேரிடர், சென்னை பெருவெள்ளம் ஆகிய அத்தனையும் வந்த போதும் எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தனது நிர்வாக திறமையால் சிறப்பாக கையாண்டு இருக்கிறார்கள். இத்தகைய முயற்சிகளை நீங்கள் ஆளும் மாநிலத்திலும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் மருத்துவமும் கல்வியும் இரு கண்கள் என்று கூறுவார்கள். மேலும் பெண்களுக்கான முன்னேற்றத்திற்கும் மிகுந்த பாடுபட்டு வருகிறார்கள். பெண்களுக்காக கல்விக்கு புதுமை பெண் திட்டம், மகளிர் தோழி விடுதிகள், let me conclude, sir. இத்தனை திட்டங்களை எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பெண்களுக்கும் கல்விக்கும் மருத்துவத்துறைக்கும் செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒன்றிய அரசின் பங்களிப்பு என்பது மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. ஒரு மாநிலத்தால் கல்விக்கும் மருத்துவத்திற்கும் பெண்களுக்கும் இத்தனை திட்டங்களை கொடுக்க முடியும் எனில் ஒன்றிய அரசால் ஏன் கொடுக்க முடியாது? Let me conclude, sir. Because the story buried inside these supplementary demands is not about welfare. It is a story of misplaced priorities, corporate comfort, fiscal confusion and political revenge against opposition states. It reflects a union government that protects monopolies, neglects farmers, abandons fishermen, underfunds health, insults workers. Thank you. Srimati Pratibha Dhanorkar. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 2025-26च्या पुरवणी मागण्यावरती चर्चा करण्याकरता मी आपल्यासमोर उभी आहे आणि अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विषयाकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छिते की कृषी विभागाअंतर्गत
CCIचा जो कापूस खरेदीचा विषय आहे त्याच्यात जाचक अटी शासनानं घातल्या आहे. आपण बघितलं असेल की कापसाची उत्पादकता ही 13 ते 20 क्विंटल प्रति हेक्टर असताना तर प्रत्यक्षात आपण पाहिलं असेल की 25 ते 45 हेक्टर ग्राह्य धरून प्रति एकर 2.12 ते 7.69 क्विंटल कापूसची मर्यादा लादली गेली आहे. या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. म्हणून माझी आपल्याला मागणी आहे की ॲज इट इज जे 30 क्विंटल प्रति हेक्टर मर्यादा होती ती 40 क्विंटल प्रति हेक्टरी आपण करण्यात यावी. यात आपण बघितलं असेल की परत त्यासोबतच स्लॉट बुकिंगचा देखील विषय, स्लॉट बुकिंगची विक्री करून कापूस विक्रीची जाचक अट त्या ठिकाणी आपण शिथिल करावी अशी मागणी मी आपल्यासमोर करत आहे. महोदय, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे 2024मध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आणि आपण बघितलं असेल की साधारणतः या वर्षभराच्या काळात जेव्हा महाराष्ट्रात भाजपाचं सरकार यायचं होतं त्यांनी सांगितलं होतं की जसं सरकार येईल आम्ही शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी या ठिकाणी करू. पण आज वर्षपूर्तीचा कार्यक्रम सगळे आमदार आपापल्या मतदारसंघात साजरे करत आहे, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आठवण अजूनपर्यंत त्या ठिकाणी कुठल्याही आमदारांना झाली नाही किंवा सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना झाली नाही. माननीय महोदय, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं बघितलं असेल की 2005 पूर्वी जे प्राथमिक शाळेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना TETची परीक्षा पास करणे हे अनिवार्य केलं आहे. पण 2 वर्षात ही परीक्षा पास न केल्यास अनेक शिक्षक सेवेतून बाद होणार असा नियम त्यांनी या ठिकाणी काढला. माझी आपणास विनंती आहे की 2010 पूर्वी जे शिक्षक सेवेत दाखल झाले होते त्यांना त्यावेळची शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केली होती. आज रोजी TETची परीक्षा व सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केलेली ही जाचक अट आपण या ठिकाणून हटवून 2000 पूर्वी रुजू झालेले जे काही शिक्षक होते त्यांना ही अट शिथिल करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी पाहिलं असेल की शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचा विषय बोलत असताना अतिशय खेदाची अशी बाब समोर येत आहे की 12,19,516 शेतकऱ्यांनी जवळपास आत्महत्या केली. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या ही 8,38,249 आहे आणि अनेक अशा बँका आहे की ज्या बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अंगावरती कर्ज आहे, पण त्या कर्जाचा बोजा शेतकरी अजूनपर्यंत फेडू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहिलं असेल की पीक विमा 1 रुपयात म्हणून चालू केला. पीक विमा 1 रुपयात फक्त नावापुरता राहिला. आज ऑनलाईनमध्ये जर का पीक विमा करायला गेलं तर जवळपास 1700-1800 रुपये हे पीक विम्याच्या पोर्टलमध्ये शेतकऱ्यांना जात आहे. मग 1 रुपयाच्या नावाखाली पीक विमा आपण जेव्हा गावभर दिंडोरा पिटत आहोत तर खरंच 1 रुपयात पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळतो का, याचा देखील विचार आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. ग्रामविकास खात्यावरती बोलत असताना आपण पाहिलं की जलजीवन मिशनचा विषय सगळ्या देशभरात आपण पाहिलं की कामं पूर्ण झाले, पण अजूनपर्यंत केंद्राकडे जे देयक बाकी आहे ते कुठलेही देयक हे जलजीवन मिशनचे अजूनपर्यंत मिळाले नाही. साधारणतः माझ्या एकट्या जिल्ह्याचा विषय केला तर 40 कोटी देयक हे केंद्राकडे जलजीवन मिशनचे आहे. ग्रामविकासच्या रस्त्याची अतिशय वाईट अशी परिस्थिती आहे. PWDचे असतील किंवा 30-54, 50-54 रस्ते असतील. या रस्त्याची दुरुस्ती जर का करायची आहे तर ग्रामविकास खात्याअंतर्गत राज्याकडे अनेक दर्जोन्नतीचे प्रस्ताव 4 वर्षापासून प्रलंबित आहे, पण कुठल्या प्रस्तावावरती निर्णय अजून राज्य शासनाने त्या ठिकाणी घेतला नाही. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा पूर्णपणे कोल बेल्ट म्हणून आहे. कोळशाच्या अनेक खाणी माझ्या मतदारसंघात आहे. पण हे सगळं करत असताना आपण जेव्हा प्लॅनमध्ये असणाऱ्या ज्या जमिनी घेतो त्याच्या आजूबाजूला असणाऱ्या कोणत्या शेतकऱ्यांच्या 10% जमिनी असेल, कोणत्या शेतकऱ्यांच्या 15% जमिनी या सुटल्या गेल्या आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की कोल बेरिंग ॲक्टमध्ये त्या नमूद करून ज्या सुटलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत त्या ठिकाणी संपादित केल्या पाहिजे. आणि या बाबतीत महाराष्ट्राचा जर का विचार केला तर कोल बेरिंग ॲक्टनुसार आपण पाहिलं असेल की आदरणीय पृथ्वीराज बाबा CM असताना फक्त पडीत जमिनीला 7 लाख रुपये, कोरडवाहू जमिनीला 8 लाख रुपये आणि सिंचित जमिनीला 10 लाख रुपये. मागील 20 वर्षात हा रेट अजूनही वाढला नाही. तर जमिनी ज्या संपादित करायच्या आहे किमान 18, 20 आणि 22 अशी या जमिनीचे रेट या ठिकाणी वाढले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आयुध निर्माणीचा सगळ्यात मोठा प्रश्न माझ्याकडे आहे. माझे मिस्टर मागच्या वेळेस खासदार होते, त्यांनी हा प्रश्न उचलला आणि जवळपास 53 लोकांचं समायोजन त्या ठिकाणी झालं. पण आजही त्यातले 23 लोक असे शिल्लक आहे की ज्यांच्या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या पण अजूनपर्यंत त्यांचं समायोजन त्या ठिकाणी झालं नाही. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की ज्या 23 लोक शिल्लक राहिले त्यांचं देखील समायोजन या ठिकाणी आपण केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, जुन्या पेन्शनचा विषय मी आमदार होती तेव्हापासून सतत आम्ही या ठिकाणी घेत आहोत. 2005 पूर्वीचे जे शिक्षक होते अजूनही जुन्या पेन्शनचा विषय त्यांचा केंद्राकडचा अजूनही मार्गी लागला नाही. आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की जुन्या पेन्शनचा विषय देखील या ठिकाणी मार्गी लागला पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय तसाच आहे. जातनीय ओबीसीची जनगणना झाली पाहिजे, ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, ओबीसीचं स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झालं पाहिजे आणि 13 सप्टेंबर 2017 पासून क्रिमिनलची
जी काही मर्यादा आहे ती वाढली नाही, ती मर्यादा कुठंतरी वाढली पाहिजे आणि आरक्षणाची मर्यादा ही 50% आपण हटवली पाहिजे। आणि या सगळ्या मागण्या करत असताना अध्यक्ष महोदय, आपण बघितलं असेल की ओबीसीचं आरक्षण हे आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ज्या निवडणुका आहे या निवडणुकीला समोर जात असताना आरक्षणाचा विषय जोपर्यंत मार्गी लागणार नाही तोपर्यंत या सगळ्या निवडणुकीला आम्ही समोर जाऊ शकत नाही। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारद्वारा सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत 2007 मध्ये विषय तज्ज्ञ व इतर पदावर अनेक उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली, परंतु आज तागायत त्या शिक्षकांना शासन सेवेत सामावून घेतले नाही। असे अनेक विषय प्रलंबित आहे की जे केंद्राच्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून मार्गी लागावे अशी विनंती मी आपल्याला करतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय, जे शेतकरी अनेक वर्षापासून आहे त्यांना कुठंतरी आपण राज्य शासनाला सूचित करून त्यांची संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी करावी अशी आपल्याला मी विनंती करत आहे। धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर विनोद कुमार बिंज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं स्वास्थ्य पर ही बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, पहले जो एनडीए यूपीए की जब सरकार हुआ करती थी तो हमारा स्वास्थ्य पर बजट जो है 20,000 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन आज हमारे सरकार एनडीए की जब सरकार बनी तो हमारा जो है बजट जो है 90,000 करोड़ का पहुंच गया। पहले की तुलना में हम 4 से 5 गुना पहुंच चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जब सबसे ज़्यादा जो है इस देश पर जो है कांग्रेस ने राज किया, हम मेडिकल फील्ड से आते हैं, तो हम जब 98 में जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो पूरे देश में जो है कुल एमबीबीएस की सीटें 2014 का अगर मैं आंकड़ा पेश करूंगा तो पूरे देश में एमबीबीएस की सीटें 51,318 हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी जो है जब से मोदी सरकार बनी है आज हमारे देश में जो है एमबीबीएस की सीटें जो है 1,32,000 के करीब पहुंच गए हैं। उस समय जो है पीजी की जो सीटें जो है 31,000 हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे यहाँ जो है एमबीबीएस की सीटें जो है 82,000 से ऊपर पहुँच गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से यूपी से आता हूँ। उस समय जो है पूरे प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और उसमें जो है 650 सीटें हुआ करती थी, लेकिन आज जो जब हमारी डबल इंजन की सरकार बनी तो हमारे प्रदेश में जो है 78 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 12,325 सीटें हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में, तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। मैंने जब से आयुष्मान कार्ड लागू हुआ है, मोदी जी जब से जो है आयुष्मान कार्ड लागू किए हैं तब से वो गरीबों का जो 10 साल 15 साल 20 साल से चलने में असमर्थ रहते थे, जिनका कुल्ला खराब हो जाता था, घुटना खराब हो जाता था, स्पाइन खराब हो जाती थी, नहीं चल पाते थे, वो गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते थे। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड लागू हुआ है, जब उनका हम लोग इलाज कर देते हैं, जिनका घुटना बदल जाता है, कुल्ला बदल जाता है, जब वो चलता है तो आकर हमसे बोलता है कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बोलता हूँ कि हमको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देने की जरूरत है, जिनके वजह से आप जो है चलने लायक बन गए। हम लोग तो केवल माध्यम है। अध्यक्ष महोदय, पहले जो है गरीब आदमी जो है बीमारी के कारण मर जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जो सोच और दिशा के कारण जो है आज गरीबों के पास जो है जो 5 लाख का कार्ड जो उनके पास इलाज के लिए मिलता है, तो उसके लिए एक जो है संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। जब कोई मरीज हम लोगों के पास हमारे पास आता है तो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं पूछता हूँ क्या मोदी जी का कार्ड आपके पास है कि नहीं, तो बोलता है कि मैं मोदी जी का कार्ड है। तो मैं बोलता हूं कि आपको गरीब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ लोगों के आंसू पोंछने का काम करते हैं। अब इस कार्ड को निकालो और सम्मान के साथ बोलो कि डॉक्टर साहब इसमें जो है 5 लाख का जो है कार्ड है, जिसमें हमारा इलाज का जितना खर्च लगता है उतना जो है आप ले लीजिए और बचा हुआ दूसरे बीमारी के लिए छोड़ दीजिए। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। अध्यक्ष महोदय, पहले जो है डायलिसिस के लिए जो है डायलिसिस के लिए
हम लोग अगर प्रदेश में बात करते थे तो जहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे वहीं पर डायलिसिस हुआ करती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि आज 75 के 75 जिले में डायलिसिस होती है। तो गरीबों के लिए जो है एक जो है आधार बन गया। और मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले जो नारे सब लगाते थे, लेकिन फर्क नियत और नीति में पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के नियत और नीति में बहुत फर्क है। आज हमारे पास जो है गरीबों के लिए जो है चाहे राशन हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, सब गरीबों के लिए जो है एक जो है आधार बन गया और हर आदमी जो है सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल गया। पहले जो है हमारे पास जो है अध्यक्ष महोदय जन औषधि केंद्र जब बने, इस समय बने, तो कम से कम जो है 33,000 करोड़ का लोगों को फायदा हुआ। तो मैं अध्यक्ष महोदय को यही कहना चाहूँगा कि जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उस अगर हमें आयुष्मान कार्ड में थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे 6 यूनिट पर ही उनको आयुष्मान कार्ड मिलता है, तो मैं इस सदन के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो है जो गरीब है उनके सबके लिए लागू हो, क्योंकि 6 यूनिट जिसका नहीं होता है तो उनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता है, जिसके कारण उनका इलाज नहीं हो पाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री टी उदय श्रीनिवास। Honorable Speaker, sir, I rise to speak on the supplementary demand for grants for year 2025 and 2026, through which the government is seeking approval for additional expenditure of 1,32,000 crores, of which the actual cash outgo will be about 41,455 crore. These allegations reflect important national priorities, but they also highlight areas where urgent constituency level needs deserve attention. Sir, I would first like to speak on the Ministry of Education. The supplementary demands include 1,303 crore for additional support for higher education, including capital assets for central institutes and PM One Nation, One Subscription initiative. This enhanced spending is welcome and will strengthen learning and research across the country. In my constituency, however, a basic requirement remains unresolved. At Rangaraya Medical College, Kakinada, the construction of students' hostel has stalled completely. Only 35% of PG ladies' hostel and 15% of PG's men's hostel have been completed, while both UG hostels remain stuck at basement level and require financial sanction of 22 crores for a full G+4 structure. These hostels are essential for medical students' accommodation and for expanding PG seats. With fresh capital allocations now available, I request the Ministry kindly support RMC in completing these long pending works. Honorable Speaker, I now turn into the Ministry of Communication. The supplementary demands speak an additional 37,014 crores for the telecom sector, covering infrastructure, digital monitoring systems, and major national digital projects. The significant investment will strengthen India's digital backbone. All at the same time, sir, I have already submitted a detailed representation requesting 10 new 4G towers in critical uncovered pockets of Kakinada district. This includes rural, tribal and coastal areas such as Eleshwaram, Korukonda, Gandepalli, Kottapalli, Peddapuram rural and Uppada coast. All of these continue to face serious connectivity gaps. With such a large capital outlay being sought, I urge the government to also address these constituency level issues so that the digital access reaches every household in this region. Honorable Speaker, sir, the supplementary demands strengthen national capacity, but then can also help resolve long-standing needs at the ground level. I humbly request the government to consider these two specific demands from my constituency. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you. Thank you. Next speaker, Sri Raja Ram Singh. Next, Kumari Pranida Shinde ji. For giving me an opportunity to speak on the supplementary demands for grants 2025-26. मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ये कह के कि जो सत्ता पक्ष में है वो 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं और इसका हर जाना देश को भुगतना पड़ रहा है। हर इलेक्शन के पहले लोगों को रिझाने के खातिर अनप्लान्ड पॉपुलिस्ट स्कीम्स के तहत पैसे बांटे जाते हैं और देश और राज्यों पर कर्जा बढ़ते जा रहा है। आज देश में पैदा
होने वाला हर एक बच्चे के सर के ऊपर पैदा होते ही करीब 1.25 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। ये है इस बीजेपी सरकार की देन। स्पीकर साहब, मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारे महाराष्ट्र में जो फ्लड्स आए, जो बाढ़ आई, उसके बारे में। शर्मनाक चीज़ ये है कि अभी तक हमको पता नहीं कि केंद्र शासन ने महाराष्ट्र सरकार को पैकेज डिक्लेयर किया है कि नहीं। जब बाढ़ आई, जब बारिश हुई, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक टीम भेजी गई थी महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री कहते हैं कि उनको अभी तक पैकेज मिला नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक प्रपोजल भेजा नहीं है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रपोजल भेजना नहीं चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र के किसानों को अन्याय करके अभी तक पैसा देना नहीं चाहती है। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें एक स्टेटमेंट अपेक्षित है कि एग्जैक्टली कितना पैकेज, कितने पैसे महाराष्ट्र के किसानों को मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र का किसान आज सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कर्जे का बोझा उसके सर पे चढ़ रहा है। हमने मांग की थी कि हर एक किसान को 50,000 रुपीस पर हेक्टेयर मिले, लेकिन जिस तरह सीएम ने पैकेज अनाउंस किया, जोक हो रहा है, महाराष्ट्र के किसान का मजाक उड़ा रहे हैं। स्पीकर महोदय, एक किसान के खाते में सिर्फ 6 रुपए जमा हुए, सिर्फ ओनली 6 रुपीज वर डिपॉजिटेड इन अ फार्मर्स अकाउंट। और ऐसे शर्मनाक तरह से मजाक महाराष्ट्र के किसानों का सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। हमने मांगे थे 50,000 रुपए हेक्टेयर, वो तो नहीं मिले। फिर हमने मांगा था कि जो नदी के किनारे जो गांव है उसका पुनर्वसन होना चाहिए, वो रिहैबिलिटेट होने चाहिए, क्योंकि हर वक्त जब बाढ़ आती है तब ये पूरे के पूरे इनका जो पूरा संसार जो होता है वो उनके आंखों के सामने बह जाता है। कम से कम 3 या 4 साल लगते हैं हर एक किसान को, जब उसकी आंखों के सामने उसका खेत बह जाता है 3 या 4 साल लगते हैं उभरने को और वापस उसमें उसकी फसल जो है वो डालने को। इसके लिए इसके क्राइटेरिया अलग होने चाहिए। खेत जो बह गया है या जमीन जो इरोड हो गई है, इसके क्राइटेरिया अलग होने चाहिए। लेकिन सरसकट हमने तब मांगा था कि वेट ड्राउट डिक्लेयर हो, लेकिन वेट ड्राउट डिक्लेयर नहीं हुआ। वेट ड्राउट अगर डिक्लेयर होता तो किसानों के कर्ज माफ हो जाते, तो स्कॉलरशिप्स जो मिले हैं बच्चों को, एजुकेशनल लोन्स जो मिले हैं वो माफ हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एड नहीं दी की। स्पीकर महोदय, जब अकाउंट में पैसा जमा होता है तो केवाईसी करना पड़ रहा है किसानों को। साल में 4 बार केवाईसी करना पड़ रहा है, साल में किसानों को 4 बार साबित करना पड़ रहा है कि वो मरे हुए हैं या जिंदा है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। मैं ये मांग कर रही हूँ कि केवाईसी का जो क्राइटेरिया है, आधार लिंक का जो क्राइटेरिया है, वो कट होना चाहिए, वो रद्द होना चाहिए और 4 बार साल में केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मुझे ये कहना चाहती हूँ कि जब सैटेलाइट जो होती है हर एक मंडल में, उसमें रेनफॉल रिकॉर्ड होता है और सैटेलाइट्स ऐसे जगह बिठाई है, पेड़ के नीचे सैटेलाइट बिठाए है। पूरे मंडल में 65 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन क्योंकि वो जो सैटेलाइट है वो पेड़ के नीचे बिठाई गई है, वो रिकॉर्ड ही नहीं करती और कहते हैं कि 0 रेनफॉल हुआ है और इसीलिए उस मंडल को वो जो पैकेज है उसमें बिठाया नहीं जाता है और उस मंडल के में जितने गांव आते हैं उन गांवों के सब किसान इससे वंचित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस बार महाराष्ट्र में हुआ है किसानों। और सबसे शर्मनाक बात ये हुई है कि हाल ही में सीएम रिलीफ फंड जो होता है उसमें कोई अपना पेंशन देता है, अपनी सैलरीज देता है। सीएम रिलीफ फंड में महाराष्ट्र के किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए थे, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए में से महाराष्ट्र के किसानों को सिर्फ 5 मिनट्स प्लीज
महाराष्ट्र के किसानों को 2 minutes. सिर्फ 75,000 रुपए, सिर्फ 75,000 दिए गए। इतनी मतलब बाकी का पैसा सीएम रिलीफ फंड से गया कहाँ है? सर सिर्फ 3 पॉइंट्स में कहना चाहती हूँ। मैं पीएस आवास योजना पे आना चाहती हूँ। मैं ये मांग करती हूँ कि पीएम आवास योजना की जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15,000 की, उसमें वो सैंड भी नहीं खरीद सकते हैं। मेरी ये मांग है कि वो 15,000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत से पीएम आवास के तहत पेपर पे आता है कि इतने घर मंजूर है, लेकिन गांव में गांवठान जमीन नहीं होने के कारण अभी तक एक भी घर पीएम आवास, ये सिर्फ फर्स्ट फिगर्स है जो पेपर में आते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि दीन दयाल उपाध्याय में जो 1 लाख की जो क्वांटिटी है वो अमाउंट है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 लाख में वो जमीन खरीदी नहीं कर सकता। सर प्लीज, और मैं रेडी रेकनर के हिसाब से ये नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कहती हूँ पीएम ग्राम सड़क योजना, सर जस्ट लास्ट, पीएम ग्राम सड़क योजना में पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में एक भी रास्ता नहीं गया है, क्योंकि 2011 के सेंसस के तहत वो ले रहे हैं। 2011 के सेंसस के बाद अगर सेंसस नहीं कर, क्योंकि 2 विलेजेस कनेक्ट नहीं हो सकते सर। दिस टाइम फ्लड्स में सर बड़े बड़े हाईवे करने से अच्छा है कि 2 गांव को जो रास्ते कनेक्ट होते हैं वो सर लास्ट सर वो होने चाहिए। मैं ये मांग करती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में जितने भी रास्ते बह गए हैं उनके लिए यहाँ से एक ऑडिट होके उनके लिए फंड डिक्लेयर सर होना चाहिए। सर जल जीवन मिशन अंडर जेजेएम सर कमिटी हैज बीन लास्ट 2 minutes सर प्लीज सर जल जीवन मिशन देयर इज अ मेजर करप्शन इन महाराष्ट्र। इसके वजह से कमिटी ने 46% प्रपोज किया है कट, सेंटर का कट महाराष्ट्र में कट, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान, उतना बड़ा वहां पे करप्शन हुआ है। सर सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में बालभद्र मंत्री, no, you conclude with the final sentence, please. Okay, sir, I'm finishing. Sir, sanitation workers को पहचाना नहीं जाता है। Sanitation workers, as per Namaste scheme, 0 provision has been made. I urge कि sanitation workers के लिए बढ़ाना चाहिए। And sir, DLCC में कलेक्टर को अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे बोलने पे मौका दिया। महोदय, हम सांसदों को और पार्लियामेंट को सभी को हमारा जो ड्यूटी है, काम है, उसमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम में से बजटिंग करना, इसमें हिस्सा लेना और कुछ समझना सीखना भी है। महोदय, मुझे पहले बार बजट के ऊपर कुछ बोलने का मौका मिला है, धन्यवाद आपको। महोदय, हम अगर देखेंगे 2014 और पहले 2014 के पहले और बाद का, जब से मोदी जी आए बजटिंग का सिस्टम को जो सिस्टमेटिक तरीके से इतना सुंदर तंदुरुस्त किए हैं कि इसमें रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ खर्चा भी बहुत पारदर्शी तरह से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सक रहा है। महोदय, मुझे याद है, मैं तो 16th लोकसभा में था, शायद जब उस टाइम का पहला बजट 16 लाख करोड़ के आसपास था। आज वो बढ़ के बीते 11 साल में 50,65,000 करोड़ 345 करोड़ का बजट हुआ है हिस्सा। और बीते साल महोदय जैसे बजट होने के बाद सप्लीमेंट्री बजट करने का जो व्यवस्था रहा है, बीते सरकार ने हर सेशन में एक सप्लीमेंट्री बजट ग्रांट्स का सप्लीमेंट्री डिमांड पर चर्चा करने का और उस पास करने का व्यवस्था था। उससे होता था क्या महोदय कि ना तो कोई क्लियर तरीका था कि क्या करना है, कैसे खर्चा किस विषय पे करना है, पर उसको मोदी जी ने हटा के साल में 2 सप्लीमेंट्री लाए हैं बजट पर ग्रांट डिस्कशन करने के लिए, पास करने के लिए, वो इंटर सेशन में और जो बजट सेशन में है। इससे हुआ क्या है, इसके साथ साथ और इतने सारे लाए हैं। पहले बजट देने का, पैसा एलोकेशन करने का जो तरीका था कि करीब 60,000 अकाउंट में पैसा जाता था और कौन से अकाउंट में कितना है कि स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट, इतना मिक्सअप था कि सेंटर को भी मॉनिटरिंग करने में बड़ा दिक्कत जाता था। आप ही जो सिस्टम किए हैं मोदी जी ने, जो PMFS ई कुबेर के इंटरफेस के माध्यम से जो 60,000 करोड़ अकाउंट के बदले आज के दिन में सिर्फ लगभग 894 करोड़ अकाउंट में ही पैसा का ट्रांजैक्शन होता है, रियल टाइम में होता है। पहले का जो बजटिंग था, पैसा ट्रांजैक्शन का सिस्टम था,
कि उसमें जाके पैसा जमा रहता था और पैसा वेस्ट जाता था। ये जो रियल टाइम बजटिंग के सिस्टम, रियल टाइम डाटा फंड ट्रांसफर के चलते करीब 15,000 करोड़ का ये फायदा हुआ है ये गवर्नमेंट को। महोदय, मुझे याद है, मैं तो सांसद नहीं था, जब मनमोहन जी का सरकार था, हमारे ओडिशा से कुछ सांसद आए थे ओडिशा के लिए विशेष कुछ मांग करने के लिए। उन्होंने ये जवाब दिया था कि पैसा क्या पेड़ में फलता है क्या? महोदय, आज मोदी जी पेड़ में फला उगाते हैं, कहाँ से उगाते हैं पता नहीं, पर कोई भी स्कीम किसी भी वजह से, पैसा के कमी के वजह से तो कभी भी कोई स्कीम नहीं रहा। मुझे याद है 2004 से 14 में हमारे एरिया का प्रधानमंत्री सड़क योजना, बिजली योजना, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है ग्रामीण एरिया का विकास के लिए, पूरा ठप पड़ा था। आज के दिन महोदय, ये जो बजट का आंकड़ा में बताया, ये तो बढ़ा ही बढ़ा है, पर मेरे एरिया अगर आप देखेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो बीते 11 साल में करीब 4,000 किलोमीटर का रास्ता तैयारी हुआ है महोदय। मेरे एरिया में एक भारतमाला एक्सप्रेस बन रहा है जो विशाखापट्टनम से रायपुर कनेक्ट कर रहा है, काम चल रहा है, उम्मीद है कि आने अप्रैल मई तक खत्म हो जाएगा महोदय। जहां 14 घंटा का ट्रैवलिंग टाइम था वो घट के, बल्कि है अभी, वो घट के हम लोग 6 घंटा में कवर कर लेंगे, जो 600 किलोमीटर से ज़्यादा को। ये महोदय, ये संभव तब हो पा रहा है जो बजट में इतने सारे सुधार लाए हैं। ये विरोधी वाले बोलने के लिए तरह तरह के बात बोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता तो जान रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर, जमीन स्तर पर हो क्या रहा है। मेरे जैसे पिछड़े एरिया में महोदय, जहां रेलवे लाइन नहीं के बराबर थी, मतलब वो करीब 40-50 किलोमीटर रेलवे लाइन एक्रॉस मेरे क्षेत्र में पास होने के अलावा 2 जिले में मलकानगिरी, नवरंगपुर कुछ भी नहीं रहा। लेकिन महोदय देखिए, बीते ये 11 साल में 2016-17 में पहली बार सैंक्शन किए और अभी 24 में सैंक्शन किए हैं। कुल मिला के भद्राचलम से मलकानगिरी, जयपुर, नवरंगपुर, जूनागढ़ 460 किलोमीटर का नया रेलवे लाइन महोदय सैंक्शन हुआ है, जो स्वाधीन भारत में समझ लीजिए सेकंड लॉन्गेस्ट न्यू रेलवे प्रोजेक्ट है। पहला लॉन्गेस्ट अगर कहेंगे हम तो मैंगलोर से मुंबई था 750 किलोमीटर का। मेरे जैसे पिछड़ा एरिया को इतना लंबा लाइन का रेलवे प्रोजेक्ट महोदय, हम खुद भी सपने में नहीं सोचे थे कि ये सैंक्शन होगा। तो ये कैसे संभव हो रहा है? संभव इसलिए हो रहा है कि मोदी जी को जो संस्कार सभी में, बजटिंग में, एक्सपेंडिचर में और प्लानिंग में, रेवेन्यू में, इतने सारे महोदय अभी देख लीजिए कि जब लिमिट, इनकम टैक्स का लिमिट 12 लाख बढ़ा देने के बाद भी जीएसटी में रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन में रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। तो महोदय, बहुत कुछ मोदी जी ने जो किए हैं, समय तो बहुत कम है, पर बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो सप्लीमेंट्री बजट पे लाए हैं हमारे आदरणीय अर्थमंत्री श्रीमती सीतारमण जी, इसको बिना द्विधा से, बिना कोई बहसबाजी किए, विरोधी का बात सुने बिना इसको पास कर दिया जाए महोदय। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर इसमें एडिशनल मांगा है। विशेष करके मैं कंक्लूड करने बोलूंगा कि एक्स्ट्रा जो मांगा है करीब 1,32,000 करोड़ का, उसमें से महोदय 90,000 करोड़ तो आपका जो सेविंग से, रीएडजस्टमेंट से, अदरवाइज ये डिसिप्लिन, ये पैसा ऐसे ही खर्च नहीं होता और पड़ा रहता, जो अभी होने वाला है। और करीब 41,000 करोड़ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रहा है। उसमें मोटा मोटी जो एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है केमिकल फर्टिलाइजर में, पेट्रोलियम में, होम अफेयर्स में, फाइनेंस में, एजुकेशन में। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं पूरा अनुदान मांग 25-26 के विरोध में अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान तब लाए जाते हैं जब कोई असाधारण परिस्थिति हो, लेकिन जब ये प्रक्रिया हर वर्ष नियमित अभ्यास बन जाए तो ये साफ संकेत है कि बजट अनुमान कमजोर है, योजना निर्माण में गंभीर कमी है। सभापति जी, इतने बजट आवंटन के बाद भी किसान, मजदूर, शोषित पीड़ित वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल के लिए जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी उससे 2-4 होना पड़ता है। और अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट संस्थानों की तरफ जाना पड़ता है, इलाज चाहिए तो प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, शुद्ध पानी चाहिए तो जल जीवन मिशन से पानी नहीं मिलेगा, बोतल बंद पानी खरीदना पड़ेगा। सभापति महोदय, हमने इस सदन में भोर के 3 बजे तक भी चर्चा होती देखी है। आखिर वो दिन कब आएगा जब किसानों की समस्याओं पर, बेरोजगारों की समस्याओं पर, नौजवानों की समस्याओं पर भी भोर के 3 बजे तक ये सदन चले।
आज सबसे ज्यादा कोई संकट में है तो इस देश का किसान अन्नदाता संकट में है। अव्वल उसे उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिलता। इसी सदन में उर्वरक मंत्री ने हमारे सवाल के जवाब में कहा था कि यूरिया का कोई संकट नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सभापति जी इसी उत्तर प्रदेश में पिछले सदन में उन्होंने आश्वस्त किया था, लेकिन इस सत्र में भी किसानों को यूरिया नहीं मिली है, उसे लाठियां खानी पड़ी हैं। सभापति जी, चाहे केला का किसान हो, इस बार हमारे क्षेत्र का धौरारा का किसान 100-200 रुपए में केला बेचने पे मजबूर हुआ है। और अजब बात तो यह है कि फसल बीमा योजना में भी केला नहीं आता है। चाहे इस बार धान के किसान हो, उनका धान नहीं लिया गया एफआरके के नाम पर कि एफआरके चावल मिल मालिकों को उपलब्ध नहीं हुआ तो वो चावल के लिए धान नहीं खरीद रहे, इसलिए मंडियों में धान नहीं बिक पाया। सबसे बड़ी समस्या सभापति महोदय, किसान अगर पराली जला दे तो सैटेलाइट से देख करके उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है, उसका इतना शोषण होता है, उसके ऊपर जुर्माना वसूला जाता है। सभापति जी, जब फसल चौपट होती है, आंधी तूफान बाढ़ आती है, तब सैटेलाइट सरकार की कहां चली जाती है? तब तो लेखपाल जाता है, एसडीएम जाते हैं और जो जितना सुविधा शुल्क दे देता है उस हिसाब से पता नहीं सैटेलाइट उस समय कहां चली जाती है। पराली नष्ट करने के लिए ना किसी यंत्र का प्राविधान किया गया। मैं मांग करता हूं सरकार से, जब तक पराली नष्ट करने का कोई इंतजाम सरकार न करे तब तक 2000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम किसानों को देने का काम किया जाए। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए की थी। आज उत्तर प्रदेश में किसी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाए तो केवल किसान बीमा दुर्घटना योजना ही उसका सहारा है। गन्ना किसानों को उसकी कीमत नहीं मिल पा रही, और पर्ची जब मानवर शुरू होती है तो चाहे अरली फसल हो चाहे पेड़ी हो, सबकी अभी समय है सर, वो सबकी एक साथ पर्ची नहीं आती, जिससे गेहूं बोने के लिए किसान परेशान रहता है, इसलिए पर्चियां एक साथ ली जाए। सभापति महोदय, आज करोड़ों नौजवानों के हाथ खाली हैं। जब तक रोजगार नहीं दे सकते तब तक कम से कम 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाए। नौजवान जब रोजगार मांगने जाता है तो उसे लाठी खानी पड़ती है, पेपर लीक हो जाता है। और मैं एक बात विकलांग दिव्यांग साथियों के बारे में भी कहना चाहता हूं, ये सरकार नाम बदलने में बहुत माहिर है। विकलांगों का नाम बदल करके इन्होंने दिव्यांग कर दिया, लेकिन उनकी सुविधा बढ़ाने के नाम पर क्या किया? मैं उनकी 3 गुना पेंशन की मांग करता हूं। और ये बजट बढ़ाइए, दिव्यांग विभाग का मंत्री जी भी परेशान है, 80% की वैधता हटाइए, सबको मोटराइज साइकिल दीजिए, तब दिव्यांग नाम रखने का आपका सफल होगा। और एक सभापति जी और बात, दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो पोस्टमार्टम हाउस जिले में केवल जिला मुख्यालय पर एक होता है। आप बजट दीजिए, मैं मांग करता हूं हर एक तहसील में पीएम हाउस बनाया जाए। पोस्टमार्टम हाउस नहीं बनाते, जिसके यहाँ दुर्घटना हो जाती रात रात वो पड़ा रहता है। और आखिरी बात कह करके सभापति महोदय, ये जो हम लोगों की सांसद निधि है, आप विकास चाहते ही नहीं हो विकास करना, आपने सांसद निधि नहीं बढ़ाई बल्कि सांसद निधि आपने कम कर दी। कैसे कम कर दी? 2010 में 5 करोड़ थी, जीएसटी लगा दी, अब 1 करोड़ जीएसटी कंटिजेंसी काट के बची 4 करोड़। 2010 में 5 लाख में 100 मीटर सीसी बनती थी, अब 10 लाख में 100 मीटर बन रही है, यानी हमारे पास सांसद निधि घट करके 2 करोड़ रुपए रह गई। सभापति जी, पीएमजीएसवाई एक, आखिर हम सांसदों के पास विकास के लिए हम करें क्या? जनता विकास के लिए कह रही है, और एक पीएमजीएसवाई सहारा था, जरा पता लगा लेना। हम तो अपने जिलों का जानते हैं, सीतापुर, लखीमपुर, एक सड़क भी पीएमजीएसवाई के नए मानक, और मैं यह आरोप लगाता हूं कि सरकार ने जानबूझ करके पीएमजीएसवाई के ऐसे मानक बना दिए कि एक भी सड़क पीएमजीएसवाई में नहीं आ सकती। इसलिए सभापति महोदय, सांसद निधि को बढ़ा करके 25 करोड़ रुपए की जाए, साथ ही साथ पीएमजीएसवाई में कम से कम 100 किलोमीटर सड़क बनाने का अधिकार सांसदों के प्रस्ताव पर दिया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अज़ादुद्दीन ओवैसी जी। Sir, thank you, sir. Sir, the Ministry of Chemicals and Fertilizers are the single largest driver of the supplementary demand for grants, sir.
and they're seeking additional 31,066 crores, sir, a staggering 16.39 jump over original allocation. In the last fiscal year also, sir, the Parliament approved 20,000 crore through 2 batches of supplementary grants. Sir, in the budget estimates of 24-26, fertilizer subsidy was budgeted at 1.67 lakh crore. Now they are seeking additional 31,000 crores in allocations through SDG, sir. In my opinion, this is not budgeting, it's firefighting, sir. Sir, despite all the rhetoric of Atmanirbhar Bharat, India still imports over 25 to 30% of urea, 50-60% for DAP and 100% of potash, sir. This is a dangerous over-reliance that leaves Indian farmers at the mercy of global suppliers, sir. And great example, sir, of the dependency came last year when China imposed restriction on fertilizer exports, severely impacting India's DAP and urea supply. Now, these restrictions by China led to a 75% drop in DAP imports from China in the first half of financial year 25, sir. Nearly 30% of India's urea imports in 2024 came from China, and making our country vulnerable to China's trade policies, sir. Sir, even raw materials like phosphoric acid, ammonia from China, which means that even domestic fertilizer production is affected by Chinese policy decision. My question to the government is, how did the government allow such a critical sector to be held hostage by China? Sir, the urea imports are regulated by government. In financial year 25, it stood at 43.16 lakh tons. Now, in 2023, sir, the Union Minister for Chemical and Fertilizer said it is our attempt to end import dependence on urea by 2025. Where is this promise? Is it also another classic BJP promise which will never be fulfilled? Sir, now I am quoting from the latest media report that public sector banks write off 6.15 lakh crore in 5.5 years, sir. The Finance Ministry insists that this isn't a waiver and that recovery mechanism like SARFAESI, DRT, civil courts, IBC will recoup the dues, sir. Now, actual figures, if you see, sir, tell a different story by public sector banks. They have recouped only 1.6 lakh crore of the write-off, sir. Barely a quarter of what has been written off. If the objective was to improve the health of our banking system, we must ask how effective have these recovery mechanisms truly been, sir. Reducing NPAs on paper through write-offs cannot be counted as substantive recovery. Public deserves a clarity on real recoveries and accountability for loan origination and monetary failures. Sir, in financial year 2015 to 24, Indian commercial banks wrote off around about 12.3 lakh crore with 9.9 lakh crore in the past 5 years, sir. Now, what is happening over here? Thirdly, sir, if you see the fake notes rose by 37% in the 500 rupees note rose by 37% in financial year 2025. In financial year 2024, sir, 500 rupees counterfeit notes detected were 85,711. In financial year 2025, it has come to 117,722. 200 rupees counterfeit notes in 24, it was 28,672. In financial year 32,660. What is this government doing? And because of all these counterfeit notes, you have seen Pahalgam happening, you have seen Delhi happening. Is this your nationalism that you cannot control it? 500 rupees notes, 200 counterfeit notes have increased, sir. Yes. Sir, lastly, sir, on minorities, sir. In 23-24, sir, 3,000 crore was the B. This government, sir, ministry surrendered 2,000 crore, barely utilizing the funds. The same playbook is followed in 24-25, where allocation was 3,183 crore. It has been slashed to 1,681 crore. In 25-26, sir, the budget for minority ministry was 3,350 crore, which is 166 crore more than 3,1834 of last year. Again, what you have done is you have cut the budget. Pre-matric scholarship, sharp decline from 433 crore in 23-24 to 326.16 crore in 24-25. Now it is 195.70 crore. Pre-matric, the highest dropout rate in India are the Muslims. Please conclude. So I am concluding, sir. Actual spending is even lower. In 23-24, only 95.80 crore utilized, 90 crore released in 24-25. Merit come means the same thing, sir. Sir, this PM-JVK scheme, I'm concluding, sir. PM-JVK scheme, it was specifically targeted for minorities. What this government has done, they have made a universal scheme. They have universalized it. Now this whole fund is being spent on areas where minorities are not there. And that too, sir, this money has been restricted. So I demand that the minority ministry
funds for pre-matric, post-matric, merit cum mean should be released immediately, and the unit cost has not been increased, sir. Sir, thank you. Last point, sir. Last point on Poshan, sir. On PM Poshan scheme, the ministry said, I'm concluding, sir, 12,500 crore remains the same budget, sir. Sir, the honorarium to cook come helpers is rupees 1,000 a month. Please. From last 10 years, it has not been increased. I demand it should be increased, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Papu Yadav ji. महोदय धन्यवाद। सरकार कहती है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि अमेरिका इनके अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप भी इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। वैश्विक तौर पर ये 3 से 4 दिनों के अंदर 15-16 बिलियन डॉलर की गिरावट आई, 15-16, और फॉरेन रिजर्व जो घटा वो कंप्लीट रूप से घटा है। विदेशी मुद्रा 703 बिलियन से घटकर 687 बिलियन हो गया। आरबीआई को रुपया बचाने के लिए डॉलर बेचने पड़ रहे हैं इनके। अब ये हम इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि इनको पता नहीं मुद्रा प्रबंधन विफलता सबसे क्रूर आर्थिक नीति होती है जो भारत की के लिए और आम आदमी के लिए सबसे बड़ा बोझ है। इनका खामियाजा सबसे ज्यादा गरीब पर भुगतना पड़ता है सभापति महोदय। दूसरी तरफ ये सीधा टैक्स नहीं लगाते हैं, ये महंगाई के द्वारा टोटल पैसा ले लेते हैं। सीधा टैक्स की बात करते हैं कि मैं टैक्स नहीं लगा रहा हूं, लेकिन महंगाई के द्वारा टोटल पैसा भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों में 120 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास और गरीब है उसके पैसे वो ले लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि महंगाई पर इनके लिए क्या व्यवस्था है, ये पहले ये बता दें। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, दुनिया जब बहुत आगे बढ़ रही है, एआई की रफ्तार जब सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे संसदीय क्षेत्र जिसमें मैं चाहता भी हूँ पूर्णिया और पूरे बिहार और भारत में कुछ पॉइंट जो बाकी देशों में सफल हुए हैं, पैसा सीधा नहीं प्रोजेक्ट के लिए मिले। जो ग्रांट है यूरोपियन यूनियन में कहता है कि वो सीधा पैसा नहीं देते, वो स्थानीय संस्थाओं को अच्छे और पक्के एआई ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट के अनुदान देते हैं और यहीं से वो कैसे सिखाएगा सीखेगा ताकि हिसाब सही रहे, आम आदमी और गांव के बच्चों पर इसका ये हुनर बढ़े। हर एरिया में एआई ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल एआई हब्स, कनाडा की तरह हमें हर एरिया में स्थानीय कॉलेज या स्कूल को अपग्रेड करने के लिए कंप्यूटर और डिवाइस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे बल्कि गांव कस्बे बच्चों को मिले, इसमें सबको बराबर का मौका मिलेगा। सिखाओ वो जो इलाके में काम आए। लोकल जो कंजर्वेशन है, मान लीजिए जैसे सर प्रोसेसन एग्रीकल्चर सिखाने की बात कई बार एआई के द्वारा हुआ। अगर कोई तटीय इलाका है जो मछली पकड़ने या समुद्री डेटा एआई सिखाओ के तहत यूनेस्को में कहता है स्थानीय जरूरत हिसाबों से सीखना चाहिए, इससे ट्रेनिंग काम आएगी और बच्चों की जल्दी नौकरी मिलेगी। पहले टीचरों को पक्का करो, प्रायोरिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग। एआई सिखाएगा कौन? हमारे पास एक्सपर्ट टीचर नहीं है, इसीलिए स्थानीय शिक्षकों एआई एक्सपर्ट बनाने के लिए खर्च होना जरूरी है। एशियन देशों ने भी यही किया है। क्वालिटी अच्छी, उद्योगपति मतलब मैंडेट इंडस्ट्री पार्टनरशिप, सरकार को यह शर्त रखनी चाहिए कि स्थानीय उद्योग कंपनी को भी उसमें थोड़ा पैसा लगाना होगा। बच्चों को मेंटरशिप देनी होगी सीधे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के तहत। इसीलिए मेरा डिमांड इसमें यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र निर्वाचन में एआई डिजिटल स्किल स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए किसानों को एआई टूल्स से फसल प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, एसएमईएस को डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एआई आधारित बिजनेस टूल्स पर शिक्षण और महिलाओं और बच्चों को एआई कोडिंग और डिजिटल साक्षरता, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले लिया है। समाप्त कीजिए। मैं समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण पर इनके लिए और पानी पर कोई बजट नहीं होता। जल मिशन योजना हमारे मित्र कह दिए, सब कहते हैं। प्रदूषण, दिल्ली का एक बच्चा हमसे कहा कि मेरा पढ़ाई ऑनलाइन कर दीजिए, हमको स्कूल ना जाना पड़े, नहीं तो सारे बच्चे मर जाएंगे। प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं। पानी 90% बीमारी वाटर के लिए है, वाटर से इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी चीज,
गरीब के लिए लगातार सरकार मनरेगा जब पर बात हो रही थी ये मजाक बना रहे थे। अब नाम बदलने में ये माहिर हैं, लेकिन मनरेगा का बजट और बिहार में घटाते जा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं खत्म कर रहा हूँ, गरीबों को जो 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी, खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाएगी। गरीबों को जो 5 डिसमिल जमीन, 2 मिनट सर, 2 मिनट, 30 seconds, जो जमीन देने की बात थी सर, उसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार बजट में लाए और गरीबों को। छात्र में क्या होता है सर, मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ, 2 मिनट में सर, 30 सेकंड से ये क्या करते हैं, एग्जाम में 500 रुपया लेते हैं और 100 रुपया उस पर टैक्स लगा देते हैं, जीएसटी। छात्र के फॉर्म भरने के लिए मात्र 100 रुपया लिया। अंत में कोसी, अंत में सर, कोसी सीमांचल के लिए मैं विशेष पैकेज, मक्का और मखान पर कम से कम 10-10 फैक्ट्री, हाई डैम और विद्युत परियोजना के लिए। धन्यवाद पप्पू यादव जी, हनुमान बेनीवाल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बेनीवाल जी। शुरू करिए। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मुझे समय दिया। सभापति महोदय, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि सरकार ने जो भी घोषणाएं, जहाँ चुनाव होते हैं जिन राज्यों के अंदर, वहाँ अतिरिक्त बजट की घोषणा भी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2014-19-24 के अंदर राजस्थान ने आपकी सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस राजस्थान को कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय जुमलों के। विशेष राज्य का दर्जा देने की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, और हम ऐसे प्रांत से आते हैं जहाँ आप पुराने किस्से कहानी भी सुनोगे कि किस तरह लोग 20-25 किलोमीटर तक सर पे किस तरह तालाबों से पानी लेके आते थे। वो परिस्थितियाँ भी राजस्थान से देखी। सभापति में मेरा आग्रह है कि आप लोग विशेष रूप से जब वित्त मंत्री जवाब दे तो इन बातों का ध्यान रखें। देश के नागरिक 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं, और ये स्थिति तब है जब सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को लाभान्वित करने की बात करती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि विगत 5 वर्षों में गरीबों की स्थिति यथास्थिति के अंदर है। आप सत्ता पक्षी लोग विपक्ष पर आरोप लगे जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, मगर ये देश समझता है कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, ऐसे में पहले कार्यकाल में तो आपने विपक्ष पर आरोप लगा दिए, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अब लोग कुछ काम आपसे चाहते हैं। देश का जवान आपसे काम चाहता है, देश का किसान चाहता है, देश का प्रत्येक वर्ग मोदी जी जो घोषणाएं करो धरातल पे कैसे हो, ये देश का जनता चाहती। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, मोदी जी, वित्त मंत्री जी, सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान भाषण तो बहुत है, इस सदन में भी और सदन के बाहर भी, लेकिन दुर्भाग्य से बेरोजगारी को रोकने के ठोस समाधान आप लोगों ने नहीं किए। खाली पद भरे हुए हैं, केंद्र की जितने भी नौकरियां, स्टेट की आप देख लीजिए, मैं राजस्थान जिससे आता हूँ, राजस्थान स्टेट की नौकरी में 5 लाख पद खाली है। और सबसे बड़ी बात, आप किसान की जमीन ले रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, तो वहाँ तो कानून बना दे कि कम से कम 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोगों को बाहर कमा के खाने के लिए नहीं जाना पड़े। ये बेरोजगारी की ऐसी समस्या है कि इसका अगर आपने इलाज नहीं किया, वो दिन दूर नहीं जब बेरोजगार खुद अपना हक अधिकार मांगने की राजधानी को घेर लेगा और आप देखते रह जाओगे जैसा दूसरे राज्यों के अंदर हो रहा है। तो नौजवान का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि नौजवानों ने तीसरी बार आपको सत्ता सौंपी है, नहीं तो आप विपक्ष पर आरोप लगाते लगाते कहीं खुद विपक्ष में नहीं बैठ जाओ। उर्वरकों की कमी से जूझता किसान। सभापति महोदय, अक्टूबर माह के एक समाचार में पढ़ रहा था, रबी सीजन के लिए भारत सरकार ने फॉस्फोरस और सल्फर उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ा दी और किसानों को मूल्यवर्धित राहत देने के लिए 37,952 करोड़ रुपए आवंटित किए। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे रबी खरीफ किसानों को डीएपी और यूरिया समय पर मिलता ही नहीं, मांग के क्रम में आपूर्ति नहीं आती। मेरे राजस्थान में सरकार ने खाद की खरीद के लिए लाइन पे खड़े किसानों पर लाठीचार्ज किए। हमारे वहाँ के कृषि मंत्री जी जरूर अखबारों में छपने के लिए दौरे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसान को यूरिया और डीएपी के लिए भी लाठियाँ खानी पड़ रही है। सभापति महोदय, मेरे राजस्थान के अंदर सरकार से मैं मांग करूंगा, करौली सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध निर्माण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। 4-5 बड़ी महापंचायतों में हजारों की तादाद के अंदर लोग वहां इकट्ठा हुआ, बिगड़ सकता है। ग्रामीणों के अनुसार इस बांध से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, प्राकृतिक जल स्रोत और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। साथ ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कैला देवी वन्य जीव अभियान का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भी डूब क्षेत्र में आ सकता है।
जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। साथ ही पहले चरण में छिंतर गांव के लगभग 50,000 दलित, आदिवासी, मीना, गुर्जर और किसान परिवारों के विस्थापन का भी खतरा है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। सभापति महोदय, मैं एक मिनट सभापति महोदय, समाप्त। हम वो लोग हैं जो कोरम को पूरा रखते हैं लास्ट तक। आप इस तरह नहीं करें, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देर, आप खुद सिंगल मेंबर पार्टी से आते हैं, आप 15 मिनट बोले समय। सभापति महोदय, एमएसपी को कानूनी दायरे में लाकर किसानों की कर्ज माफी की बात तो मैं कर रहा हूं कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करें, एमएसपी खरीदो। आपने राइडर हटा दिया, पहले 25 क्विंटल खरीदते थे, अब 40 कर दिया, लेकिन टोकन जो है वो आपके नहीं हो रहे। और मैं राजस्थान का एक आंकड़ा बताऊंगा जिसमें 2,81,350 मैट्रिक टन मूंग में 42,000 मैट्रिक टन मूंगफली का अनुमानित उत्पादन हुआ। आप कहते हैं एमएसपी 25% जीन्स खरीदते हैं, लेकिन 10% आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स एक सेंटेंस से कंक्लूड करो ना। महंगाई को नियंत्रण करें साहब, तेल गैस किस तरह बढ़ रही है, किसानों के जो खनन पट्टे हैं उनके खातेदारी के अंदर दिए जाए। पान मेथी जो नागौर के अंदर हो रही है उसको जीआई टैग दिया जाए। मैं पीयूष गोयल जी से मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया कि पान मेथी को जीआई टैग मिले जिससे किसानों का फायदा हो। वापसी के जो मामले हो रहे हैं वित्त मंत्री जी, यहाँ स्टेट की जो डीएलसी वो बहुत कम है और बाजार मूल्य जमीन का 25 लाख और आप दे रहे हो डीएलसी से 5 गुना। मेरे वहाँ 35,000 डीएलसी है, 20,000 डीएलसी से 1 लाख मिलेगा। धन्यवाद। एक मिनट समाप्त करना था, समाप्त करो ना आप। एक सेकंड में ये बोल देता हूँ साहब, ये लास्ट चंद्रशेखर जी प्लीज। एक सेकंड साहब, समाप्त करना साहब, मैं मांग करूंगा। नहीं समाप्त करेगा आप चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को कंक्लूडिंग सेंटेंस आप कंक्लूड करो, विद एक सेंटेंस से कंक्लूड करो। चंद्रशेखर जी एक सेकंड। मेरी मांग है सर कि नागौर में मेड़ता से पुष्कर रेलवे लाइन की बात करूं या नागौर के निकट भदवासी, मकोड़ी, बाला से घंटा पीरनवासी गांव में आरएसएम में मैंने भूमि आपत्ति के लिए गजट निकाला। किसानों की मंशा के खिलाफ ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। एथेनॉल फैक्ट्री के टाइम भी लाठीचार्ज हुआ। बोलिए चलिए आप, ये ठीक नहीं है। ये मेरी मांग है कि आप थोड़ा सा सुधार करें। चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों और भारत के 140 करोड़ से ज्यादा मेहनतकश भाइयों बहनों को मेरा जय भीम, जिनके खून पसीने की कमाई से सरकार चलती है। यह 25-26 के पूरक अनुदान मांग का पहला बैच सरकार की घोर नाकामी का जीता जागता सबूत। कुल सकल अतिरिक्त व्यय 1.32 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन वास्तविक नगद खर्च सिर्फ 41,455 करोड़, बाकी 90,812 करोड़ की कथित बचत के नाम पर छिपाकर हिसाब चुकता करने का खेल। फरवरी को मुख्य बजट असत्य और खोखला साबित हो गया। बड़े बड़े वादे किए थे, अब इमरजेंसी में अतिरिक्त पैसे मांग रहे हैं। यह कोई मामूली गलती नहीं बल्कि सुनियोजित लूट और जनता के साथ विश्वासघात है। हम जोरदार मांग करते हैं कि शून्य आधारित बजटिंग तुरंत लागू करो, सीएजी से स्वतंत्र और सख्त जांच करवाओ। सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने इन कार्यों पर लज्जा आनी चाहिए। सभापति जी, एससी, एसटी, ओबीसी को वैसे तो नुकसान नहीं पहुंचा पाई सरकार, तो निजीकरण का एक बहुत बड़ा खेल किया। और इंडिगो ने क्या किया? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि अपने जो जनता थी, पैसेंजर थे, उनको कोई आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा पाते। तो निजीकरण के आड़ में एससी, एसटी, ओबीसी को नुकसान करने के चक्कर में बहुत नुकसान किया और एससी, एसटी, ओबीसी के बहुत सारे पद रिक्त पड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के। रक्षा के पर 41,000 करोड़ से ज्यादा की मांग। विमान, हथियार, मशीनरी के नाम पर मनचाहा धन उड़ा रहे हैं। एचएएल में देरी के बावजूद काल्पनिक बचत दिखाकर हिसाब बराबर कर रहे हो, यह पारदर्शिता है या धोखा? गृह मंत्रालय का खर्च फट पड़ा है जनगणना, आईसीटी और क्षेत्रीय पैकेज के नाम पर, लेकिन मणिपुर में आज भी हजारों लोग बेघर सड़कों पर भटक रहे हैं। सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन शांति और पुनर्वास कहां? यह दिखावा है या वास्तविक सुरक्षा? मानवीय संकटों को नजरअंदाज मत करो। दिव्यांगों को मजबूत करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। भ्रष्टाचार चरम पर। टेलीकॉम में बड़ी कंपनियों को जीवन रेखा देकर जब 1.2 करोड़ नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, युवाओं के साथ छल क्यों कर रहे हो? युवाओं को किसके भरोसे छोड़ रखा है? युवाओं ने क्या बिगाड़ा आपको? यह जनता का खुला अपमान है। सफाई कर्मचारी आज भी सीवर में मर रहा है और हम चांद पे चले गए। विदेश मंत्रालय विदेशी प्रोजेक्ट में फिजूल खर्ची कर रहा है, जबकि घर के बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। सरकार का डेटा मंत्री ने जवाब दिया था। यूपी दूसरे नंबर पे, पहले पे गुजरात है। स्वास्थ्य सेवाएं लाचार है, विकलांगों को मामूली मदद, संस्कृति विरासत सड़ रही है। सभापति जी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ा रहे हो,
कुछ यूटीज को फोकस करके गांव कस्बों को बुला दे, जबकि भारत गांव में निवास करता है। माननीय सभापति जी, यह दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था गहरा आघात है, हम इसे पूरी ताकत से खारिज करते हैं। या तो तुरंत सुधार हो, शून्य आधारित बढ़ती सीएजी के गहन जांच और हर रुपए का परिणाम आधारित ऑडिट होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, उर्वर विभाग पर 18,525 करोड़ रुपए का भारी अतिरिक्त मांग विदेश से आयातित उर्वरकों को प्राथमिकता देकर हमारे किसानों का खून निचोड़ रही है। आत्मनिर्भर भारत का ढोंग रखते हो, लेकिन आयात पर निर्भरता बढ़ाकर मिट्टी को बंजर बना रहे हो। हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एमएसपी की गुहार अनसुनी पड़ रही है। सब्सिडी किसानों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहे। आयात माफियाओं के लिए तुरंत इस लूट को बंद करो, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दो। पेट्रोलियम मंत्रालय पर 9,500 करोड़ रुपए का बोझ। जी कंक्लूड करो। एलपीजी सब्सिडी के नाम पर तेल कंपनियों को मुआवजा देकर आम आदमी की जेब काट रही है सरकार। जब ईंधन कीमतें आसमान छू रहे तो महंगाई जनता को चले, तब ये करोनी कैपिटलिज्म का नंगा नाच क्यों? कॉर्पोरेट मुनाफे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, फिर भी जनता के पैसे उन्हें बचाने के लिए क्यों? युवा आंदोलन कर रहा है, आज इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है। सभापति जी, पर 2-3 दिन पहले मैं एक विषय पर बोल रहा था, समय कम था तो अपनी बात नहीं पूरी रख पाया, लेकिन अपमान से हम लोग हारे नहीं। सभापति जी, आप तो सिंगल मेंबर हैं, खुद ही इस बात को समझते हैं। तो मैंने यहाँ जाके मेरे साथियों ने कहा कि आपको कम समय दिया, मैंने कहा भाई वहाँ संख्या आधारित है, हम लोग संख्या बढ़ाएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है, एमपी लैड बढ़ाया जाए। 5 करोड़ में विकास नहीं हो रहा है सर क्षेत्रों में, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सभापति जी खत्म कर रहा हूँ, विकास नहीं हो रहा है 5 करोड़ में। दिल्ली में 10 करोड़। और जब तक नगीना का विकास नहीं होगा तो देश कैसे विकसित हो जाएगा? नगीना के लोगों के बारे में सोचो, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद सभापति जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, और किसानों की जय, जवानों की जय। धन्यवाद। थैंक यू श्री चंद्रशेखर। नाउ मोहम्मद अनीफा। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने लद्दाख के लिए रिवाइज बजट में 148 करोड़ रुपए अलॉट किए। इससे किसी हद तक दोनों हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो 180 करोड़ रुपए की कटौती को पूरा करने में मदद हुई है, जिससे लोकल डेवलपमेंट की किसी हद तक राहत मिली है। लेकिन सर, इस साल यूटी लद्दाख को बजट एस्टिमेट 2024-25 के मुकाबले में तकरीबन 834 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर कट का सामना करना पड़ा था। लेकिन लद्दाख के ओवरऑल बजट में कोई काबिल कदर इजाफा नहीं हुआ। 834 करोड़ रुपया की बड़ी कटौती में से सिर्फ 168 करोड़ रुपया बहाल किए गए हैं। ये असली कंसर्न है। सर, आपके माध्यम से मैं एक बहुत ही अहम एक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का ध्यान एक बेहद अहम एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो डायरेक्ट लद्दाख के एलोकेट किए गए फंड्स को खर्च करने की सालियात को मुतासर करते हैं। एमएचए वक्तन फ़वक्तन लद्दाख के हुकाम को प्रोजेक्ट और स्कीमों की स्कीम की मंजूरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए फाइनेंशियल पावर डिलीगेट करती है। ये डिलीगेट पावर एक ज़रूरी थी और इन डिलीगेट पावर्स ने पूरे यूटी के डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया है। खासतौर पर लद्दाख के टोपोग्राफिकल चैलेंज और डिफिकल्ट एक्सेसिबिलिटी में इस एम्पावर सिस्टम ने मुकाबी तौर पर फैसला करने और मजबूत बनाया और अवामी कामों में स्मूथ एग्जीक्यूशन को मुमकिन बनाया। हाल ही में एमएचए ने सर लद्दाख के लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए फाइनेंशियल पावर वापस ले लिए थे। बाद में मुख्तलिफ लोगों के कंसर्न के बाद इख्तियारात तो वापस दे दिए, मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि छोटे से लेकर बड़े तक काम तक के प्रोजेक्ट के अप्रूवल और अप्रेजल की अहम पावर अब तक एमएचए के पास ही है। सर, मैं ये बात खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव और जोग्राफिकल सेटअप दूसरे बगैर असेंबली वाले जो यूनियन टेरिटरीज है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, लद्दाख की जोग्राफिया हकीकत को देख के सख्त सर्दियों की वजह से साल में 7-8 महीने काम करने का मौका मिलता है। दिसंबर से मई तक सड़कें अक्सर बंद रहती है। लिहाजा अगर सारे प्रोजेक्टों के अप्रूवल और अप्रेजल के लिए एमएचए भेजना जो ज़मीनी हालात से दूर है, न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि बहुत वक्त भी लगेगी, जिससे लद्दाख में पूरा काम का सीजन ज़ाया हो जाएगा और कामों की मुद्दत पूरी नहीं होगी। छोटे मगर अहम डेवलपमेंटल जो मुकामी लोगों की ज़रूरी है, आप देरी का शिकार होंगे। इसलिए मैं आपके ज़रिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बेहतर मजबूत मनसूबाबंदी और वक्त पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट की अप्रूवल और अप्रेजल के अख्तियार जिस तरह पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास थे, इनको दोबारा बहाल किया जाए। सर, मैं आपके जरिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की तवज्जो बजटरी फ्रेमवर्क से हटकर कुछ आम पेंडिंग लायबिलिटीज की तरफ करना चाहता हूं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एलएचडीसी ले और करगिल के तहत पूरे हो चुके कामों के खर्चे के तकरीबन 28 करोड़ रुपए के लिए सर
सर प्लीज कंप्लीट होने दो, 2-4 हमारा डिमांड है सर। 28 करोड़ रुपए के लिए जो दरख्वास्त की है ये मुकम्मल हो चुके हैं, कामों के खर्च है और इनकी अदायगी में देरी हाल ही में जारी कामों में बहुत ज्यादा खलल पैदा कर रही है, साथ ही मुकामी ठेकेदारों की यकीन को भी कमजोर कर रही है। इसके अलावा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ले और करगिल में तरक्की कामों के हासिल किए गए जमीन और प्लांटेशन के जो कंपनसेशन के लिए 130 करोड़ रुपया का भी दरख्वास्त की है, जो सालों से लायबिलिटीज बढ़ी है सर। ये जो इनको इस फंड्स को जल्द से जल्द जो है वो रिलीज किया जाए। दूसरा सर, लद्दाख में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कई सालों से मंजूर हो चुका है और इसके लिए करगिल जिले में जमीन भी अलॉट हो चुकी है सर। इसके लिए जल्द से जल्द इसको फंड्स अलॉट करके इसको मंजूरी दिया जाए और साथ ही एक डिग्री कॉलेज जो संघ को जो करगिल डिग्री कॉलेज का एक क्लस्टर डिग्री कॉलेज की तय चल रहा है, इसको भी फंड्स की वजह से धन्यवाद। सुरेश पटेल। Thank you, sir. I rise to speak on supplementary demands for grants for 25-26. Every year, the government comes back in mid-year for more money. Corrections are normal, sir, but the size of these demands shows a weak planning and a frequent policy mismatches, sir. The government now seeks over 1.32 lakhs crores in the additional expenditure, but much of it is adjusted through savings and recoveries. If planning were strong, such large revisions would not be needed, sir. Let me highlight the few things, sir. First, the Department of Fertilizers. The ministry gave statements saying that India will stop importing urea by end of 2025. Now, additionally, demand for subsidy under imported urea scheme shows that self-reliance is a distant dream in India, sir. This can be substantiated with urea production has actually gone down from 314 LMT to 307 LMT, sir. Most of our fertilizer plants are old, but there is no new support for PSUs. Instead of moving towards a self-reliance, the government is asking for even more subsidy money, sir. The second, telecommunication department, sir. The government now wants nearly 37,000 crores to convert Vodafone Idea's dues into equity. Overnight, the government becomes the largest shareholder in a private company struggling for years. If the investments lost value, who takes the hit, sir? The government taxpayer. These are not just the corporate dues, it's the dues of the public. In petroleum, the government seeks 12,000 crores more LPG under recovery, despite already approving a 30,000 crores just a month ago, sir. Yet many poor households still find LPG unaffordable, with subsidies not reaching them effectively via DBT. Despite substantial spending, regular refills remain a struggle, needing a rethink to prioritize the direct benefits for a end user over company stabilization, sir. Sir, before I conclude, sir, I want to briefly highlight the issues of my region, Hassan, sir. The Upper Bhadra project is a lifeline of our district Arsikere and Kadur Taluk, sir. The central was promised for 5,300 crores. The state has requested again, sir, if the project receives the national status, sir, 60% of the funding is done by the union government, but the approval still it is pending. The people back home feel that center is not taking their water needs seriously, sir. The second is the mother and child hospital, which we are requesting the second in the August house, sir, about for the Kadur and Arsikere Taluk, sir. These are the growing towns with the rising population, sir. There is no allocation, the support in the supplementary demand, sir. Please. And the last two demands, sir. Yeah, please. The last is the human and animal conflict, sir. There is a severe human and animal conflict. Day by day, it has been severe and it is more serious in my constituency, sir. Nearly from past 21 years, sir, nearly 75 people have been lost their lives, sir. The people not only struggling, the farmers are not only struggling for the lives of their itself, they are struggling for to safeguard the crops which we have then grown, sir. I request through you, sir, to the Honorable Madam, that at least in this supplementary budget, it has not been allotted, sir. In upcoming budget, sir, last line, sir, only last line, sir. Upcoming budget kindly include the human-animal conflict for the last sentence, please. Long term, sir. The last, sir, it is our dream and is our dream of our Hassan, sir. That is IIT to Hassan, sir. Thank you, Sri Abdul Rashid. Yes, sir, one second, sir. Already the land has been allotted for the IIT purpose, sir. In this supplementary budget is not been allocated, sir. Kindly at least allot in the upcoming budget for IIT for Hassan, sir. It is a dream of our young Indians. Thank you, Sri Abdul Rashid. Thank you, sir. Since we are now a UT, तो हमारे बहुत से मामला डायरेक्ट सेंटर डील करती है. पैकेज दिए जाते हैं. मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि पैकेज का क्राइटेरिया क्या है. जम्मू एंड कश्मीर नीड्स ए फुल फ्लेज्ड पैकेज बिकॉज इट हैज सफर्ड टू मच. मैडम बैठी हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि एक फुल फ्लेज्ड पैकेज दिया जाए. उसके अलावा
जितनी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट हमारे हैं 2% नौकरियां जम्मू कश्मीर के जवानों के लिए रिजर्व की जाएँ जिन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं। और मैम इंडस वाटर ट्रीटी का अक्सर जिक्र किया जाता है, अभी आपने वो तोड़ भी ली, लेकिन जो लॉसेस जम्मू कश्मीर के लोगों को हुए हैं, हाउ विल यू कंपेंसेट दैट? प्लीज़ वी होप दैट यू विल कम विद सम कंक्रीट थिंग। इसी तरह हमारी फ्रूट इंडस्ट्री बैकबोन हमारी इकानमी की है, वो बर्बाद हो चुकी है। आपने अमेरिकन फ्रूट पर जो टैक्स है वो कम कर दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो फ्रूट है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर है। उसके रिवाइवल के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। फ्रूट मंडी सोपोर की यू नीड अपग्रेडेड। इसी तरह मैम यू नीड क्रिएट न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। गुलमर्ग पहलगाम तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत जगह हैं जैसे मंगस, दूध पथरी, तूसा मैदान, टंगडार, मत्सल, मुनाबल, रंगवार। ये ऐसी जगह हैं जो गुलमर्ग पहलगाम से भी खूबसूरत हैं, सिर्फ उन्हें टूरिस्ट मैप पर लाने की ज़रूरत है। इसी तरह गुलमर्ग वाल में जो हमारे होटलियर्स हैं, देयर आर सर्टेन इशूज़ विस्पर्स कि उन्हें तंग किया जा रहा है लीज बढ़ाने के नाम पर, बाकी चीज़ों के नाम पर। दे शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड एंड डिसलॉज्ड। पट्टन में हमारा जो नेशनल हाईवे है, एक ट्रॉमा अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अलॉन्ग विद मतलब ब्लड बैंक। मेरी रिक्वेस्ट यह है मैम से और सरकार से भी कि सिंस आई हैव नो रिड्रेसल टू माय इश्यूज़, क्योंकि मैं तो यहाँ से सीधा वापस बदकिस्मती से जेल जाऊँगा। आई कांट रीच आउट टू मिनिस्टर्स, रीच आउट टू ब्यूरोक्रेट्स। सो मेरी हम्बल गुजारिश है कि एक डायरेक्शन जाए कि कम से कम जो मेरे इश्यूज़ हैं वो कंसर्न क्वार्टर में जाएँ। इसी तरह हम डिमांड करते हैं नॉर्थ कश्मीर के लिए, पहाड़ी इलाका है, बॉर्डर इलाका है, एक एम्स बारामूला में कायम किया जाए। बांडीपोरा में एक मेडिकल कॉलेज की अशद ज़रूरत है, बॉर्डर एरिया है। सोपोर में एक IIM कायम किया जाए। सिंस इट्स ए UT रेवेन्यू सेंटर डायरेक्टली डील करता है। सोपोर और हंदवारा में मैम ऑलरेडी हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अगर उनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट भी बनाएं तो मेहरबानी होगी। और बीरवा को आप एक हिल डिस्ट्रिक्ट बनाएं। नर्सिंग कॉलेज एक ब्यूरो में ज़रूरत है, सचमुच की ज़रूरत है। 950 करोड़ MG नरेगा में लेबर कंपोनेंट में हमारा पैसा बाकी है। और यहाँ पर इसी तरह लोलाब सोपोर और लोलाब बांडीपोरा के दरमियान 2 बड़े मेगा रोड्स बनाने की ज़रूरत है, जिससे बॉर्डर टूरिज्म भी डेवलप हो, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। और मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है जोगल हंदवारा में, पिछले 1.5 साल से काम रुका है, सिर्फ इसलिए 50 करोड़ खर्च कर तो दिए, लेकिन उसके बाद कहा नाउ द एरिया इज फ्लड प्रोन। उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए जिन्होंने कम से कम पहले नहीं देखा कि एरिया फ्लड प्रोन है। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। नो प्लीज सर, जस्ट 1.5 मिनट। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो जस्ट प्लीज डोंट डाइवर्ट माय अटेंशन। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप इधर एड्रेस करो सर। थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेडिकल कॉलेज पर 50 करोड़ खर्च किया, 50 करोड़ खर्च करने के बाद याद आया कि साइट फ्लड प्रोन है। लोगों ने सैकड़ों कनाल जमीन दे दी। एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द ऑफिशियल्स हु आइडेंटिफाइड द साइट। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेडिकल कॉलेज पर काम फौरन से शुरू किया जाए। और लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, जो सबों ने कहा, एक MP कहाँ जाए? कम से कम दिल्ली के MLA के पास 10 करोड़ का MLA फंड है। मैम हम कहाँ जाएं? मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल MPs दामन फैला के कहता हूँ, कम से कम 15-20 करोड़ रुपए MP फंड कीजिए। इट्स माय हम्बल सबमिशन। और लास्ट रिक्वेस्ट कि कम से कम जम्मू कश्मीर को आप वापस स्टेट का दर्जा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक क्लैश है, जो आप पैसा देते हैं वो खर्च हो नहीं रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, हमारा छोटा सा प्रदेश दमन एंड दीव भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन हमारे जनता की आकांक्षाएं बहुत बड़ी है। मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के हमारे प्रदेश पर विशेष कृपा दृष्टि रही है। उनका सीधा मार्गदर्शन हमारे प्रदेश को मिलता है और उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमारे छोटे से प्रदेश को केंद्र सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिला है। दीव को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करना, नमो मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बर्ड आइवरी, नमो पथ, राम सेतु जैसे कई अमूल्य सौगातें और साथ में वड़ाकबारा दीव में लंबे समय से लंबित क्रीक ड्रेजिंग की मांग को पूरा करना, ये सभी केंद्र सरकार की दूरदर्शिता का उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे पता चला कि दीव के वड़ाकबारा क्रीक ड्रेजिंग एवं दीव पोर्ट ड्रेजिंग कार्य फंड की कमी के कारण अब तक शुरू नहीं हो पाए। फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट भी अभी तक शुरू नहीं हो पाए। साथ ही दीव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी अधूरा है एवं कोस्टल विलेज CCRV प्रोजेक्ट भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय जी, दीव के 90% से अधिक आबादी मत्स्य पालन पर निर्भर है। क्रीक में ड्रेजिंग न होने से क्रीक से जहाज अंदर आते जाते वक्त बहुत समस्या होती है। थोड़ा सा ध्यान हटने पर घटना घट जाती है और मछुआरों को बड़ा नुकसान होता है। ड्रेजिंग कार्य की समस्या से मछुआरों की दैनिक आय पर भी सीधा असर पड़ रहा है। महोदय जी, हमें पता चला है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फंड अभी भी सेंटर से पूरा रिलीज नहीं हुआ है
और स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सेंटर की बाकी राशि त्वरित रिलीज की जानी चाहिए ताकि ये सारे कार्य समय पर पूरा हो सके। महोदय जी, अंत में इस पटल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में ही दीव फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट, वनाकबारा क्रीक एवं दीव पोर्ट की ड्रेजिंग तथा दीव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शेष कार्य हेतु पर्याप्त अतिरिक्त राशि तत्काल जारी की जाए। कोस्टल विलेज CCRV डेवलपमेंट सहित सभी स्वीकृत परियोजना के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया जाए। इन परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग सेल गठित की जाए। भविष्य में छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की जाए ताकि तिमाही समीक्षा प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कार्यालय स्तर पर हो ताकि फंडिंग में देरी न हो। महोदय जी, हमारे यहाँ नागरिकों की सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे नागरिकों को सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज मिले, उसके लिए विशेष फंड दिया जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज की जो सीटों में PG की सीटों का जो फीस रखा है वो बहुत ही ज़्यादा है, उस फीस को कहा तो घटा दिया जाए या तो फिर स्कॉलरशिप जैसी कोई नीति बनाकर बच्चों से ये अतिरिक्त भार हटाया जाए। मानव महोदय जी, मैं MP लाट के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे प्रदेश में MP लाट प्रदेश मैंने जितने भी काम प्रस्तावित किए थे वो 45 दिन में उस कार्य पर गाइडलाइन के हिसाब से कार्य होना था, मगर 1 साल तक वो कार्य पहले लंबित रखे गए। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया, मैं पहला सांसद हूं जो MP लाट के काम कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं। तब जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तब वो कार्य सारे के सारे कलेक्टर ने कैसे। महोदय जी, 1 ही मिनट कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ। मेरी ये वेदना आप नहीं समझे तो कौन समझेगा सर। मैं MP लाट का कार्य करने के लिए सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मार्गदर्शिका का हिसाब से 45 दिन में सांसद के कार्यनीति का इस्तेमाल ना करें। Supplementary demand is long on paper but short on purpose. I want to ask just one question. Only 41,455 crores is net cash outgo, while a massive 90,812 crore is book adjustment. This raises the classic question asked by fiscal experts. If ministries had such large savings earlier, why did they overproject their budget estimates in the first place? Is it because of increasing the negotiating power? Chairman, sir, I just want to ask one question directly about the SDG, which is about the telecommunication, the funds allocated for the telecommunications. In my constituency, Chairperson, sir, there are 4G towers. I have requested an upgradation of 5G towers. और वहाँ पे हिली एरिया, माउंटेन एरिया आता है और वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। नेटवर्क नहीं आएगा तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं, उसका लाभ कैसे ले पाएंगे। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग दैट द 4G अपग्रेडेशन, 5G अपग्रेडेशन शुड बी कंप्लीटेड इन अ टाइम बाउंड मैनर, एज वेल एज द भारत नेट, which has started a project called BBNL. BBNL are absolutely not paying attention in my constituency. So I'm requesting the government through you that BBNL should be taken away and BSNL should be handed over all the works. I want to talk about the fertilizers. Sir, the uploaded supplementary demand document clearly shows a massive additional provision of 11,000 crores for PNK fertilizers and 7,525 crores for imported urea subsidies. Yet the honorable chairperson on the ground of Nandurbar, farmers are standing in line at 4 a.m. in the morning and often returning empty-handed. I request the government that release of urea stocks in Maharashtra should be expedited, as well as aspirational districts such as my Nandurbar district should be given priority. Gram level centers and farmer cooperatives should be, the distribution centers should be made at the central focus of it. Real-time stock monitoring through mobile apps and transparency portals should be initiated. Regarding higher education in the supplementary demand for grants, it has been mentioned that a significant 2,023.25 crore allocation for PMONOS, that is One Nation, One Subscription under higher education, is recommended. I strongly urge this government inclusion of Nandurbar in the priority rollout of PMONS, as our tribal students have almost zero access to high quality journals, and establishment of a national tribal university in Nandurbar to serve Maharashtra, Gujarat as well as Madhya Pradesh state. There cannot be a Viksit Bharat without considering the Adivasi in the Bharat, so that should be considered. Regarding the Pradhan Mantri Awas Yojana, there are n number of villages. The n number of villages are converted into hamlets, which are called padas in Marathi. So therefore, Awas Yojana has not yet reached to them. That should be increased at the earliest. Yes. Regarding health and family welfare, it has been mentioned that there is a capital funding to complete all the new hospitals quickly. Regarding the hospitals, I want to just make a request that the hospital and the medical college is divided by a road. There should be a skywalk in the middle, and the funds should be allocated for that.
regarding the irrigation project, the Tapipura irrigation project, 800 crores have been allocated by the state government. I request the central government also to give certain more funds. Therefore, the project can be completed and the drought situation by Nandubar can be resolved. Regarding roads and national highway, I'll just complete just 2-3 more points, Chairperson, sir. There are a lot of accidents happening in Kondaibari Ghat in Sakari Tehsil and as well as Shewadi Fata. There is an urgent need of high flyovers there, so kindly consider that. There's a black spot there. Also, I would request that there should be a new highway, 4-lane highway that should be constructed from Shada to Bhadgaon to Dediapada to Gujarat. Kindly consider the new national highway project. In the end, I just want to say that just one last line I want to say. One last line that ये पूरक अनुदान नहीं है, ये सरकार की नाकामी का पूरक प्रमाण है और इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि बजट में कुछ अलग प्रावधान दिए जाए और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। थैंक यू। श्री राजकुमार। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने अनुदान की पूरक मांगों पर 2025-26 की पूरक मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मुख्य बजट में जो बजट का प्रावधान था, अधिकतर ये कह सकते हैं कि ये कागजों या वो पाइपलाइन के अंदर फंसा हुआ है जो ग्राउंड पे नहीं जा पाया है, तो उस पर विशेष सरकार ध्यान दे। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अनुपूरक जो डिमांड आई है उसमें जो बजट घटाया बढ़ाया गया जो गया है, तो विशेषकर एग्रीकल्चर में अभी सबसे ज्यादा हमने धरती को नशीली बना दिया है। यूरिया डीएपी जरूरी मानते हैं, लेकिन इतना आदि हो गया है जो भविष्य में हमारे सबके लिए घातक होगा। तो सरकार ऐसा प्रावधान करे, ऑर्गेनिक खेती पे फोकस करे और जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले जो किसान हैं, इन किसानों के लिए एक प्रावधान किया जाएगा। वो तैयार कर रहा है तो वो कहाँ बेचेगा, उनके लिए अगर फसल खराब हो जाती है तो अलग से सब्सिडी देने का प्रावधान करे। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था की बात होती है तो भारत देश पे आज वर्तमान में आंतरिक और बाहरी कर्ज 181 लाख करोड़ रुपया है और उस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पे, अगर राजस्थान की हमारी बात करें और पूरे देश की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति पे 86,000 करोड़ रुपया आज कर्ज है। इस स्थिति में देखा जाए, आज हम कह रहे हैं, पहले सुनने में आता था डॉलर रुपये से गिर रहा है, तो आज डॉलर मतलब रुपये के मुकाबले डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। और ये सुनने में आ रहा था कि काला धन लाएंगे, ये काला धन कितना आया? देश की जनता को कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, वो 15-15 लाख रुपए आज 2014 से लगा के आज तक की बात वो कहाँ है, वो कोई समझ में नहीं आया। आज वर्तमान में जो देखा गया है, जीएसटी को लेके बात उठी, जीएसटी को घटाने बढ़ाने की। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जीएसटी के नाम से डंडीरा पीटा जा रहा है। तो जीएसटी बढ़ाया किसने था? 2014 से लगा के 2025 तक सरकार किसकी थी? जीएसटी बढ़ाया। जीएसटी बढ़ाने की वजह से 2,30,000 से अधिक छोटे व्यापारी देश के जो थे, इनका व्यापार धंधा खत्म हो गया। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिया में जीएसटी का कलेक्शन होता है, पर इस जीएसटी का लाभ ट्राइबल एरिया के लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ जीएसटी सिर्फ राजधानी के आसपास या बड़े शहरों में ही तक सीमित रह जाती है। जीएसटी में ट्राइबल एरिया हेतु सेस कर लगाया जाए ताकि यहाँ से जो भी कलेक्शन होता है उसका उपयोग ट्राइबल क्षेत्र के लिए किया जाए। वर्तमान देखा गया है कि भाजपा सीना तान कर कहती है कि हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमें भी गर्व है कि हमारा देश है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वर्तमान में जो देखा गया है, प्रति व्यक्ति, मैम 1 मिनट हुआ है, 2 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा, 146वें नंबर पर, मतलब प्रति व्यक्ति आय की बात करें विश्व में 146वें नंबर पे है। और भूखमरी की अगर बात करते हैं तो विश्व में 102 नंबर पे अगर हमारा देश है। ये विकास सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का नहीं हुआ है, ये विकास मात्र 1 से 2% उद्योगपतियों का हुआ है। मेरी मुख्य मांगे रखना चाहूंगा, नरेगा का जो बजट है, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, पूरे केंद्र शासित राज्य प्रदेशों सहित 34 राज्यों, मतलब केंद्र शासित और 28 राज्यों सहित पूरा 2600 करोड़ रुपया बजट है। इसमें मात्र राजस्थान का 1600 करोड़ रुपया बजट पेंडिंग है केंद्र सरकार की तरफ से। इस वजह से नरेगा की स्कीम खत्म हो गई है। मैं चाहूंगा मैम कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारी राजीविका की महिलाएं, जब चुनावी दौर आता है, भीड़ की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हम महिलाओं को याद करते हैं, राजीविका और आंगनवाड़ी। उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए। अंतिम मेरी जो मांग है कि मेरे क्षेत्र के अंदर कडाना और माही प्रोजेक्ट, माही जो डैम है, उससे उस क्षेत्र के अंदर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच 2025-26 के समर्थन में बोल रहा हूं। Although I'm known
professionally as an actor, but I will not be playing for the gallery like most of the opposition members do. I'll not discuss the numbers also presented by them. I'll not talk about what they have spoken, because they speak on every subject, but not the subject in discussion. मैं अपनी बात सीधी सीधी आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये अनुपूरक मांगे क्यों आती हैं और क्यों इनको अप्रूवल करना जरूरी है हमारे लिए। ये पूरक अनुदान हमारे देश के विकास, जनता की ज़रूरतों और चल रही योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार हर वर्ष बजट के माध्यम से पूरे साल का खर्च तय करती है, लेकिन वर्ष के दौरान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य सामने आते हैं जिनके लिए पहले से तय राशि पर्याप्त नहीं होती। कई योजनाएं तेज़ गति से आगे बढ़ती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ नए नेशनल प्रायोरिटीज़ भी सामने आती हैं। इन परिस्थितियों में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एक ज़रूरी कदम होते हैं ताकि डेवलपमेंट वर्क में कोई रुकावट ना आए। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस पहले बैच में सरकार ने 72 ग्रांट्स और 1 एप्रोप्रिएशन के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की है। कुल मिलाकर 1.32 लाख करोड़ से अधिक के ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से लगभग 41,455 करोड़ वास्तविक अतिरिक्त नकद खर्च यानी नेट कैश आउटगो है, जबकि बाकी राशि मंत्रालयों की सेविंग्स और एडिशनल रिसीप्ट से पूरी की जाएगी। ये दिखाता है कि सरकार जिम्मेदारी के साथ और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए देश के संसाधनों का उपयोग कर रही है। ये पहला बैच देश के कई प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए लाया गया है। इन क्षेत्रों में कृषि और किसान कल्याण, फर्टिलाइजर, हेल्थ, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, ऊर्जा, रेल, सड़क और ट्रांसपोर्ट, महिला और बाल विकास, पंचायती राज, MSME, जल संसाधन, अंतरिक्ष, विज्ञान और विदेश मामले जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को मजबूती देना देश की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सप्लीमेंट्री डिमांड्स का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि सरकार अपनी योजनाओं में स्मार्ट प्लानिंग, सेविंग्स और बेटर यूज़ ऑफ फंड्स को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इन पूरक अनुदानों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि देश के विकास कार्य बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों से जुड़ी योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट अगर समय पर पैसे न मिलने से रुक जाएं तो इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट से यह सुनिश्चित होता है कि हर योजना समय पर पूरी हो और जनता को बेनिफिट डिले के बगैर मिले। आज भारत तेज गति से विकसित हो रहा है, हमें ग्लोबल स्तर पर कंपटीशन में आगे रहना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे रेल मार्ग, सड़कें, डिजिटल और कम्युनिकेशन सिस्टम, बिजली, विलेजेस, सिटी सब मजबूत हों। इसी उद्देश्य से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि देश की ग्रोथ स्टोरी में कोई कमी न रह जाए। ये सप्लीमेंट्री बैच दिखाता है कि सरकार हर जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रही है और देश के विकास को तेज और निरंतर रखने के लिए कमिटेड है। अंत में मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच 2025-26 को मंजूरी दी जाए। ये मांगे जनता की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, देश की योजनाओं को गति देती हैं और भारत को मजबूत भविष्य की ओर ले जाती हैं। ये सरकार की दूरदर्शिता, जिम्मेदारी और विकास के प्रति संकल्प का प्रतीक है। धन्यवाद। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Thank you, Madam Chairperson. Madam, this is the first batch of supplementary demands for grants for the financial year 25-26. Having 72 grants and 1 appropriation, coming to an amount of 1.32 lakh crores of rupees. Madam, before entering into the various ministries and departments regarding the supplementary demands for grants, I would like to question and challenge the sanctity of the budgetary process being done by the Ministry of Finance. Madam, this has become the usual practice in bringing series of SDGs in every year with huge amount. Last year also I have mentioned this matter by quoting the Public Accounts Committee's observation. The ministries and departments have been obtaining supplementary grants without conducting a proper scrutiny of the expenditure incurred or likely to be incurred by them during the financial year. This is happening due to the lack of foresight in various ministries and departments, and that would goes to show the inefficiency of the finance ministry in the budgetary process and in the planning process. Sir, once again I urge upon the government and in particular to the Honourable Minister to adhere to the strict compliance of the financial rules and directions of the PAC to avoid huge supplementary demands for grants. That is my first submission.
Madam, regarding the SDGs, most of the honorable members have already spoken. Regarding the major allocations are going to the fertilizers and chemicals and the Ministry of Communications, Road Transport, and Ministry of Petroleum and Natural Gas. Madam, Fertilizer Ministry itself, if you examine it, how the careless way in which the budget is being prepared. Because the last year, this year, it is 16% excess than that of the original grant envisaged in the original budget. I do support the subsidies and grants, but strongly oppose the way by which this is being brought in the House. Because the union government had estimated 1.67 lakh crores for fertilizer subsidy for the financial year 25-26. This is lower than that of the 1.91 lakh crores. That was the subsidy bill in the previous year. In the previous year, it was 1.91 lakh crores, and this year we have estimated only 1.67 lakh crores, and now the Honorable Minister is coming to the Parliament demanding an additional amount of 31,000 crores. How could the Ministry justify this point in estimating this statistics or estimating this amount? And couldn't the government or the ministry could anticipate the fertilizer subsidy in such a situation? So all this exposes the hollowness of the government's repeated claim of fiscal discipline and the agricultural reforms in the budget speech in the year. Madam, just 1 second, 25-26. Madam, I am not going to the details. See, regarding the urea also, most of the members, I am not going to repeat it, because the domestic production has to be increased, for which the fertilizer industry has to be strengthened, for which more amount has to be granted. And regarding the Department of Telecommunication, 33% excess in the original budget estimate. And I would like to make a comment on this. This conversion of DOFA company into government equities is a hidden subsidy, eroding the budget's credibility on transparent spending. And finally, I am coming to the Ministry of Petroleum. I am not going to the details. And further, 2 points I would like to finally say regarding the macroeconomic situation. That is, first one is regarding the GDP. Last month, the International Monetary Fund retained C grade for the India's GDP data. And next week, India government has released the data showing the GDP growth rate surging 7.8% to 8.2% in the second quarter of the current financial year. This shows that the Indian economy is the fastest growing economy. But the question raised by the economic experts like Monica Hallen is significant, that is to be answered. Though we are having a high GDP growth rate, why the market is not flourishing? According to her, I quote, why markets cool though GDP is soared? So the finance minister, at least in the last week, announced the steps will be taken so as to upgrade IMF's grade through change in the base year. I fully appreciate it. And regarding the expenditure status, 1 point, regarding the fiscal deficit also. Madam, fiscal deficit 15.69 lakh crores of rupees, and now after additional of 1.32 lakh crores of rupees, how could it be adjusted? And the rupee devaluation, I am not going. And one correction I would like to make. The Honorable Minister, you may kindly see demand number 71. Blatant error is there, because 95 crores is the original estimate in 24-25, but you are giving it the supplementary demands for grant 3,50,000 crores. Maybe it is a typographical error. Please correct it, and no way by which this is not the way by which the statistics has to be presented before the Parliament. I conclude, Honorable Speaker, sir, with the 2 questions. Why the government is repeatedly pushing of budget borrowings, unpaid bills, and hidden subsidies into the SDGs instead of placing true fiscal deficit before the House?